today we'll be starting with the rapid revision of CA Inter. Rapid revision of accounts subject. This is your paper 1 in group 1. Remember, this is the very first paper that you're going to write in the exams. CA Inter exams, first paper will be your accounts paper. Now in this rapid revision, we are going to go through each and every chapter, important points of each and every chapter which you are supposed to revise just prior to the exams, remember, so that you get an overview of each and every chapter over here. So now we are going to take over one by one each and every chapter of accounts subject. Remember, this is paper 1. Now the first chapter that we are going to start with is called as Redemption of Preference shares. The first chapter that we are going to do is redemption of preference shares. Now, preference shares, you all know, it basically means those shares which have two preferences, two rights over and above the equity shares. One is regarding payment of dividend. Every year you have to pay dividend to the preference shares at a fixed rate, remember, irrespective of the profits or losses made by the company. And second is, in case of repayment of capital, liquidation, if you recollect, then you have to first pay the preference shareholders before you pay the equity shareholders, remember. Two preferences that a preference shareholder has over equity shares. However, as per the Companies Act, whenever a company issues preference shares, it has to be redeemable preference shares. Redeemable preference shares means they have to be compulsorily redeemed. Redemption means repayment. They have to be compulsorily repaid within a maximum period of 20 years, remember. So no preference shares can have a life of more than 20 years. It has to be redeemed within a maximum period of 20 years. So the company may redeem it after 5 years, 8 years, 10 years, 18 years, maximum 20 years. So on redemption, you repay back the amount to the preference shareholders. Now, if you repay back the preference shareholders the preference share capital, naturally your preference share capital will come down. And the preference share capital reduces, your total share capital will also reduce, remember. Let's take a very, very simple example. Existing. Your equity share capital is, let's say, 10 CR and your 12% preference share capital is, let's say, 5 CR. 12% represents the rate of dividend. So can I say your total share capital is 15 CR? Now 20 years are completed. So naturally preference shares have to be redeemed, repaid back, remember. So once you redeem your preference shares, you repay back the preference share capital to the preference shareholders. Can I say this preference share capital will become 0? And my equity share capital will remain at 10 CR. So my total share capital becomes 10 CR. There is another provision in the Companies Act which says that the total share capital should not reduce. It should remain same. But here what is happening is, the moment I redeem my preference share capital, my total share capital reduces, which means I am violating the provisions of an other section of the Companies Act. Companies Act says total share capital should not reduce. So if I try to follow one provision of the Companies Act, that is redemption of preference shares, I am automatically violating another provision of the Companies Act, that is I am reducing my total share capital. So to weigh out, the Companies Act itself has specified a solution, you can say. Companies Act says that whenever you are redeeming your preference shares, yes, your preference share capital will go down.
At the same time, what you do is make a fresh issue of new shares. It may be equity shares, it may be preference shares, it may be a combination of both of them, equivalent to the nominal value of preference shares that you are redeeming, remember. So let's take a very simple example. First alternative. Issue new equity shares of rupees 5 CR. First alternative. So we are issuing new equity shares of 5 CR. What will happen because of that is my equity share capital and total share capital will now change. Equity becomes 15, total also becomes 15. I have taken care of both the provisions of the Companies Act. One, redeem the preference shares. Second, do not reduce the total share capital. Both have been taken care of, remember. So first alternative that the Companies Act says is you make a fresh issue. It's not necessary, it has to be only of equity shares. You can also issue new preference shares carrying the same or different rate of dividend. Not necessarily it has to be 12% only. It can be 10%, it can be 13% also. First alternative. Second alternative, the Companies Act gives is, suppose if the company cannot make a fresh issue of shares due to some reason or the other. New shares cannot be issued by the company due to some reason or the other. Then in that case, you have to create a special reserve called as capital redemption reserve. And this special reserve, capital redemption reserve, can be used only for one purpose, and that is for issuing fully paid bonus shares, remember. So if you cannot make a fresh issue of shares, either equity or preference, then by default you will have to create a special reserve called as capital redemption reserve, and this reserve has to be created only out of your revenue reserves, remember. Revenue reserves are also called as free reserves. They are also called as divisible profits. Some of the examples of revenue reserves are your general reserve, P&L balance, reserve fund, dividend equalization reserve. All these are examples of your revenue reserves, remember. So in the question, they will be giving you something called as reserves and surplus. And let's say you were having a general reserve over here of 100 CR. So in the first case, it will remain same 100 CR now. Now, second alternative, create capital redemption reserve of 5 CR equivalent to the nominal value of preference shares that you are redeeming, remember. You are redeeming preference share capital of 5 lakhs, 5 CR. So, create CRR of 5 CR. And from where are you going to create it? From your revenue reserves, remember. So now my second alternative, my equity share capital will remain 10 CR. That is not going to increase because you are not issuing new equity shares, remember. My preference share capital becomes 0. So my total share capital is 10 CR. Sir, we are violating the provisions of the Companies Act. Total share capital is reduced. No, wait. We are now creating a new reserve called as capital redemption reserve, which was not there in the earlier two cases. Now you will create from where? Revenue reserves. So revenue reserves will go down, CRR will increase. So now this becomes 95 CR and this will become 5 CR. But sir, it's coming under reserves and surplus. Yes, right now it's coming under reserves and surplus. But remember, CRR can be used only for one purpose. And that is for issuing fully paid bonus shares. CRR can be used only for one purpose, and that is for issuing fully paid bonus shares, which means if CRR is created in future, the company will be declaring bonus, and whenever bonus shares are declared, naturally this 5 CR will become a part of your equity share
capital, remember. So in that case, automatically CRR will go down, equity share capital will increase at that point of time. And therefore what will happen is my total share capital will also become 15 CR, remember. So first alternative, make a fresh issue of shares. Second alternative is create CRR, and the third alternative will be a combination of both of them. Partly fresh issue, partly CRR. It can be in any permutation and combination. So let's take an example. Third alternative, fresh issue of equity shares of rupees 2 CR and create CRR of 3 CR. Fresh issue of equity shares of 2 CR and create CRR of 3 CR, remember. So now over here what will happen is my equity share capital will become 12 CR. This 0. So total share capital is 12 CR. This will become 97 CR and CRR will be 3 CR. Always remember, whatever is the nominal value of equity shares which is reduced, equivalent increase has to take place either in share capital or a special reserve called as CRR, remember. If in the question they just give you that yes, 5 crores of preference share capital is to be redeemed, but the fresh issue is only of 2 CR, by default you have to understand that you have to compulsorily create CRR of 3 CR, remember. It's a rule. You don't have an option over here. So that's the first major part of redemption of preference shares. Now, whenever preference shares are redeemed, redemption of preference shares. Whenever preference shares are redeemed, they will be redeemed either at par or at premium. If the redemption is at par, which means company is repaying back to the preference holders same amount which they had received. Normally, preference shares has a face value of 100 rupees. So at the time of repayment, they'll pay same 100 rupees back to the shareholder. It's called as redemption at par. No extra money is paid. Second alternative, the redemption is at a premium. At a premium means company will pay something extra to the shareholder. So whenever redemption is at a premium, it is a loss to the company. Whenever the company redeems the preference shares at a premium, it is a loss to the company. Now this loss has to be compulsorily written off. This loss should be compulsorily written off. Now to write off in the absence of any information, this loss should always be written off from your revenue reserves. You will always write it off from your revenue reserves. However, if they specifically mention in the question that this loss should be written off against securities premium, then and only then you will utilize securities premium, otherwise not, remember. So securities premium can be utilized, but if it is specifically mentioned. If specifically mentioned. So if the redemption is at par,
no problem, no extra money. But if it is at a premium, you are paying some extra money to the shareholder, which is a loss to the company, and this loss has to be compulsorily written off if nothing is specified against your revenue reserves, and if securities premium has to be utilized only if they specifically mention in the question. Revenue reserves examples you all know. It includes your general reserve, it includes your P&L, it includes your reserve fund, etc. It will be given in the question, utilize those reserves to write off your premium. So in redemption of preference shares, redeem the preference shares at par or at premium as per the instructions. If you are redeeming them at a premium, the premium has to be written off against revenue reserve. Securities premium can be utilized only if it is specifically mentioned in the question. Whatever is the nominal value of preference shares that you are redeeming, equivalent to that, either a fresh issue should take place or you should create a special reserve called as capital redemption reserve, which can be used only for one purpose, and that is for issuing fully paid bonus shares. What you have to do is you have to basically pass journal entries relating to these transactions. And when you are passing journal entries, if you prepare this working note, all entries you will come to know from this working note itself, remember. Then you need not look at the question for finding which figures am I supposed to record and so on. So in every question of redemption of preference shares, try to create this working note. What's the working note? It is called as nominal value NV is equal to divisible profits plus proceeds of fresh issue. DP PFI. NV is equal to DP plus PFI. DP stands for divisible profits, proceeds of fresh issue. Let's take a very simple example which we had taken it up. 12% preference share capital you are redeeming of 5 CR. You are redeeming 12% preference share capital of 5 CR. This is at a premium. So premium on redemption, and premium on redemption is of 20%. Let's say you are redeeming the preference shares at 20% premium. 20% of 5 CR will give you how much? 1 CR. Add up, it comes to 6 CR. This is the total amount payable to preference share holders. PSH stands for preference share holders, remember. Now, 5 CR is the preference share capital that you are redeeming. Either you have to make a fresh issue or you have to create a CRR. In the question, they will be specifying whether fresh issue is there or not and whether CRR has to be created or not. If one of them is given, second has to be taken as a balancing figure, remember. For example, suppose if they say there is a fresh issue of equity shares, normally of 10 rupees, of 2 CR, which means the company has issued new 20 lakh equity shares, remember, of rupees 10 each, fully paid. But these shares may be issued at par, may be issued at a premium. Let's say they are issued at a premium, securities premium, but only of 2 rupees per share. So in that case, 20 lakh shares into 2 rupees, it will be 40 lakh rupees. This is 20 lakh shares. So total amount received on fresh issue will be 2.4 CR, cash or bank. Now 5 CR is the preference share capital that you are redeeming, but you have issued new equity shares only of 2 CR. Please don't compare 5 CR with 2.4 CR.
2.4 CR includes 40 lakh securities premium which goes under reserves and surplus. That doesn't appear under share capital. So you have to compare it with only equity share capital issued of 2 CR. So by default, you will have to create a CRR of 3 CR. Balancing figure. CRR has to be created. And from where are you going to create your CRR? From your revenue reserves. That's general reserve, PNL and so on. At the same time, this premium on redemption has to be now written off. And from where are you going to write it off? Again, from your revenue reserves in the absence of any information. You will utilize securities premium only if it is specifically mentioned in the question. If they don't tell you to use securities premium, then you have to compulsorily write it off against your revenue reserves only, remember. Sir, in the question we have securities premium. Can we use that? The answer is no. On fresh issue also you are receiving 40 lakh securities premium, but that also cannot be used to write off your premium on redemption. So total amount payable to preference shareholders is 6 CR, but there is always a possibility that some preference shareholders are missing. Some preference shareholders are missing. We call them as untraceable shareholders, which means we cannot find them. And if we cannot find them, naturally we will not be able to pay money to them. So 6 CR is not paid. From this you minus if there are any untraceable shareholder. Untraceable shareholder. And they'll tell you that there was one shareholder who was missing. How many shares he was having? Let's say he was having 50,000 shares, remember. So one person is untraceable who's having 50,000 shares. How much are we going to pay them per share? 120 rupees. Sir, 120 rupees kaise aaya? Capital is of 100 rupees each share. Plus premium of 20%, that's 50,000 into 120. That gives me 60 lakh rupees, remember. Untraceable. So actually how much have you paid them? Only 5.4 CR. This is a working which you should prepare in every question, remember. They will be giving you the figures. Fill up the figures. Something will be missing. That's your balancing figure, remember. And the last point is, whenever you are repaying back the preference shareholders, naturally you require cash for it. If you don't have sufficient cash, what is the alternative? The company might sell some of its assets. And the basic assets that they sell is sale of investments. What will they sell is investments. And whenever you sell investments, naturally there will be either some profit or loss on sale of investments. So you will have to pass an extra entry for sale of investments. Very simple basic entry, remember, for sale of investments. So based on this working, now we are going to look at the pro forma entries. What are the entries that you will have to record whenever there is a redemption of preference shares, remember. So now journal entries. You will not be asked to prepare ledger accounts in this chapter, remember. Only journal entries will have to be passed. Now the first entry should be for sale of investments. Again, this entry will come only if there is specific instructions given in the question that investments were sold. They will tell you what is the book value of investments sold. They will tell you at what price you have sold the investments. So you can easily find out whether there is a profit or loss, remember. So the entry for sale of investments will be amount is received. So cash or bank account, debit. This is your SP. SP stands for selling price.
If you have incurred a loss, then it will be profit and loss account debit. Loss. Investments are sold, gone. So 2. Investments account, your book value, and 2. Profit and loss account, profit. Either there will be a loss on sale of investments or profit on sale of investments. So accordingly, you are supposed to pass the journal entry. That's the first entry if sale of investments is given in the chapter. Second will be your decision of redemption of preference shares. Company has decided to redeem the preference shares. See the working. 12% preference share capital of 5 crores is to be redeemed at a premium of 20%, that is 1 crore. So the total amount payable to the preference shareholders is 6 crores. Preference share capital always has a credit balance. You are redeeming, repaying, you are cancelling. So you will have to debit the same. Company is paying a premium. That means company is paying extra money, loss to the company. Again, you will debit the same. And this amount is payable to preference share holders. So my next entry for decision of redemption will be 12% preference share capital account debit, premium on redemption account debit to preference share holders account. To preference share holders account. If you go by the figures given in the example above, this will be 5 CR, this was 1 CR, so this will be 6 CR, remember. That's my second entry, decision to redeem the preference shares. Third is fresh issue of shares. Fresh issue of shares, and this can be of equity shares as well as preference shares, remember. And in the example above, if you see, we have made a fresh issue of equity shares of 2 CR at a premium of 40 lakhs. So the total amount that the company will receive is 2 crores 40 lakh rupees, remember. So now, simple entry for fresh issue. Cash or bank account debit to equity share capital account and to securities premium account. This is 2.4 CR, this is 2 CR, and this is 40 lakhs. So the third entry is for fresh issue. If the fresh issue is at par, no premium, simple entry. Cash or bank account debit to equity share capital. Fourth will be write off premium on redemption. Write off premium on redemption. And this premium has to be written off against revenue reserve. You will utilize securities premium only if it is specifically mentioned in the question. So my journal entry for the same will be my revenue reserves account or securities premium account debit to premium on redemption account. Again, remember, securities premium appearing in the question is not a reason to use securities premium to write off. They have to give you a separate sentence. Utilize securities premium to write off premium on redemption, or they will specify premium on redemption should be written off against securities premium. If these wordings are not there, don't utilize securities premium even if it is given in the question. You have to use your revenue reserves only. Next is create CRR. Create CRR, Capital Redemption Reserve.
And to create CRR, we have to use only one reserve, that is your revenue reserves, remember. So the entry for creating is revenue reserves account debit to CRR account, capital redemption reserve account. And sixth entry is payment to preference shareholders. It will be preference shareholders account debit to cash or bank account. Maximum 6 entries in case of redemption of preference shares chapter. Maximum. इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे कम एंट्रीज हो सकती है. And finally, preference shares can be redeemed only if they are fully paid. Partly paid preference shares cannot be redeemed. So if you have partly paid shares and if you have to redeem those preference shares, you will have to first make a final call on that preference shares. Every shareholder pays the money. Shares become fully paid. Then and only then redemption of preference shares can take place, otherwise not. So partly paid preference shares cannot be redeemed. Only fully paid preference shares can be redeemed, remember. This was your basics about redemption of preference shares. Now the second part is accounting for bonus. Accounting for bonus. But before you do the accounting for bonus, you have to understand that reserves and surplus of any company, reserves and surplus of any company are basically divided into 3 categories. Reserves and surplus of any company are basically divided in 3 categories, remember. First category is what you call it as capital reserves. Capital reserves are basically those profits which are earned on account of some capital transaction. A few examples. Securities premium. Company will receive securities premium only when shares are issued at a premium. And companies don't issue shares at a premium on a regular basis, remember, once in a while. So it's always a capital reserve. Second is share forfeiture. You have done a chapter issue of shares. In that, if you recollect, if a shareholder does not pay the allotment or call money, that is, they are in arrears, the board of directors have a right to forfeit the shares, cancel the shares. Entry for forfeiture of shares is basically share capital account debit to calls in arrears and to share forfeiture. So share forfeiture balance will be there, credit balance. And how did it come into existence? On account of forfeiture of shares. Does the company forfeit shares on a regular basis? No. So it's one of your capital reserve. Third example is capital reserve itself. Shares were forfeited, then those forfeited shares are reissued, and thereafter the balance in share forfeiture you transfer it to capital reserve, remember. One example can be your revaluation reserve. Revaluation reserve can be there. Revaluation reserve comes into existence whenever you appreciate one of your fixed assets, property, plant and equipment. And normally, logically, practically, building is appreciated or land is appreciated. Machinery, furniture are normally not appreciated.
So on account of those appreciation, you will have a revaluation reserve. But remember, revaluation reserve is not realized in cash. It's merely a book entry, a set account debit to revaluation reserve. It's not realized in cash. So these are the examples of your capital reserves, remember. Second is revenue reserves. They are also known as free reserves. They are also known as divisible profits. Revenue reserves, free reserves, divisible profits. Few examples. First, you will have general reserve. Second is P&L. Third is reserve fund. And fourth is, you can say, dividend equalization reserve. We call it as DER. These reserves are revenue reserves because they are created out of the profits earned by the company every year. Every year the company earns some profit. A part of that profit is transferred to these accounts. Maybe general reserve, maybe reserve fund, maybe dividend equalization reserve. It's called as appropriation of profits. Hence, they are revenue reserves or free reserves. And the third is what we call it as statutory reserves. This you will not find it in every company's balance sheet. Statutory reserves are those reserves which are to be compulsorily maintained by certain companies which have received some benefit from the government. Only such companies will have to maintain statutory reserves. All companies will not maintain statutory reserves. Examples of statutory reserve is development reserve. You can also call it as development rebate reserve. Third will be your export profit reserve. Fourth is investment allowance reserve. Fifth is foreign project reserve. These are the normal 5 statutory reserves, remember. These reserves cannot be used for any purpose. It has to be retained for a specific number of years. At the end of that period, this reserves may be transferred to your revenue reserves, that is general reserve, then it becomes a free reserve, then you can use it for whatever purpose you want to, remember. So all reserves and surplus of any companies are divided in 3 main categories, that's capital reserve, revenue of free reserves and statutory reserves. Now we come to that bonus concept. Bonus is basically divided into 2 parts. One is called as partly paid bonus and second is called as fully paid bonus. Partly paid bonus and fully paid bonus. What do you mean by partly paid bonus? Partly paid bonus basically means partly paid equity shares are converted into fully paid without receiving cash from the shareholders. Partly paid equity shares are converted into fully paid without receiving cash from the shareholders. Let's take a very simple example.
I'm just drawing a horizontal balance sheet. Equity share capital in bracket 10, 8. Answer is 8 CR. 10, 8. 10 represents the nominal value, face value. 8 represents the paid up value. Capital amount is 8 CR. So, number of shares if you calculate 8 CR divided by 8, that will give you 1 crore shares now. But the shares are partly paid. Company can make a call of 2 rupees in future, remember. Let's take a case where company has revenue reserves of 200 crores. Revenue reserve is 200 crores. Now what happens is, company decides, instead of making a final call from the shareholders, receiving 2 rupees from the shareholders, let us give them partly paid bonus by converting partly paid into fully paid, for which purpose they will be using this revenue reserves. Partly paid bonus, you have to use only revenue reserves. You cannot use capital reserves or statutory reserve. That's not allowed, remember. So over here, what will happen is, company will convert partly paid shares into fully paid. Your share capital will increase, but what is going to reduce is your reserves and surplus. So now, once your partly paid bonus is given, this will become 10 CR and this will become 198 CR. Capital will increase by 2 CR. Revenue reserves will decrease by 2 CR, remember. So how do you do the accounting for the same? Logically, there should be one entry. Reserves are reducing, capital is increasing. So reserves account debit to equity share capital. However, 3 journal entries are to be recorded if you want full marks. The first entry over here will be final call. So equity share final call account debit to equity share capital account. First entry will be for your final call, equity share final call to equity share capital. Second entry is for utilizing the revenue reserves. You are going to use revenue reserves of 2 CR for giving bonus to the shareholders. So entry for the same will be revenue reserves account debit to bonus to equity shareholders. And the last entry is for converting partly paid shares into fully paid. Entry for the same will be bonus to equity shareholders account debit to equity share final call account. If I merge the 3 entries, it is revenue reserves to equity share capital, but you cannot pass one single entry, remember. This is the concept of partly paid bonus. So what is fully paid bonus? Fully paid bonus means new shares are given free of cost to the existing shareholders. New shares are given free of cost to the existing shareholders. No money is received from the shareholders. However, a company can issue fully paid bonus shares only if the existing equity shares were fully paid. If the existing equity shares are partly paid, company cannot issue fully paid bonus. So for that purpose, what the company will have to do is first convert the partly paid shares into fully paid, either by making a final call or by first giving them partly paid bonus, remember. Now once the shares are fully paid, company will announce fully paid bonus. Fully paid bonus, there is always a ratio that is announced. If it is announced as 1:1, which means for every 1 share held by the shareholder, he will be getting 1 more share free of cost, remember. If a person is having 100 shares, he will get 100 bonus shares. Suppose if it is in the ratio of 2:1,
If you're holding 1 share, you will get 2 shares as bonus, remember. 2 shares as bonus. If it is in the ratio of 1:3, if you're holding 3 shares, you will get 1 share as bonus. The first figure is for bonus, second is for the existing shares held. Cash is not received. It's purely capitalization of reserves. For fully paid bonus, you just have to pass 2 journal entries, remember. First entry is for decision of bonus, which you also call it as capitalization of reserves, remember. But for bonus, when you are utilizing the reserves, you have to utilize the reserves in a specific order. You cannot use whatever reserves you want to use first, remember. For this, you should always first use capital redemption reserve, CRR. Remember, we had created CRR at the time of redemption of preference shares. That CRR should be first used. So, see the question, do we have CRR? If yes, utilize that first. Sir, it is insufficient. Fine. Whatever amount is available, you first use that amount. Second, you will use your capital reserves. Third, you are supposed to use your securities premium. And finally, you will use your revenue reserve. But remember, capital reserves and securities premium should be realized in cash, which means one of your capital reserve is revaluation reserve. That cannot be used for bonus because that was not realized in cash too. Bonus to equity shareholders. And second entry will be for issue of bonus shares. Very, very simple entry. Bonus to equity shareholders account debit to equity share capital account. Again, if I merge the two entries, it is reserves account debit to equity share capital. Reserves will go down, equity share capital will increase, but you are not supposed to pass a combined entry. You have to pass 2 entries for fully paid bonus and 3 entries for partly paid bonus, remember. That's your theory relating to bonus shares. Fully paid bonus can be issued only if the existing shares are fully paid. If the existing shares are not fully paid, make a final call or give them partly paid bonus, and then and only then you will give them fully paid bonus. Okay. Now the next chapter that we are going to revise is your profits prior to incorporation. Profits prior to incorporation. Suppose if someone takes over the business of a sole proprietor or a partnership firm, he is taking over the business, existing business of a sole proprietor or partnership firm is taken over by someone, but that person who is taking over the business is not going to run it as a sole proprietor or partnership, but he is going to run it as a company. Then this concept comes into existence, which is called as profits prior to incorporation. Let's take a very simple example. A person takes over a business of a sole proprietor on 1st April 21. This is called as date of takeover. So, a person takes over an existing business of a sole proprietor, a settled business of a sole proprietor on 1st April 21.
Naturally, when he is taking over the business, he will have to pay a price for it, and that price is what we call it as PC, purchase consideration. This will be agreed by both the parties. The buyer and the vendor both will agree upon the price that has to be paid by one person to the other person. But the buyer who is taking over the business will not run it as a sole proprietor. He is going to run that business as a company, a private limited company. And remember, to form a company, you require some time. First, name approval has to be done. Then you are going to prepare memorandum of association, articles of association, present it to the ROC. They will verify it and so on. It takes time. Once every particular procedure is completed, paperwork is over, thereafter, the government issues a certificate which is called as Certificate of Incorporation. It is the date on which the company came into existence. And let's see, the Certificate of Incorporation, which is called as date of incorporation, is 1st July 21. Let's assume the date of incorporation is 1st July 21. So business is taken over on 1st April of a sole proprietor. Buyer continues with the business from 1st April. He becomes the owner, but he runs that business on behalf of the company which will be incorporated in the near future. Company comes into existence. Date of incorporation is 1st July 21, and let's say the year ends on. Year ending is on 31st March 22. So in the first year of the company is basically divided into two parts. From the date of takeover till the date of incorporation, this particular period is called as pre-period, remember. And from the date of incorporation till the year ending, this particular period is called as post-period. So in every question, they will be giving you these three figures, that's dates. What was the date of takeover, what was the date of incorporation, and what is the year ending dates. These three dates will always be given to you. From this date, you have to first calculate the first important ratio, and that is what you call it as time ratio. Time ratio is very simple to calculate. How many months in the pre-period? How many months in the post-period? In this example, my pre-period will be from 1st April 21 to 1st July 21. That's a period of 3 months. And my post-period will be from the date of incorporation, 1st July 21, till the year ending 31st March 22. That's a period of 9 months. So can I say my time ratio is 1:3? This is the first ratio that every student has to calculate in this chapter, and this is really very easy. Date of takeover will be given, date of incorporation will be given, year ending date will be given. You just have to compare these three dates and find out your time ratio. Now, what is the purpose of this chapter? Your job is to find out that how much profit or loss was made in the first 3 months, that's during the pre-period, and what is the profit or loss that you have earned in the post-period, remember. In the question, 12 months trading P&L will be ready-made given to you. Your job is very simple. All incomes will be given, expenses will be given. So out of the 12 months incomes and expenses, you have to find out what are your incomes and of the pre-period and post-period? What are your expenses of pre-period and post-period? So accordingly, what is the profit or loss of pre-period and post-period? You just have to divide 12 months income and expenses into pre-period and post-period, remember. For which, what you have to prepare is basically a P&L statement.
And how do you prepare this P&L statement? Very simple. That's your particulars column. This is your basis column, a pre column and post column. You first write down all the incomes. How much incomes in the pre period? How much incomes in the post period? Remember, they will be giving you 12 months incomes and expenses. Your job is to divide those incomes and expenses between both the periods on a suitable basis, remember. From this you minus expenses and the balance that you get is your profit or loss. This is what you have to do. But for this, you need to do certain calculations, remember. So the first ratio that you calculate is ratio. The second ratio that you have to calculate in every question is what we call it as sales ratio. And this might be tricky in certain cases, remember. Suppose if they tell you the sales for the year, first example A, sales for the year is 20 CR, out of which in pre-period it is 4 CR. They tell you what is the sales for the whole year, and they also tell you out of that how much was your sales in the pre-period. So can we easily find out your sales in the post-period now? Very simple. My pre-sales is 4 CR. So my post-sales has to be 16 CR. 20 minus 4. So what's my ratio? 1 is to 4. 4 CR, 16 CR. Ratio is 1 is to 4, remember. Very, very simple example. Slightly complicated example. Sales from 1st October 21 were twice the monthly sales up to 30th September 21. Sales from 1st October 21 were twice, double the monthly sales up to 30th September 21. Now here you have to be slight careful when you are calculating. Immediately some of you must have thought about it. So the answer is 1 is to 2. The answer is wrong. It has doubled from 1st October, remember. So how do we find out the sales ratio in such cases? Very simple. First write down the 12 months, remember. From the date of takeover till the year ending. So that's April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February and March. Write down the 12 months. Now what if they said it has become twice from 1st October up to 30th September ke comparison mein. Which means if I assume a simple thing that my sales till September was 1 rupee every month, then twice, matlab October onwards, my sales will become 2 every month now. It has become twice the monthly sales up to 30th September. So whatever was my monthly sales up to September, of that it is double from October onwards. But remember, my pre-period is only of 3 months. And if I add up, it becomes 3 now, 1 plus 1 plus 1. And my post-period is 9 months, July to March. If you add these figures, it will give you
15. So what's my sales ratio? My sales ratio is 1:5 over here. This is how you calculate your sales ratio. First example, very simple. Second example, slightly tricky. But this is how you're supposed to calculate the sales ratio. That's an important ratio that you have to calculate. So in every question, you have to first calculate these two ratios. One is time ratio, date of takeover till the date of incorporation is your pre-period. Date of incorporation till the year ending is your post-period. And second ratio is sales ratio. Without these two ratios, you cannot proceed further, remember. Now, once these ratios are calculated, then you are going to allocate. Allocation of incomes and expenses. Allocation of incomes and expenses. Allocation basically means division. You have to divide this incomes and expenses into pre and post. What is my pre-period income? What is my post-period income? So first, let's discuss only about incomes. First, let's discuss only about incomes. Now, think about the P&L. Trading, ignore. You're just going to prepare a P&L, remember. So in P&L, what are the major incomes that you will be having? The first major income in the P&L is your gross profit. If they give you the gross profit, well and good. In certain cases, they'll not directly give you the gross profit, but they'll give you sales and cost of goods sold or cost of sales. Two figures will be given to you. Sales figure will be given to you and cost of goods sold or cost of sales figure will be given. So if GP is not given directly, it will be sales minus COGS or COS. How do we divide this gross profit? GP is always based on sales in the absence of any information. अगर GP के बारे में कुछ extra information नहीं देते हैं, it means it is always based on sales and therefore it should always be divided in your sales ratio, remember. So first income, gross profit, it goes in my sales ratio. Second income, discount received. If discount received is given to you, remember discount is received from suppliers, creditors, from whom goods are purchased on credit basis. So discount received should be divided in your purchase ratio. But sir, ऊपर तो हमने purchase ratio calculate नहीं किया, and that is because this is the only income which has to be divided in your purchase ratio. Purchase ratio will not be used for any other reason. So if discount received is given in the question, they will also give you the purchases information, that how much was your purchases in pre-period, how much was your purchases in post-period. Accordingly, you can develop the purchase ratio and allocate the income, remember. Third is profit on sale of investments or property, plant and equipment. Machinery was sold, you made a profit. Furniture sold, you made some profit. Building sold, you earned some profit. Investments becha, profit kamaya. Now remember, this profit is earned on account of the transaction taking place on one single date. On whatever date you sold that asset, on that date you have earned that income. So profit on sale of investments will never be divided into pre and post period, never. See the date of sale which will be given to you in the question.
If not the date of sale, they'll give you the month of sale. So look at that period. Is my period coming in the pre-period? Yes, then it's a pre-income. If they tell you the date which gives you, it's coming in the post-period, it will be my post-income, remember. So this is never to be divided between pre and post. They will always give you either the date of sale or the month of sale. You know what is your pre-period, which months comes in your pre-period. You know what are your post-period, which months comes in the post-period. Accordingly, find out the month in which this particular asset was sold. Is it my pre-period month or post-period month? Accordingly, you have to record it in that particular period. So it's on the basis of date or month of sale. Fourth is income on investment. Income on investments. You have invested in debentures, you are going to receive interest. You have invested in fixed deposit, you will be receiving interest. You have invested in shares, you will be receiving dividend. But remember, this income is received for the whole year in the absence of any information. In the absence of any information, it is for the whole period, and therefore this has to be divided in your time ratio. Pre and post. पूरे साल का income है, fixed होता है, rate remains constant. So it has to be divided between both the periods in the time ratio, remember. And the last income is bad debts recovered. Bad debts recovered. Pre, post, how do we do it? Very simple. See the question. Have they given us bad debts recovered? Yes. Again read the question. Have they given us when was this amount recovered? Bad debts recovered means earlier years it was written off as bad debts. Now that person is coming and giving you the money, remember. See the date of recovery, month of recovery. If they give you the date or month of recovery, then find out that date or month falls in pre-period or post-period. Accordingly, you will be recording it. So it's based on date or month of recovery. They tell you in the question, bad debts were recovered on 14th August 21. Look at the top. Your date of takeover is 1st April, date of incorporation is 1st July, and 14th August comes after the date of incorporation, which means it was recovered in my post period. So accordingly, it will be my post income. However, if they don't give you the date of recovery, if date of recovery is not given, they don't tell you when it was recovered. They just tell you bad debts recovered rupees 10,000. But on which date, in which month, if this information is not given, then if the date of recovery is not given, it will always be considered as a pre-income. On the simple concept that this is an amount recovered on account of bad debts written off in earlier years. 2 साल पहले बैड डेट्स राइट ऑफ किया था, 5 साल पहले बैड डेट्स राइट ऑफ किया था, वो कस्टमर अब आके अगर पैसा देता है, इट इज प्रीवियस लॉस रिकवर्ड इन द करंट ईयर, हेंस इट हैज टू बी ट्रीटेड एज प्री पीरियड इनकम, रिमेंबर. So bad debts recovered, if they give you the date or month of recovery, consider it as concerned period income. But if the date or month of recovery is not given, it's always pre-period. So 5 major incomes that you will normally have, remember. This is how you divide your incomes into pre and post. Next, what you are supposed to allocate is your expenses. Next allocation will be of expenses. Now in expenses, the first type of expenses are your
fixed expenses. Fixed expenses are those expenses which have no relationship with sales. Sales increase हो या decrease हो, this expense remains constant. It doesn't change proportionately with the sales figure. A few examples of your fixed expenses. Can I say rent is a fixed expense? Can I say salaries is a fixed expense? Can I say depreciation is a fixed expense? These are just a few examples, and I'll just write it as office expenses, which all includes your administrative expenses and so on. These are fixed in nature, nothing to do with the sales figure, remember. Hence, these expenses will always be divided between pre and post in your time ratio, remember, which you already calculated at the top. Second type of expenses that you have is variable expenses. Variable expenses are those expenses which has a direct relationship with sales. If sales increases, variable expenses will increase proportionately. If sales goes down, variable expenses will also go down proportionately, remember. And therefore, as it has a direct relationship with sales, it has to be divided in your sales ratio, remember. A few examples of variable expenses. Commission to salesmen, discount allowed, bad debts, advertising and carriage outwards. These are some of the examples of your variable expenses, remember, that you'll divide it in your sales ratio. Third are company related expenses. These expenses are purely related to company and hence it will be considered as a post-period expenses. These expenses are basically incurred after a company is incorporated or they are incurred to form a company. Hence, as it is related to company, it will be only in my post period, not a single rupee in my pre period. A few examples. MD's remuneration. MD stands for Managing Director's remuneration. Managing Director will be appointed only after a company is incorporated. Prior to that, there is no Managing Director. So, his remuneration comes into existence only after the company was incorporated. So, post. Director's fees. Directors will again be appointed only after the company is incorporated. Debenture interest. Interest is paid on debentures and debentures can be issued only by a company. Sole proprietor or partnership firm cannot issue debentures, remember. So, again it is purely a company related expense. Share issue expenses. Who can issue shares? Only company can issue shares. So, again it's a post expense, remember. Preliminary expenses, incorporation expenses, all these are post. Underwriting commission. What do you mean by underwriting commission? Underwriting commission is commission paid to underwriters. Who are underwriters? Underwriters are organization which gives a guarantee to the company. Come out with a public issue of shares. Come out with a public issue of debentures. We give you a guarantee. People will apply for your shares and debentures. And if the public does not apply for those shares and debentures, we will apply for those shares and debentures, which means company is guaranteed
they will be receiving 100% of the issue price, remember. Either from the public, if not from the public, then from the underwriters. Underwriters are taking a risk, so naturally they will be entitled to some commission. So commission will be paid to underwriters. Underwriters appointed for issue of shares and debentures, and shares and debentures can be issued only by a company, hence it's purely a post expense. So those expenses which are incurred after a company was incorporated or which are incurred for forming a company are basically post expenses. A few examples for the same: MD's remuneration, director's fees, debenture interest, preliminary expenses, underwriting commission, etc. These are company related expenses, so only post period. Fourth is pre-period expenses. The name says it will be considered only of the pre-period. Pre-period expenses are basically those expenses which are incurred before a company was incorporated. Before a company was incorporated. That means these expenses will not be incurred after a company is incorporated. By default, it will stop, remember. And the simple example is salary to proprietor or partner. Salary to proprietor or partner. Proprietor or partner can be there only till the company is incorporated. Once the company is incorporated, in a company you cannot have proprietor. In a company you cannot have partner. Designation will change. Yes, it is very much possible that the person was a partner before incorporation. Once it is incorporated, he becomes one of the director. He becomes one of the managing director. Designation changes. Person, human being may remain the same. But then he is no longer termed as a partner now. So if they give you salary of proprietor or salary of partner, it's purely pre, never post, remember. So fixed expenses, always time ratio, variable expenses, sales ratio, company related expenses, purely post, pre-period expenses, purely pre-period, remember. The next is specific expenses. Now there may be some fixed expenses for which they may give you some extra information. In such cases, those fixed expenses will not be divided in your time ratio. Fixed expenses are normally divided in time ratio. But if they give you some extra information relating to those fixed expenses, then you will not use time ratio. You have to make use of that specific information, create a new ratio, and in that new ratio, you are supposed to allocate the expense, remember. Let's take two examples to understand the same. Example A. Suppose they give you salaries. Salaries is fixed or variable? Fixed. Very good. So logically it should go in which ratio? Time ratio. So let's take a case where salaries is given as 4,50,000. You know the time ratio? 3 months pre, 9 months post. As per the example, if you recollect at the top, it means my time ratio was 1:3. In the absence of any information, if nothing was given, I would have divided the salaries in my time ratio. But now they give you some extra information. In
pre-period, there were 3 employees, and in post-period, there were 4 employees. Pre में 3 employees है, post में 4 employees है. Number of employees are not the same in both the periods. Hence, we cannot divide your salaries between pre and post in your time ratio. Extra information is given now, make use of it. So now you'll have to create a new ratio solution. How do we arrive at a new ratio? Very simple. This is pre-period, this is post. First, find out number of months. As per our example, date of takeover 1st April, date of incorporation 1st July, year ending is 31st March, pre-period is 3 months and post-period is 9 months, remember. Multiply this with the number of employees. In the pre-period, we were having 3 employees. In the post-period, we were having 4 employees, remember. If I multiply, this is 9 and this will be 36. So, it's 9 is to 36, which is as good as 1 is to 4 now. Remember, if you recollect, my original time ratio was 1 is to 3. But this salaries in this question will not go in 1 is to 3. So now this 4,50,000, I'll divide it between pre and post in the new ratio of 1 is to 4. So if I divide it, can I say this will be 90,000 and this will be 3,60,000. So total salaries expense for the year is 450, out of which my pre-period expense is 90, post-period expense is 360. That's my first example of a specific expense. Salaries 450. They have given us number of employees information. Make use of that and arrive at a new ratio, and in that new ratio, you will be dividing the salaries. Let's take a second example. Rent. Rent is normally a fixed expense, so it has to go in my time ratio, remember. Let's say the rent given was 7,50,000. Rent given is 7,50,000, but they give you some extra information. Additional premises was taken on a rent of rupees 15,000 per month from 1st October 21. Additional premises was taken on a rent of 15,000 per month from 1st October. Remember, the word is additional premises. Additional premises means extra premises. मतलब जिस premises में से businessman business कर रहा था, April to September छोटा पड़ रहा था. So he took one more premises. It doesn't mean कि पुराना premises गया, वो है. Plus एक extra premises लिया. So 1st October onwards, you can see he's having 2 premises. One we call it as old and second we call it as new premises over here. So how do we allocate this rent of 7,50,000 between pre and post? That's my solution now. This 750 we will first divide it between 2 premises. One is called as old premises and one is called as new premises. New means additional
And when did you take this new premises? On 1st October 21. Year is ending on 31st March 22. So this is a period of how many months? 6 months, remember. Per month kitna hai? 15,000 into 6 months. Answer will be 90,000. And remember, you have 90,000 purely आपका post expense होगा, because all 6 months relates to the post period after the company was incorporated. So total rent is 750. उसमें से नए premises का rent कितना है? 9,90,000. So by default, balance will be the rent of the old premises ना. 750 minus 90 अगर आप करते हो, तो answer is 6,60,000. Now this 6,60,000 is to be divided between pre and post in my time ratio, because this old premises is there for full 12 months. अप्रैल से मार्च 12 मंथ्स के लिए आपके पास वो प्रीमाइसेस है, तो उसको आप टाइम रेशियो में डिवाइड कीजिए. एंड व्हाट इज योर टाइम रेशियो? एज पर द एग्जांपल इट वाज 1:3 ना. सो 660 को आप 1:3 में डिवाइड कीजिए. सो प्री का आएगा 165 और पोस्ट का आएगा 495. रिमेंबर, so my total pre-expenses will be 165 and my total post expenses will be 495 plus 90,000. That gives me 585. और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, see, answer is 7,50,000. So rent is normally fixed in nature. In the absence of any information, we would have divided rent 750 in my time ratio of 1:3 as per the example. However, extra information is given. New premises was taken, so you can't divide that rent directly in your time ratio. You will have to develop a new concept, new ratio, new bifurcation will have to be done, remember. So from the total, you first find out what is the rent of the new premises. That is purely post, because that is from 1st October to 31st March, 6 months, remember. Balance has to be of the old premises, and old premises rent was for 12 months. So that you divided in your time ratio of 1:3, remember. This is relating to specific expenses. Next, interest on PC. Full form of PC is purchase consideration, remember. Now, business was taken over on 1st of April, if you recollect, date of takeover. Date of takeover was 1st April 21. On the date of takeover, a price is agreed upon by both the parties. It's a mutual consideration. Both of them must have said, they must have discussed, thoda bargaining hua hoga, and finally a price is arrived, which we call it as purchase consideration. And let's say the PC amount was agreed. Let's keep it very simple at 1 CR. So logically, the buyer should pay 1 CR to the vendor or seller on 1st April. जिस दिन आप बिजनेस खरीदते हो, उसी दिन आपको 1 करोड़ रुपया दे देना चाहिए था ना. But due to some reason or the other, the buyer tells the vendor, मैं आपको ये पैसा कुछ महीनों के बाद दूंगा. Vendor says, no problem, but मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए. फिर अगर आप मुझे लेट पैसा दोगे, तो आपको मुझे इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अग्रीड एट, रेट ऑफ इंटरेस्ट was agreed at the rate of 12% per annum. दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रेट 12%.
actual date of payment. कब पेमेंट किया? 30th November 21. Business takeover किया 1st April. Logically, amount should have been paid on 1st April, but amount is actually paid on 30th November. Find out how many months late. कितना months late पैसा दिया? Late payment will be 8 months. How do I get 8 months? April, May, June, July, August, September, October, November. 8 months late पैसा दिया. So interest भी pay करना पड़ेगा ना? Not only 1 CR plus interest. So how do I get my interest? It will be on 1 CR, 12% for 8 months. 1 करोड़ पे 12% 8 months के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैन आई से आपका इंटरेस्ट विल बी 8 लाख रुपीस. बट दिस इंटरेस्ट इज फॉर 8 months, April to November. All 8 months are not pre, all 8 months are not post also. तो इस 8 lakhs को आपको डिवाइड करना है into pre and post, but not in your time ratio of 1:3. Time ratio of 1:3 was calculated on the basis of 12 months figure. ये 12 months का नहीं है, ये 8 months का है. इसमें से प्री के कितने months होंगे? 3 months. पोस्ट के कितने months होंगे? 5 months. 3:5 में डिवाइड कीजिए. So can I say प्री का एक्सपेंस आएगा 3 lakhs, पोस्ट का एक्सपेंस will be 5 lakh rupees. So this is your interest on PC. Divided based on the information given. See how many months interest is paid. उसमें से कितने months pre के हैं, कितने months post के हैं, उस रेशियो में आपको इंटरेस्ट डिवाइड करना है. कुछ क्वेश्चंस में इंटरेस्ट का अमाउंट स्ट्रेट अवे दिया जाएगा. यहां पे तो हमने कैलकुलेट किया 8 months का इंटरेस्ट 8 lakhs. कुछ क्वेश्चंस में स्ट्रेट अवे दिया जाएगा. फिर फाइंड आउट करो वो इंटरेस्ट कितने मंथ्स का है, अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दीजिए. वेरी वेरी सिंपल. बट रिमेंबर, लॉजिकली पीसी शुड हैव बीन पेड ऑन द डेट ऑफ टेक ओवर ओनली. सो दैट इज माय 6th expense. 7th expense relates to audit fees. इसमें 3 possibilities है. If they just give you audit fees, which means audit checking of accounts was done for the whole year, 12 months का checking हुआ है, तो सिर्फ audit fees दिया तो आप कौन सा रेशियो यूज करोगे? टाइम रेशियो यूज करोगे. But suppose if they specifically give you the word company audit fees, कंपनी वर्ड डाल दिया अगर उन्होंने, in that case it will be considered as an expense of the post period. Remember, full amount will come only in my post period, nothing in the pre period. But suppose if they use the word tax audit fees. Tax audit fees. Tax audit has to be carried out as per the Income Tax Act only if the turnover of the businessman exceeds a specific limit. उससे ज्यादा अगर टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट करवाना है. एवरी बिजनेसमैन को टैक्स ऑडिट नहीं करवाना पड़ता है. सो एज इट इज बेस्ड ऑन द लिमिट ऑफ द टर्नओवर, इट हैज टू बी डिवाइडेड इन योर सेल्स रेशियो. रिमेंबर, so audit fees will be divided always in your sales ratio if tax audit fees is given. If company audit fees is given, it is purely post. If nothing is given, no company word, no tax word, only audit fees is given, then it will go in my time ratio. Remember. 8.
reserve for bad and doubtful debts. सिंपल में हम RDD कहते हैं ना. Reserve for bad and doubtful debts. In simple words, we call it as RDD. Remember, RDD is always created at the end of the year. जब हम 31st मार्च को फाइनल अकाउंट्स बनाने बैठते, उस वक्त RDD कैलकुलेट किया जाता है as a percentage of debtors. This is a loss which you are expecting in future, for which a provision is made in the current year. Hence, it is always considered as a post expense, never pre, remember. So, RDD will always be post. इसको pre में कभी record नहीं करोगे आप. Ninth is provision for tax. PFT. Provision for tax. Tax is to be paid to the government on the profits earned by the organization. और प्रॉफिट्स तो आप प्री पीरियड में भी कमाने वाले हो, पोस्ट पीरियड में भी कमाने वाले हो. दोनों प्रॉफिट पे आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को. गवर्नमेंट के लिए प्री और पोस्ट कोई मतलब नहीं रहता टैक्स डिपार्टमेंट के लिए. फॉर देम दिस इज नॉट वंस इन अ वाइल और रेगुलर इनकम. रिमेंबर, वो कहते हैं आपने प्रॉफिट कमाया ना, आपको टैक्स पे करना है. This provision for tax is always to be divided in the ratio of net profit before tax. NPBT stands for net profit before tax. And how do I get my net profit before tax? It is incomes minus expenses. 5 इनकम्स हम देख चुके थे, 8 एक्सपेंसेस का हम एलोकेशन देख चुके हैं. सो इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस का एलोकेशन कर लीजिए. इन अ वर्किंग फाइंड आउट व्हाट इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. उस रेशियो में आप प्रोविजन फॉर टैक्स को डिवाइड करोगे. रिमेंबर, सो प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलवेज गोज इन द रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नाउ classification of profit or loss. Classification of profit or loss. Pre-period, post-period. Incomes का हमने bifurcation कर दिया दोनों का. माइनस एक्सपेंसेस का बाइफिकेशन हो गया दोनों पीरियड का. बैलेंसिंग फिगर मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव. अगर पॉजिटिव है तो आपका प्रॉफिट होगा, नेगेटिव है तो लॉस होगा. सेम अप्लाइज ओवर हियर. पॉजिटिव है तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव है तो लॉस होगा. प्री इज कैपिटल इन नेचर, पोस्ट इज रेवेन्यू इन नेचर. सो प्री एंड पोस्ट, कैपिटल रेवेन्यू. पोस्ट अगर रेवेन्यू प्रॉफिट है तो ये आपका नॉर्मल नेट प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस आया तो ये आपका नॉर्मल नेट लॉस है. रिमेंबर, post not a big issue, it's normal net profit, normal net loss. However, pre में अगर profit है, capital in nature, हर साल नहीं होने वाला है. Every year of the company will not be divided in pre and post. लाइफ में एक ही बार होता है, in the very first year when the business of a sole proprietor or partnership was taken over and it was being conducted in a company's manner. Remember, ये एक ही बार होता है लाइफ में. एवरी ईयर ये बाइफिकेशन नहीं होता है. सो इट्स कैपिटल, दिस इज कैपिटल इन नेचर, वेयर एज पोस्ट इज रेवेन्यू इन नेचर. कैपिटल इन नेचर प्रॉफिट है तो इट गोज टू एन अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व अकाउंट. कहां पे रिकॉर्ड करोगे? कैपिटल रिजर्व में रिकॉर्ड करोगे. और अगर लॉस है, वन टाइम लॉस, बट यू डोंट हैव अ कैपिटल लॉस अकाउंट, इट इज कैपिटलाइज्ड टू एन अकाउंट कॉल्ड एज गुडविल अकाउंट. रिमेंबर,
क्या लिखोगे आप उसके लिए? गुडविल. कैपिटलाइज इट एंड देन इट विल बी अमोर्टाइज्ड, रिटन ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. रिमेंबर. So pre-profit is capital reserve, pre-loss is goodwill, post-profit is normal net profit, post-loss is normal net loss, remember. So in this chapter, you just have to do this allocation, bifurcation, division of incomes and expenses. Your format is very, very simple, remember. You just have to record the incomes and expenses in a particular way, remember. This is how you do it. Vertical P&L statement, particulars column, basis column, pre-column, post-column. Basis column में क्या record करोगे? The information. Whether we have used time ratio, whether we have used sales ratio, or whether some specific information was given. जैसे सैलरीज का हमने एक एग्जाम्पल देखा था, रेंट का हमने एग्जाम्पल देखा, इंटरेस्ट ऑन पीसी का देखा. देयर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वाज गिवन, सो वी डिड नॉट यूज टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो. वी डेवलप्ड अ न्यू रेशियो. इन दैट न्यू रेशियो द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वर रिकॉर्डेड. This is what you are supposed to do in this particular chapter. This is your profits prior to incorporation. सिर्फ P&L statement बनाना है. You don't have to prepare a balance sheet in this question. But remember, it has to be a vertical P&L. Horizontal P&L allowed नहीं है. Debit side, credit side नहीं करना. It has to be vertical P&L because it's of a company over here, remember. That was all about your profits prior to incorporation chapter. Okay, so the next chapter that we are going to revise is fire insurance claim. Fire insurance claim. Now this chapter is basically divided into two parts. One is loss of stock and second is loss of profit. Loss of stock and loss of profit. One at a time. First we will be looking at only loss of stock and then we will be looking at loss of profit, remember. So first, loss of stock. What happens is, if a businessman is doing a business and if a fire takes place in his premises, goods are lost by fire, then there is a huge loss to the businessman, remember. To ensure against this loss, he enters into an agreement with the insurance company whereby he tells the insurance company that if a fire takes place in my premises and if my goods are lost by fire, I should be reimbursed, I should be compensated by the insurance company. And the insurance company also agrees to it that yes, if a fire takes place in your premises, we will give you the loss that you have suffered. But prior to that, certain discussions, certain figures have to be finalized by both the parties, remember. First figure will be what is the policy amount. And who will decide this policy amount? It will be decided by the businessman because he knows on an average what is the value of goods lying in his premises, what is the value of stock that is lying in his premises. He knows this very well. So he will tell the insurance company that on an average 10 lakh rupees of stock is lying in my premises, which means you have to take out a policy of around 10 lakhs. Now remember, 10 lakhs is the average stock. So maybe on certain days the stock available will be more than 10 lakhs. On certain days the stock available will be less than 10 lakhs. So he takes out a policy of 10 lakh rupees, which means
Worst come worst scenario, if all the goods are lost by fire, insurance company will pay a maximum of 10 lakhs, not more than that, remember. So policy amount 10 lakhs, for which the insurance company says you will have to pay a some amount as fees, which we call it as premium. From the businessman's point of view, this premium is an expenditure. From the insurance company's point of view, it is an income, remember. Who will decide this premium amount? The insurance company will decide the premium amount, how much premium the businessman has to pay. There are various factors which are taken into consideration based on which this premium amount is decided. Let's take a very simple example. Insurance company says you will have to pay a premium of 10,000 rupees. So premium will be paid by the businessman to the insurance company. If a fire takes place, loss is suffered by the businessman, the insurance company will give maximum 10 lakh rupees to the businessman. This policy is normally for a period of always 1 year. It's always for a period of 1 year. In that 1 year's time period, if the fire takes place, insurance company will pay 10 lakh rupees. And in that 1 year's time period, if the fire does not take place, this 10,000 premium paid by the businessman is not refunded by the company. Remember, it's forfeited, it's gone. So this is a non-refundable amount paid by the businessman, remember. So keeping these figures in mind, you're supposed to now find out. Now let's take a case where a fire takes place on a particular date of fire. Let's say the fire took place on 17th December 22. The date has not yet come, but let's assume 17 December 22 is the date when the fire takes place. Now what happens is, fire took place, all the stock was destroyed in the fire. So naturally, even the books of accounts may be destroyed in the fire. So how do we find out, as on the date of fire, what was the stock lying in the premises, remember? And to find out this stock lying in the premises on the date of fire, you have to prepare an account called as Memorandum Trading Account. It is not for the whole year, remember. It is only from the beginning of the year till the date of fire. Beginning of the year, it will start on 1st April 22 till the date of fire, 17th December 22. It's a normal trading account, remember, but still we are calling it as memorandum because normally when you prepare your trading account, the balancing figure is gross profit. Here, you are not preparing the trading account with the intention of finding out the gross profit. Here you are preparing trading account with the intention of finding out what was the stock on the date the fire took place. And remember, as it is not for the whole year, we call it as a memorandum. So it's a normal trading account which you all know, remember. What do we write on the debit side first? Opening stock. What do we write it on the debit side first? Opening stock. Now, how do I get the opening stock figure? It's very simple. Last year's closing stock becomes current year's opening stock now. So, automatically last year's closing stock will be given, which is your current year's opening stock. Record the same. Then you find out what are the purchases during this period. April 22 to December 22, what were your purchases? It will be given in the question. Then you record your wages, if any. Record your direct expenses like carriage inward or manufacturing expenses if given in the question. Diya hai to record karo, otherwise not, remember. On the other side, there will be sales.
Find out what was the sales from April to December. It will be given in the question. You simply have to copy it. Now you apply the GP rate. Percentage will be given to you in the question. Apply that percentage on the sales figure. What you will get is your gross profit amount. In certain questions, what will happen is they will not give you the GP rate, but they will give you figures of last year. Last year, what was the opening stock? Last year, what was your purchases? Last year, what was your sales? Last year, what was your closing stock? Last year's trading account, all figures will be given to you. Based on those figures, before you prepare this memorandum trading account, you will have to prepare last year's trading account. It will not tally. Balancing figure will be your gross profit. Find out the percentage. Apply that percentage over here. What you get is the GP amount. Close it. Difference that you get is what you call it as by stock on date of fire. The date on which the fire took place. This was the value of goods lying in the premises. इतने value का goods जल गया, remember. So, insurance company will have to give him this amount of claim. Now, let's take a very simple example. This amount comes to 9.5 lakhs. Answer is 9.5 lakhs. So, the businessman goes to the insurance company and tells the insurance company, देखिए आग लगी, stock was destroyed by fire, 9,50,000 का stock था premises में जल गया. Do you recollect what was the policy amount at the top? You have taken an example. It was of 10 lakh rupees if you see the policy amount. Policy कितने का था? 10 lakh का था. What is the stock on date of fire? 9.5 lakh. So the insurance company says, okay, fine, we are ready to pay you the amount. But we have some questions. All the goods were lost by fire, or were some goods saved from fire? 9.5 लाख का स्टॉक था, सब जल गया, पूरी जल गया. Or were you able to save some stock? If any stock is saved from fire, stock saved from fire, it is normally called as salvage. इसको हम क्या कहते हैं? Salvage. It's not necessarily they will be in good condition only. They can be in damaged condition. कुछ तो पैसा मिलेगा ना बेच के, zero तो नहीं होगा. So whatever amount you are going to receive from the sale of this salvage, उतना loss आपका कम हो गया तो हम आपको उतना कम compensation देंगे. So stock on date of fire is not the final claim amount. If any goods were saved from fire, which you can sell it in the market, it may be slightly damaged goods. Yes, you may not realize the full amount, but yes, you can realize something. उसको हम क्या कहते हैं? Salvage कहते हैं. So over here, what you have to do is you have to do the calculation of loss by fire. And how do we calculate the loss by fire? Very simple. See, what was your stock on date of fire? इसमें से आप माइनस कीजिए salvage. Salvage will be given to you in the question. The balance is what we call it as loss by. The balance is what we call it as loss by fire. In this case, this is 9,50,000. Let's assume the salvage was 20,000. So what is your loss by fire? 930. Find out what is your policy amount. Policy amount was 10 lakhs. You had taken a policy of 10 lakhs, but the stock lying in the premises was only 9,50,000. Policy amount ज़्यादा है.
stock was less, that means you're fully insured. In fact, ज्यादा वैल्यू का आपने पॉलिसी निकाला था, ज्यादा वैल्यू का पॉलिसी निकाला मतलब प्रीमियम ज्यादा पे किया, इंश्योरेंस कंपनी का इनकम ज्यादा हुआ, दे विल गिव यू द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम. सो इन दैट केस योर अमाउंट ऑफ क्लेम, जितना लॉस हुआ पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी, दैट इज 9,30,000. Very, very simple. However, let's assume that this balancing figure, stock on date of fire, is not 9,50,000, but it is 10,80,000. It is 10.8 lakhs, remember. Zyada stock hai. So over here, now what do? Calculation of loss by fire. Stock on date of fire is 10,80,000. Salvage, let's keep the salvage same. कितना पैसा मिलेगा damaged goods बेच के? 20,000. So what is the loss by fire? 10,60,000. What was the policy amount? 10 lakhs. Now very, very important. पॉलिसी सिर्फ 10 लाख का निकाला था, जबकि स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर वाज 10,80,000. You have to compare the policy amount with the value of stock on date of fire. As you have taken a policy for a lower value, आपके प्रीमाइसेस में स्टॉक था 10,80,000 का, लेकिन आपने पॉलिसी निकाला है सिर्फ 10 लाख रुपए का, कम वैल्यू का पॉलिसी आपने निकाला है, तो इंश्योरेंस कंपनी कहता है वी विल नॉट गिव यू द फुल क्लेम अमाउंट, हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे. रिमेंबर, व्हाई नॉट? बिकॉज यू हैव नॉट टेकन अ पॉलिसी फॉर द फुल वैल्यू. बिजनेसमैन विल से ठीक है 1060 मत दीजिए, 10 लाख रुपया तो दीजिए, व्हाट इज द पॉलिसी अमाउंट? इंश्योरेंस कंपनी से हम आपको 10 लाख रुपया भी नहीं देंगे. इन सच केसेस average clause is applicable. So when is average clause applicable? Average clause is applicable when? Average clause is applicable when policy amount is less than stock on date of fire. If policy amount is less than the value of stock on date of fire, average clause will be applicable. So how do I get the claim amount? It is calculated as loss by fire upon stock on date of fire into policy amount. Loss by fire upon stock on date of fire. Loss by fire कितना था? 1060 upon 1080 stock on date of fire into 10 lakhs. Use your calci. 1060 divided by 1080 into 10 lakhs. Answer is 9,81,481 rupees. Insurance company will pay money to the businessman but not 10 lakhs. Sir, 1060 का लॉस हुआ, 10 लाख का पॉलिसी है, 10 लाख तो मिलना चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी सेज नो, आपने कम अमाउंट का पॉलिसी निकाला, स्टॉक ज्यादा रखा, पॉलिसी कम है, हम आपको पूरा पैसा नहीं देंगे. एवरेज क्लॉज बिकम्स एप्लीकेबल. इंश्योरेंस कंपनी विल गिव ओनली 9,81,481, नॉट इवन 10 lakhs. This is the concept of loss of stock. Remember, if the fire takes place and goods are lost by fire, to find out what was the stock on the date of fire, what you have to prepare is a memorandum trading account. It's a normal trading account. Opening stock, purchases, wages, carriage inward or manufacturing expenses, sales, GP. Balancing figure is stock on date of fire, remember. Once you get your stock on date of fire, see if there is any salvage.
Salvage is nothing but stock saved from fire, which may be good condition, which may be in damaged condition. Utna paisa aapko milega by selling those goods. Minus that, because utna loss kam ho gaya na, so balances your loss by fire. Then specify the policy amount. But policy amount should always be compared with the value of stock on date of fire, never with loss by fire. Compare it with the stock. कितना stock था, उसके साथ आप policy amount compare करोगे, and you will decide whether average clause is applicable or not. If the policy amount is less than the value of stock on date of fire, average clause will become applicable. अगर पॉलिसी अमाउंट ज्यादा है तो आपने ज्यादा प्रीमियम पे किया, इंश्योरेंस कंपनी फिर एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं करती है. जितना भी लॉस होगा, सेम विल बी योर अमाउंट ऑफ क्लेम ऑल्सो. Now let us take some complications in your memorandum trading account, one by one. This opening stock which is given to you, this opening stock may be overvalued or undervalued, remember. So now adjustment. First, opening stock. Let's take a case where opening stock is given as 1,20,000. Opening stock कितना दिया है question में? 1,20,000. But they tell you it is overvalued by 20%. It is overvalued by 20%. That means this is not the correct cost, remember. अगर यही अमाउंट 120 ऊपर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे तो वो गलत होगा, बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग डाउन द करेक्ट वैल्यू, यू आर राइटिंग अ ओवर वैल्यूड फिगर. So your job is to find out the correct cost of it. And how do you find out the cost of it? Overvalued figure is 1,20,000 and it is overvalued by 20%. ज्यादा वैल्यू रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब है कि आपको वैल्यू कम करना है. बट इट कम कितना करना है? डोंट टेक डायरेक्टली 20% ऑफ 120. सर 24,000 कम कर दीजिए. दैट्स रॉन्ग. इट इज ओवरवैल्यूड बाय 20%, मतलब दिस इज एज गुड एज 120%. तो उसका कॉस्ट कितना होगा? 100%. दैट इज हाउ मच. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. Overvalued by 20%, मतलब it is at 120%. 120% is 1,20,000. 100% is how much? Answer is 1 lakh. This will come in your memorandum trading account debit side. To opening stock 120 नहीं लिखोगे, आप 1 lakh rupees record करोगे. Second possibility. Opening stock is, let's say, 1,80,000 and they tell you it is undervalued by 10%. It is undervalued by 10%. So in that case, now you have to arrive at the correct value. अगर मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में 180 लिखूंगा तो गलत होगा. I cannot write 1,80,000 in my memorandum trading account. I have to now change that value, remember. I have to bring it to the cost price. So how do I do it? It is undervalued by 10%. So can I say it is as good as it is valued at 90%? 90% is 1,80,000. So cost will be 100%. 100% is how much? Simple cross multiplication करोगे तो आंसर कितना आएगा? 2 lakh rupees आएगा. So if you write 180 undervalued figure, that's wrong. You have to bring it to its cost price and accordingly find out the cost and record that cost in your memorandum trading account.
सो ओपनिंग स्टॉक में, स्टॉक वैल्यूएशन में दो पॉसिबिलिटीज होते हैं, या तो वो ओवर वैल्यूड होगा या तो अंडर वैल्यूड होगा। अगर ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड फिगर दिया तो सेम कॉपी नहीं करोगे, आप उसका कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करोगे, कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड करोगे, नॉट द ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड फिगर। बट जरूरी नहीं कि एवरी क्वेश्चन में ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड दिया होगा, रिमेंबर, नॉट नेसेसरी। इफ इट इज गिवन यू राइट, नॉट गिवन, नॉर्मल कॉस्ट दिया तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। फर्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट may be relating to purchases. Suppose if in the question they give you purchases as 10 lakh rupees, तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे ना, टू परचेसेस 10 lakhs, बट नाउ गिव यू सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। Purchases includes purchase of machinery 1 lakh. Purchases includes purchase of machinery 1 lakh. अब अगर आप purchases रिकॉर्ड करोगे as it is 10 lakhs तो वो गलत होगा। So what do you have to do is 10 lakhs inner column less machinery purchased 1 lakh. Outer column it will be only 9 lakh rupees, remember. पूरा 10 lakhs नहीं आएगा, it will be only 9 lakh rupees. Purchases में purchase of asset may be included, which you are going to rectify, remember. Similarly, wages. Wages, let's say they give you it is 5 lakh rupees. But if they tell you some extra information, wages includes installation charges 20,000. Installation charges is not a revenue expenditure, it is a capital expenditure. It should not be appearing in my trading account, remember, it has to be capitalized, it has to go to my balance sheet, remember. तो अगर मैं wages 5 lakhs ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करता हूं तो वो गलत है। इट इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन चार्जेस 20,000, उसको माइनस करोगे आप, रिमेंबर, एंड देन यू विल रिकॉर्ड wages as 4,80,000 rupees. सो wages में एडजस्टमेंट हुआ तो वो आपको एडजस्ट करना है, रिमेंबर. Same way they might give you adjustments in manufacturing expenses. Some amount is outstanding. Outstanding अगर दिया तो आप क्या करोगे, add करोगे, and then you record those figures, remember. Next and the most important one is sales related. Sales का adjustment is important. Suppose they give you sales as 12 lakhs. Sales कितना दिया है, 12 lakhs, and then they tell you sales includes goods sent on approval costing rupees 15,000 for rupees 20,000. Goods were sent on approval. Cost price of the goods sent on approval is 15,000, but it is sent for rupees 20,000. So 20,000 becomes the selling price. So how much profit are we going to earn on the sale of those goods? 5,000. 15 का 20 में बेचोगे तो 5,000 का प्रॉफिट कमाओगे आप, remember. Now the question is, has the customer approved all the goods? And they will tell you something or the other. Customer has approved half the goods.
customer has not approved all the goods. Customer has approved only half the goods. But first line says sales includes. और sales में कितना value included होगा? 20,000. But are all the goods approved by the customer? No. तो sales में पूरा 20,000 include किया, वो गलत है. Now you are supposed to do the rectification, remember. If I write sales 12 lakhs directly in the outer column, I am writing a wrong figure. I am also including those goods which were sent on approval but which were not approved by the customer. So how do we solve this adjustment? Remember, the word is includes. दो पॉसिबिलिटीज होता है कि इंक्लूड्स का होता है, दूसरा एक्सक्लूड का होता है. पहले इंक्लूड करते हैं, देन वी लुक एट द एडजस्टमेंट ऑफ एक्सक्लूड ऑल्सो. सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल वाज 20,000 and its cost price was 15,000. Selling price 20, cost price 15. अब ये 20,000 सेलिंग प्राइस के अब दो पार्ट्स करोगे. A stands for approved, NA stands for not approved. A stands for approved, NA stands for not approved. Same way cost price के भी दो parts करोगे, approved and not approved. Customer has approved half the goods. If half the goods are approved, that means the balance half is not approved. It automatically implies, remember. Same way, this is approved is half, not approved is the balance half. So do the bifurcation. 20,000 ka half is 10,000, here also 10,000. 15,000 ka half is 7,500, here also it will be 7,500. Now understand. First, ये 20,000 का सोचिए. Sorry, 10,000. Approved 10,000. Approve हो गया, मतलब कस्टमर ने खरीदा. कस्टमर ने खरीदा मतलब ये कस्टमर का गुड्स हो गया. इफ कस्टमर हैज परचेज, दैट मींस वी हैव सोल्ड. हमने बेचा तो सेल्स में इंक्लूड होना चाहिए और वो इंक्लूडेड है. नो मिस्टेक. तो इस 10,000 का देयर विल बी नो इफेक्ट. कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करना है, रिमेंबर. बट सेकेंड, नॉट अप्रूव्ड 10,000. नॉट अप्रूव्ड, कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, कस्टमर ने खरीदा नहीं है, मतलब वो अपना सेल्स नहीं हुआ है. अगर सेल्स अभी तक नहीं हुआ है तो वो सेल्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए. बट वर्ड क्या है? इंक्लूड्स, मतलब वो सेल्स में इंक्लूडेड है. गलत है, रेक्टिफाई कीजिए. कैसे रेक्टिफाई करोगे आप इसको? लेस फ्रॉम सेल्स. सेल्स में से आप क्या कर दोगे? उसको माइनस कर दोगे. दैट दिस फिगर शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन योर सेल्स, रिमेंबर. ये सेलिंग प्राइस का हो गया. नाउ कॉस्ट प्राइस. 15,000 was the cost price. Approved 7,500. Approved means कस्टमर ने खरीद लिया. कस्टमर ने खरीद लिया मतलब वो कस्टमर का प्रॉपर्टी हो गया, अपना गुड्स नहीं है वो. It now belongs to the customer. It is not our goods. That means it will not appear in our account. So इसका no effect. हम मालिक नहीं है, कस्टमर मालिक हो गया. Not approved 7,500. कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया है, मतलब ये कस्टमर का गुड्स नहीं है. दिस इज आवर गुड्स. अपना गुड्स है तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आना चाहिए. और फिजिकली सोचो, वेयर आर दीज गुड्स लाइंग ऑन द डेट ऑफ फायर? एट कस्टमर्स प्लेस. ये गुड्स आग लगी उस दिन कहां थे? कस्टमर के घर पे थे. सो वर दीज गुड्स डिस्ट्रॉयड इन फायर? द आंसर इज नो. कैन वी क्लेम दिस अमाउंट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? द आंसर इज नो. सो दिस 7,500 which is not approved, this will come in my memorandum trading account on the credit side as buy stock with
customer. It will come in my memorandum trading account credit side as buy stock with customer. So two effects of goods over here. One is selling price of goods not approved, less from sales. And second, cost price of goods not approved in my memorandum trading account credit side as buy stock with customers, remember. This was if they give you the word includes. Now let us look at an example of excludes. Let's take a look at the example of excludes. Again, sales दिया जाएगा. Let's assume the sales was 15 lakhs. And then they tell you sales excludes goods sent on approval costing rupees 12,000 for rupees 18,000. सेल्स एक्सक्लूड्स, ऊपर के 15 लाख में ये फिगर्स इंक्लूडेड नहीं है. गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल जिसका कॉस्ट प्राइस 12,000 फॉर रुपीज 18,000. सो 18,000 इज द सेलिंग प्राइस. कस्टमर हैज नॉट येट अप्रूव्ड 1/3 of goods. कस्टमर ने अब तक 1/3 गुड्स अप्रूव नहीं किया है. इफ 1/3 इज नॉट अप्रूव्ड, इसका मतलब है कि 2/3 इज अप्रूव्ड. इट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज. सर ऐसा कहां पे दिया हुआ है? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ दे आर सेइंग 1/3 इज नॉट अप्रूव्ड, व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू इज 2/3 ऑफ द गुड्स आर approved, remember. So now what you have to do is very simple. Remember, this is excludes. Excludes means it is not included in the sales figure. Selling price कितना है? 18,000. Cost price कितना था? 12,000 था. इस selling price के हम दो parts करेंगे. Approved, नॉट अप्रूव्ड. 12,000 के भी हम दो पार्ट्स करेंगे. अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड. नाउ 1/3 इज नॉट अप्रूव्ड, विच मीन्स अप्रूव्ड इज 2/3. सिमिलरली यहां पे 2/3 आएगा, यहां पे 1/3 आएगा ना. टू द बाइफिकेशन 12,000, 6,000, 8,000, 4,000. I have taken simple figures so that calci is not required. Now think logically. Selling price 18,000, approved 2/3 12,000. Approved means customer ने खरीद लिया. Customer ने purchase किया, that means we have sold the goods. अगर हमने गुड्स बेचा तो वो सेल्स में इंक्लूड होना चाहिए, बट एक्सक्लूड्स वर्ड दिया है, मतलब वो सेल्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट इंक्लूड होना चाहिए ना, बिकॉज कस्टमर ने अप्रूव कर दिया. सो ये 12,000 जो अप्रूव्ड है, इसका हम क्या इफेक्ट्स देंगे? एड टू सेल्स. ऊपर सेल्स कितना दिया है? 15 lakhs. अब 15 lakhs आउटर कॉलम का फिगर नहीं होगा, इनर कॉलम में लिखोगे. एड गुड्स अप्रूव्ड और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल 12,000. आउटर कॉलम 15 lakhs 12,000. नॉट अप्रूव्ड 6,000. कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, मतलब कस्टमर ने परचेज नहीं किया. अगर परचेज नहीं किया मतलब वो अपना सेल्स नहीं है. सेल्स नहीं है तो वो सेल्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए. इज इट इंक्लूडेड इन सेल्स? नो. व्हाई? बिकॉज एक्सक्लूड वर्ड इज गिवन. सो ये 6,000 का देयर विल बी
नो इफेक्ट. प्लस भी नहीं करने का, माइनस भी नहीं करने का. इट इज नॉट इंक्लूडेड. इंक्लूड नहीं होना चाहिए. परफेक्ट ट्रीटमेंट है, कुछ गलत नहीं है, तो आप रेक्टिफाई क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस 12,000, अप्रूव्ड इज 2/3. अप्रूव्ड मींस कस्टमर ने खरीद लिया. मतलब ये गुड्स अब किसका प्रॉपर्टी हो गया? कस्टमर का प्रॉपर्टी हो गया, अपना गुड्स नहीं है. सो दिस 8,000 रुपीज कस्टमर का प्रॉपर्टी है, तो अपने अकाउंट्स में नहीं आना चाहिए, तो इसका नो इफेक्ट आएगा ना. बट 4,000 नॉट अप्रूव्ड, कस्टमर ने अप्रूव नहीं किया, मतलब कस्टमर ने खरीदा नहीं है, मतलब वो गुड्स अभी भी अपना है. इट बिलोंग्स टू अस, अपना प्रॉपर्टी है, अपना गुड्स आर लाइंग विद कस्टमर. कस्टमर के घर पे वो गुड्स है. आग में ये गुड्स को नहीं कुछ हुआ है, दे आर सेफ एंड साउंड, वी कॉल इट एज. बट ये है तो अपना गुड्स ना. अगर इसका लॉस नहीं हुआ है तो हम इंश्योरेंस कंपनी से इसका पैसा मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते. So where will this appear? In my memorandum trading account on the credit side as buy stock with customers. Buy stock with customers. So sales में दो possibilities होते हैं. Sale includes goods sent on approval and sales excludes goods sent on approval. You have to read that carefully. Includes word है या exclude word है, and accordingly you are supposed to give the treatment, remember. Further, in your memorandum trading account, some more adjustments now. Suppose if any goods are withdrawn for personal use, drawings कहते हैं ना, goods are going out. So where do I record the same? Memorandum trading credit side, buy goods withdrawn for personal use. Drawings simple words में. Goods may be distributed as free samples. Again याद कीजिए दो इफेक्ट्स आप देते थे, ट्रेडिंग क्रेडिट, P&L, डेबिट. So over here ट्रेडिंग क्रेडिट में आएगा ना, buy goods distributed as free samples. Goods distributed as free samples. ये भी तो पॉसिबल है कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में गुड्स चोरी हो गए, lost by theft. So in that case, that will also appear in my trading account on the credit side. Now, by goods lost by theft. Now, what is very important is ये तीनों transactions जो अभी हमने discuss किए, goods withdrawn for personal use, goods distributed as free samples, goods lost by theft, this has to be always recorded at cost price, remember. It is always to be recorded at cost price. In certain questions, they will intentionally give you at selling price. Goods stolen of selling price rupees so and so. Selling price पे देंगे, invoice value पे देंगे, तो वो गलत है. It has to be recorded at cost price and not at selling price, remember. So if goods were withdrawn for personal use or distributed as free samples or lost by theft at cost price, and here you will also have something called as buy stock with customer. Sale on approval, goods not approved, जो not approved है उसका cost price will come in your memorandum trading account credit side. We have written below, remember, memorandum trading account credit side is buy stock with customers. This also will be at cost price. CP का bifurcation था, remember. So this is your basic about your goods lost by fire. If there is loss of stock on account of fire, this is how you prepare a memorandum trading account. You also do the calculation of loss by fire, and then finally you show the calculation of amount of claim, remember. This is first part of this chapter, remember.
Now in the same chapter, there may be something called as abnormal goods. There may be something called as abnormal goods. Now what do you mean by abnormal goods? Abnormal goods are those goods which are damaged goods, defective goods, obsolete goods, out of fashion goods, out of demand goods. They are called as abnormal goods. These abnormal goods are normally sold at a price less than the normal selling price. In certain cases, they may be sold at a loss also. तो अगर हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एबनॉर्मल गुड्स के भी ट्रांजैक्शंस, then the GP rate that we get is the wrong GP rate, remember. Very, very simple example. Let's take a very simple trading account. यहाँ पे हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओपनिंग स्टॉक. Let's say the opening stock was 1 lakh. What do we record on the other side? Debit side. Next is purchases. Let's say the purchases was 10 lakhs. Sales. Let's sales at the top. And here what you will have is your closing stock. Let's say closing stock is 2 lakhs. यहाँ पे क्या आएगा? GP. Balancing figure आएगा ना? Now, let's assume here it is 13 lakhs 40,000. Sales is how much? 13 lakhs 40,000. So, if I find out my GP now, balancing figure, how much will I get it as? 2 lakhs plus 1340 minus 11 lakhs, so that gives me 4 lakhs 40,000 as my gross profit. Now, if I find out the percentage of GP to sales, it is 440 divided by 1340 percentage. It gives me 32.83 or 84%. How much GP percentage I am getting? 32.84% after rounding off. It's 8358 and so on. Now let's take a very simple example. They give you an extra information over here. Goods of rupees 60,000 were sold for rupees 80,000. Goods of rupees 60,000 was sold for rupees 80,000. So can I say this is a part of your sales figure which is given at the top? But if you find out on this particular transaction, इनका profit कितना हुआ है? 60,000 का cost price, sold it for rupees 80,000. So can I say they made a profit of 20,000? 60,000 cost price, sold it for rupees 80,000. So profit is 20,000. And if you find out the percentage of profit, 20,000 profit, selling price 80,000, can I say the profit percentage will be 25% on sales now? 20,000 divided by 80,000 into 100. ऊपर आपको बता रहा है 32.84%, यहाँ पे आपको बता रहा है सिर्फ 25%. This goods will be called as abnormal goods. Why they are called as abnormal goods? Because they are sold at a margin of profit other than the normal GP margin. And because of this one transaction, your overall GP margin has also changed. ये 32.84% जो आ रहा है ना, वो भी गलत है. क्यों गलत है? Because sales includes this transaction of 80,000 which is at a lower GP margin. So if I want to find out my correct normal GP margin,
32.84 भी गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज 1340 इंक्लूड्स 80,000. 80,000 के सेल्स में आपका जीपी मार्जिन कितना था? 25%. तो ये भी गलत हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ विच माय ओवरऑल जीपी मार्जिन इज रिड्यूस्ड. रिमेंबर. So how do I find out my normal GP margin? Very simple. Wherever abnormal transaction values are included, वहां से उसको eliminate कर दो, minus कर दो, deducted. सेल्स 1340 में ये सेल्स इंक्लूडेड है ना एबनॉर्मल गुड्स का 80,000 का, तो इसमें से अगर मैं निकाल देता हूं 80,000, सो कैन आई से दिस विल बी 12,80,000. It will be 12,80,000. Remember, 1340 minus 80,000. Sorry, it will give me 12,60,000. 1340 minus 80 will give you 12,60,000. Closing stock remains same. Opening stock remains same. बट ये जो 80,000 में मैंने बेचा वो हमने परचेज किया था. कितने में परचेज किया था? 60,000 में हमने परचेज किया था. 60,000 किस में इंक्लूडेड होगा? परचेसेस में इंक्लूडेड होगा. तो परचेसेस में से 60,000 माइनस कर दो, तो दिस विल बिकम 9.4 lakhs ना. So now look at the figures. My GP will automatically change. Why? Because sales has changed, purchases has changed. Now if I find out my new GP amount, 1260 plus 2 lakhs minus 1040. My GP comes to 4 lakhs 20,000. And 420 is the GP on sales of 12,60,000. Find out the percentage. And now if you check my new percent, it is 33.33%. It is 33.33%. पहले कितना बता रहा था? 32.84%. वो गलत था. क्यों गलत था? Because sales of 1340 included is abnormal goods of 80,000. That's why that 440 GP is wrong. 440 GP wrong है तो 32.84% भी wrong है. ये फिगर आपके चेंज हो गए. So if I want to know the correct GP margin, what you have to do is wherever abnormal goods transactions are included at whatever value, you have to remove it from there. तो हमने सेल्स में कितना एबनॉर्मल था? 80,000. तो हमने 80 वहां से निकाल दिया. अब गुड्स बेचा, इसका मतलब है कि आपने खरीदा होगा तभी आप बेचोगे ना. खरीदो नहीं, बेचोगे कैसे? तो परचेसेस में भी ये गुड्स इंक्लूडेड होंगे. बट परचेसेस में कौन से वैल्यू पे इंक्लूडेड होंगे? कॉस्ट प्राइस पे इंक्लूडेड होगा. और कॉस्ट प्राइस कितना था? 60,000. तो 10 lakhs में से कितना माइनस करोगे? 60,000 माइनस करोगे. अकॉर्डिंगली यू आर गेटिंग 9,40,000. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं था, तो ऑटोमेटिकली आपका जीपी चेंज हो गया. जीपी का परसेंटेज इज कमिंग टू 33.33%. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल गुड्स. Abnormal goods are damaged goods, defective goods, obsolete goods, out of fashion goods. Wherever they are included, you are supposed to eliminate the same, remember. But it is not necessary that all abnormal goods must have been sold before the fire took place. ऐसा भी तो हो सकता है ना, that as on the date of fire, there were some abnormal goods lying in the premises. But this trading account and memorandum trading account that we are preparing is only of normal goods. इसमें abnormal transactions नहीं है. तो by default आपका जो stock on date of fire आएगा वो भी आपका stock होगा of normal goods. उसमें abnormal goods included नहीं है, which are there in the premises on the date when the fire took place. Remember. तो जब आप स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर कैलकुलेट करोगे तो आपके पास दो स्टॉक होंगे. नॉर्मल का भी होगा, एबनॉर्मल का भी होगा. टोटल कीजिए, फिर सैल्वेज माइनस करोगे, लॉस बाय फायर,
and then your amount of claim will be calculated. So you may have normal goods, you may have abnormal goods also. Abnormal goods के लिए abnormal word use नहीं किया जाता है. It may be a slow moving item, it may be soiled items, it may be your obsolete goods, it may be damaged goods, it may be defective goods. ऐसे words use किए जाते हैं. Normally abnormal words कभी use नहीं किया जाता है, remember. So this was your first part of fire insurance claim chapter, that is loss of stock, remember. Then we will be starting with the second part now, that is your loss of profit. Okay, so that was your loss of stock, fire insurance claim chapter. Now same chapter, loss of profit. Loss of profit. Now what is the concept over here? If the fire takes place, then after the fire is extinguished, for the next few months, the businessman will not be able to do business from his regular business premises, that is the place where fire took place. That place will have to go under renovation. He will have to renovate that shop where the fire had taken place. If the shop is under renovation, naturally the shop is closed, you can say. If the shop is closed, naturally the sales will go down. And if the sales goes down, naturally the profit will also go down, remember. That means the businessman will suffer something called as loss of profit. Profit goes down, that's loss of profit. Why? Because the sales went down. Why did the sales went down? Because the shop was being renovated. Why was the shop being renovated? Because the fire had taken place. This is also called as consequential loss policy. If the loss is on account of any other reason other than fire, insurance company does not give any compensation, remember. So here what is important is the profit should reduce because the sales have reduced, and the sales should have reduced because fire had taken place. Now in this you are supposed to follow certain steps, but before that, important terms. First, date of fire. When did the fire take place? And that will be given in the question. Let's assume the fire took place on 1st June 22. Fire took place on 1st June 22. Second is period of dislocation. For how many months the business was affected? For how many months the renovation took place and so on. That is what you call it as period of dislocation. It will always be given to you in the question, and it always starts from the date of fire. जिस दिन आग लगी उस दिन से आपका period of dislocation start हो जाता है. So let's say it was from 1st June 22 to 30th September 22. So think it is for how many months? June, July, August, September, which means the period of dislocation was 4 months, remember. Third is indemnity period. Indemnity period is the period specified by the businessman at the time when he undertakes the policy that if a fire takes place, he would like to have compensation for a maximum period of how many months? कितने महीने का maximum compensation चाहिए? 3 months, 4 months, 6 months, 8 months.
Who has to decide this period? The businessman. When does he have to decide this period? At the time when he undertakes the policy, remember. So indemnity period will always be given, and let's say the indemnity period was given as 6 months. मतलब बिजनेसमैन ने क्या बोला था, मुझे मैक्सिमम कॉम्पेंसेशन चाहिए 6 महीने का, बट व्हाट इज द एक्चुअल पीरियड ऑफ डिसलोकेशन? ओनली 4 मंथ्स. तो इंश्योरेंस कंपनी 6 महीने का कॉम्पेंसेशन नहीं देगी. इंश्योरेंस कंपनी विल गिव अ कॉम्पेंसेशन फॉर ओनली 4 मंथ्स. रिमेंबर, compensation is always received for the period of dislocation or indemnity period, whichever is less. Remember, suppose अगर indemnity period 3 months का होता एंड 4 महीना लगा रिनोवेशन के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी 4 महीने का कॉम्पेंसेशन नहीं देगी. इंश्योरेंस कंपनी गिव अ कॉम्पेंसेशन ओनली फॉर 3 months. Remember, so indemnity period will be given to you in the question. Fourth is actual turnover. Now remember, if the original premises where the fire took place on 1st June is under renovation and the renovation is going to take 4 months, then for those 4 months the businessman will not sit at home. घर पे आराम नहीं करता है वो. What the businessman does is, he will take up a small premises on a temporary basis in a nearby locality. Remember, और वो वहां से बिजनेस करना शुरू करेगा. छोटा सा शॉप होगा as compared to the original premises, but he will start doing business from that particular premises. मतलब कुछ तो सेल्स करेगा, घर पे आराम नहीं कर रहा है, उसने एक छोटा सा प्रीमाइसेस लेके बिजनेस शुरू कर दिया. सो व्हाटएवर सेल्स ही डज फ्रॉम दैट ऑल्टरनेटिव प्रीमाइसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन इज व्हाट वी कॉल इट एज actual turnover. So actual turnover is turnover during the period of dislocation. Your period of dislocation is 1st June to 30th September 22. ये 4 months में जो भी सेल्स उसने किया है, that is what you call it as actual turnover. Fifth is standard turnover. Standard turnover is turnover during the same 4 months but of the previous year. 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2021 में जो सेल्स हो उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टर्नओवर. ड्यूरिंग दैट पीरियड देयर वाज नो फायर. रिमेंबर, पिछले साल आग नहीं लगी थी, आग करंट ईयर में लगी, 22 में लगी. सो 21 बिजनेस वाज कैरिड आउट फ्रॉम द रेगुलर प्रीमाइसेस on a normal basis. So sales during 1st June 21 to 30th September 21, same 4 months but of the last year is what we call it as standard turnover. Remember, and sixth term is what you call it as annual turnover. Annual turnover is turnover for 12 months ending preceding the date of fire. अपने एग्जाम्पल में आग कब लगी थी? 1st June 22. सोचिए कैलेंडर में 1st June 22 के पहले कौन सा डेट आता है? 31st May 22 आता है. वहां पे 12 months एंड होना चाहिए. Annual turnover is turnover for 12 months ending preceding the date of fire. Preceding the date of fire will be 31st May 22. यहां पे 12 महीना एंड होना चाहिए, तो स्टार्ट कब होगा? 1st June 21 से लेके 31st May 22 तक 12 months का जो सेल्स है उसको कहा जाता है एनुअल टर्नओवर. So these certain terms you are supposed to know in case of loss of profit policy calculations. In this part you don't have to prepare any ledger accounts, no trading, no memorandum, कुछ भी नहीं बनाना है आपको. You just have to follow certain steps to find out what is the amount of claim that you will receive from the insurance company. Remember. So now steps to be followed.
steps to be followed. First step is calculation of short sales. First step is calculation of short sales. कितना sales आपका कम हो गया because of shifting to a new premises after the fire had taken place. So how do we find out this? इसमें सबसे पहले आप क्या रिकॉर्ड करोगे? स्टैंडर्ड टर्नओवर. Standard turnover is turnover that took place during the same 4 months last year. It will be given to you in the question. Let's say it was 10 lakhs. पिछले साल सेम 4 months में आपका सेल्स कितना था? 10 लाख. इसको हम इफेक्ट देंगे प्लस और माइनस effect of trend. What the businessman tells the insurance company, look at my past results. Every year my sales is increasing. तो करंट ईयर में भी अगर आग नहीं लगता तो कैन आई से माय करंट ईयर सेल्स वुड हैव बीन मोर एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, which means there is a trend. My sales are increasing every year. So that effect has to be given over here. This trend information will be given in the question either directly or indirectly. Trend positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है. And let's say there is an increasing trend of 10%. मतलब मेरा सेल्स हर साल बढ़ रहा है. कितने से बढ़ रहा है? 10%. पिछले साल 10 लाख था, उसका 10% कैलकुलेट करोगे तो 1 लाख, विच मीन्स करंट ईयर में अगर आग नहीं लगा होता तो मेरा सेल्स कितना होता? 11 लाख रुपीस का होता है. इसको हम कहते हैं एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. व्हाट डू वी कॉल दिस? एडजस्टेड स्टैंडर्ड टर्नओवर. इसमें से आप माइनस कीजिए एक्चुअल टर्नओवर. बिजनेसमैन 4 महीना घर पे नहीं बैठा. He took up an alternative premises for 4 months. वहां से उसने 4 महीना गुड्स बेचा है, कुछ तो प्रोडक्ट्स बेचा, एंड दैट इज व्हाट यू कॉल इट एज एक्चुअल टर्नओवर. मान लीजिए 4 lakhs क्वेश्चन में दिया है कि वो घर पे नहीं बैठा, 4 महीने किसी और दुकान से उसने बिजनेस किया, 4 लाख रुपए का गुड्स बेचा, which means your short sales is only 7 lakhs as per the example. होना चाहिए था, अगर आग नहीं लगती तो 11 लाख का सेल्स होता. आग लगी, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए, सेल्स किया, लेकिन सिर्फ 4 लाख का सेल्स किया, तो अपना सेल्स कितना हो गया? कम 7 lakhs का. 7 lakhs का कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा. दिस इज द रिडक्शन इन सेल्स. दिस इज नॉट लॉस ऑफ प्रॉफिट, दिस इज लॉस ऑफ सेल्स. पॉलिसी इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. तो प्रॉफिट जो लॉस होगा वो पैसा मिलेगा, नॉट योर सेल्स फिगर. बट दैट इज योर स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स. Step number 2, calculation of GP rate. In this chapter, in this part, the GP rate calculation is slightly different. In this chapter, GP rate calculation is slightly different. Normally, formula होता है gross profit upon sales into 100, not in this chapter. In this chapter, GP rate is to be calculated as operating net profit. Operating net profit is net profit earned by carrying out your regular business activities. इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करना है. प्लस insured standing charges. Standing charges are fixed expenses which has no relationship with sales.
like salaries, rent, depreciation, and so on. All these are your fixed expenses, no relationship with your sales. Remember, it remains constant. Usko standing charges कहते हैं. Now, this expenses has to be paid irrespective whether there is a business or not. तो इंश्योरेंस कंपनी से हम ये भी कॉम्पेंसेशन मांगेंगे कि हमारा ये भी लॉस हुआ, हमने कुछ बिजनेस किया नहीं फिर भी मैंने रेंट पे किया, मैंने कुछ बिजनेस नहीं किया फिर भी मैंने सैलरीज पे किया, तो मुझे इसका भी कॉम्पेंसेशन चाहिए. इंश्योरेंस कंपनी वो भी देती है. सो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ऐड होगा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100. The answer is expressed in percentage. So operating net profit plus insured standing charges upon net sales. ये तीनों फिगर्स कहां से मिलेंगे? पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से. See what was the profit of last year. You have the ready-made trading and P&L of last year, or they will be giving you last year's operating profit was how much, what was your sales last year, what are your insured standing charges. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला में प्रॉपरली लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है. बट रिमेंबर दिस वाज द जीपी रेट ऑफ लास्ट ईयर. आग तो करंट ईयर में लगी ना, तो करंट ईयर का जीपी रेट आपको फाइंड आउट करना है. To this percentage that you calculate, we give the effect of trend plus or minus effect of trend. Either the profit increases or decreases. अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप अप्लाई करोगे. इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द जीपी रेट ट्रेंड, दैट मीन्स यू विल नॉट अप्लाई द ट्रेंड. It remains same. This is what we call it as applicable GP rate. This is your GP rate of current year, remember. Step 3 is calculation of GP lost. It is calculation of GP lost. And how do you get this figure? It is calculated as short sales into GP rate. It is calculated as short sales into GP rate. शॉर्ट सेल्स कहां से मिलेगा? स्टेप नंबर 1 में से. जीपी रेट कहां से मिलेगा? स्टेप नंबर 2. दोनों को मल्टीप्लाई करो एंड यू विल गेट द अमाउंट ऑफ जीपी लॉस्ट. इतना प्रॉफिट अपना कम हो गया, इतना प्रॉफिट का कॉम्पेंसेशन हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. So 3 steps we have seen till now: calculation of short sales, calculation of GP rate, and calculation of GP lost. Now step number 4. Additional expenses. If the fire takes place and the premises is under renovation, naturally the businessman will have to move to another premises for a temporary period. तो उस नए premises पे जब वो गया, उसने एक्स्ट्रा रेंट पे किया. फर्नीचर चाहिए था वो रेंट पे लेके आया, एसी चाहिए था वो रेंट पे लेके आया. सो ही हैज इनकर्ड सम एक्स्ट्रा कॉस्ट. This extra cost incurred by the businessman is called as additional expenses. अगर आग नहीं लगती, he would have not gone to a new premises. तो इसको एक्स्ट्रा रेंट पे नहीं करना पड़ता. Insurance company says we will compensate you. We will also give you whatever additional expenses you incur, but with certain restrictions. आपने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया उसका भी कॉम्पेंसेशन मिलेगा विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. Here you have to calculate 3 figures. Remember, compare the 3 figures, whichever is less over here. First is actual additional expenses. कितना एक्चुअल खर्चा किया, दैट विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन ऑलवेज. नहीं दिया तो 0, और अगर वो 0 है और भी अच्छी बात है, हाफ द जॉब इज डन. सेकेंड, जीपी ऑन actual turnover
on account of additional expenses. एक्स्ट्रा खर्चा करने के वजह से आपका सेल्स कितना बढ़ा? How much goods were you able to sell because you moved on to the new premises? And that's normally your actual turnover. अगर नया प्रीमाइसेस नहीं लिया होता रेंट पे तो आपका सेल्स कैसे होता? सेल्स वुड हैव बीन जीरो. बिजनेसमैन वुड हैव टू स्टे एट होम. बट उसने एक नया प्रीमाइसेस भाड़े पे लिया फॉर अ टेम्पररी पीरियड, वहां से गुड्स बेचा और वहां से जो गुड्स बेचा उसको हम क्या कहते हैं? एक्चुअल टर्नओवर. So it's basically in the absence of any information your actual turnover into GP rate और actual turnover तो आपको already दिया हुआ था. Just consider that figure and so on. That's the second figure. और एक figure आपको calculate करना है और. Third figure that you have to find out is GP on AATO upon GP on AATO plus uninsured standing charges into actual additional expenses. GP on AATO. ATO you already know, that's your annual turnover. Annual turnover is turnover for 12 months ending preceding the date of fire, remember. So how do I get my GP on AATO? GP on AATO is calculated as first annual turnover. This is called as ATO. Annual turnover will be given in the question. पिछले 12 महीने का, just before the date of fire, what was your sales? इसमें आप दोगे इफेक्ट प्लस और माइनस इफेक्ट ऑफ ट्रेंड. जो हमने फर्स्ट स्टेप में स्टैंडर्ड टर्नओवर पे जो ट्रेंड का इफेक्ट दिया था, आइदर द सेल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इफेक्ट आपको देना है. सो इफेक्ट देने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज योर एडजस्टेड एनुअल turnover. It's called as AATO. On this you apply your GP rate. GP rate आपने कैलकुलेट किया स्टेप नंबर 2 में, रिमेंबर, इंक्लूडिंग द ट्रेंड एप्लीकेबल GP रेट, और अप्लाई करने पे क्या मिलेगा आपको? GP ऑन AATO. ये अमाउंट आप न्यूमरेटर में लोगे, सेम अमाउंट इन द डिनोमिनेटर, बट डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा चार्ज है, दैट इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. Uninsured standing charges means fixed expenses which were not insured by the businessman. If you insure all fixed expenses, then what will happen is the policy amount will increase. Policy amount increase होगा तो प्रीमियम बढ़ेगा. तो कभी कभी बिजनेसमैन क्या करते हैं, they don't want to insure all standing charges so that the policy amount comes down. Policy amount कम आ जाएगा तो आपका प्रीमियम पे करना पड़ेगा. So there may be some uninsured standing charges. It will be given in the question, you need not find out. Into actual additional expenses and you will get some amount. So अब आपके सामने 3 figures है. Actual additional expenses कहाँ से मिलेगा? A point में से. So you have A, B, C. Compare the 3 figures, whichever is less. तीनों में जो कम अमाउंट होगा उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा इन द नेम ऑफ एडिशनल एक्सपेंसेस. So it's not necessary that actual additional expenses incurred will always be received from the insurance company. May not. कभी कभी कम पैसा भी मिलेगा. C का आंसर can be less than A answer, remember. In that case, whichever is less will be received from the insurance company. So इंश्योरेंस कंपनी 2 चीजों का कॉम्पेंसेशन देती है, जीपी लॉस स्टेप नंबर 3 एंड एडिशनल एक्सपेंसेस स्टेप नंबर 4 का, रिमेंबर. नाउ कम्स
Step number 5. Step number 5 is calculation of gross claim. Step 5 is calculation of gross claim. How do we find out calculation of gross claim? It is nothing but GP lost. कहाँ से मिलेगा? स्टेप नंबर 3 में से अमाउंट मिलेगा. इसको हम ऐड करेंगे. एडिशनल एक्सपेंसेस कहां से मिलेगा? स्टेप नंबर 4 में से. इन दोनों का टोटल, नो नेम फॉर द सेम. फ्रॉम दिस यू विल माइनस savings in insured standing charges. It will be given in the question. What do you mean by it? कुछ fixed expenses शायद कम हो जाएगा because of renovation. A simple example. जिस दुकान में आग लगी, जहां रिनोवेशन चल रहा है, वो बिजनेसमैन का खुद का दुकान नहीं था, उसने भाड़े पे लिया था, विच मीन्स ही इज अ टेनेंट. ओनर कोई और है जिसको हम लैंडलॉर्ड कहते हैं. लेट्स अज्यूम द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस वाज 50,000 पर मंथ. एक महीने का 50,000. आग लगी, स्टॉक जल गया, दुकान जल गया, फर्नीचर जल गया, रिनोवेशन चल रहा है, 4 महीना रिनोवेशन चलने वाला है. तो जो लैंडलॉर्ड होता है, ही इज अ वेरी गुड पर्सन. वो कहता है बिजनेसमैन को, एक काम कीजिए, अगले 4 महीना जब आपका रिनोवेशन चल रहा है, दुकान बंद है, सेल्स कम हो गया, आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप भी मुझे रेंट कम देना. जस्ट गिव मी 30,000 रुपीज रेंट पर मंथ, बट ओनली फॉर 4 months. एक बार दुकान रिनोवेट होके रीओपन हो गया, रेंट वापस 50,000 हो जाएगा. अब देखिए, उसने 20,000 रुपीज कम पे किया ना पर मंथ. 4 महीने का कितना एक्सपेंस कम हो गया? 80,000. अगर कम रेंट पे किया तो लॉस कम हुआ, लॉस कम हुआ तो कॉम्पेंसेशन भी कम मिलना चाहिए ना फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. क्वेश्चन में दिया होगा, आपको ढूंढने नहीं जाना है. और वो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, इसको हम कहते हैं ग्रॉस क्लेम. दिस इज योर स्टेप नंबर 5, ग्रॉस क्लेम कैलकुलेशन. एंड लास्ट, स्टेप नंबर 6, अमाउंट ऑफ claim. And how do we get this amount of claim? Very simple. What you have to do is you have to compare GP on AATO. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. इसको आप कंपेयर कीजिए विथ पॉलिसी अमाउंट. क्वेश्चन में देंगे. If policy amount is less than GP on AATO, then average clause is applicable. GP is less than, policy amount is less than GP on AATO. आपने कम अमाउंट का इंश्योरेंस निकाला है, अब प्रॉफिट ज्यादा कमाने वाले थे, आपने इंश्योरेंस कम अमाउंट का निकाला, मतलब पॉलिसी कम अमाउंट का लिया, तो आपने प्रीमियम कम पे किया. बिजनेसमैन के लिए प्रीमियम एक्सपेंस है, बट इंश्योरेंस कंपनी के लिए तो प्रीमियम इनकम है. सो नेचुरली उनको कम प्रॉफिट मिला, उनको कम इनकम मिला, तो वो भी तो कॉम्पेंसेशन कम देंगे. So in such case, how do we get the compensation amount over here? It's very simple. It will be a gross claim divided by GP on AATO into policy amount. This is your final claim amount. This is the amount that the businessman will receive from the insurance company on account of loss of profit policy.
No ledger accounts over here. You simply have to follow the 6 steps, remember. If you, all figures will be given to you directly or indirectly in the question. You just have to pick up those figures, write down in these steps, and you will get the final answer. Final claim amount that you will receive from the insurance company, remember. So this was regarding your loss of profit policy, second part of fire insurance claim chapter. First was loss of stock and second is loss of profit. Fire insurance claim chapter ends.
Okay. Now the next chapter that we are going to revise is single entry. What you have studied right from 11th standard is double entry system of bookkeeping, which means every transaction has two effects, one debit, one credit, in which you have learned how to maintain proper normal books of accounts, various subsidiary books, then you do the posting into the ledger and so on. So what is the single entry concept? Actually, there is no accounting system called as single entry, remember. However, small businessmen, which are basically sole proprietors and partnership firms, who are doing a small business, their sales are low, profits are less, they cannot afford the services of a full-time accountant. They do not maintain proper books of accounts, remember. They don't follow the double entry system of bookkeeping. What they maintain is a normal diary, you can say. It's like a rough book, in which they will be recording the major transactions that they undertake during the year. What was my total purchases, what was my sales and so on, credit pe becha, cash pe becha. Certain transactions they will be recording it in the books. They will not be maintaining proper books of accounts. No double entry system of bookkeeping is followed. But at the end of the year, they would also like to know, have we made some profit or have we incurred any loss? This is where this chapter comes into existence. In this chapter, we try and find out what is the profit or loss made by a small-time businessman. Sole proprietor, partnership, firms, remember. In this chapter, there are two methods of calculating the profits. One is called as statement of affairs method and second is called as conversion method. Statement of affairs method and second is known as conversion method. In both the cases, what we are trying to find out is the profit earned by the businessman, but two different concepts. First, let's take statement of affairs method. Statement of affairs method. In this, what we are trying to find out is what is the profit or loss that he made during the year. The businessman doesn't want proper final accounts. He is not asking you to prepare a normal trading P&L and a balance sheet. No. He doesn't want to know the details of all his incomes and expenses. What was the salaries that I paid? What was the electricity that I paid? What are the telephone charges that I paid? He doesn't want that individual figures, remember. What he wants is basically throughout the year, have I made profit or loss and of how much, remember. That's all that he wants to know. Individual bifurcation of incomes and expenses are not required. So how do we find out? It's a shortcut method, you can say, where you are not preparing normal, proper, final accounts. So how will you find out his profit for the year under this statement of affairs method? What you will do is, you will be preparing his balance sheet. But balance sheet will be prepared for 2 periods. Opening balance sheet, closing balance sheet, opening balance sheet, closing balance sheet. These are your liabilities and these are your assets.
you have to prepare the opening and closing balance sheet of that particular person with whatever information is available from him. For simple example, does he have any premises? If that businessman is having some premises from where he is carrying out his business activities, and if he has purchased it, it is owned by him, then he can easily tell you what is the value of that particular premises, because he will be having a document, सेल अग्रीमेंट, सेल डीड, जिसमें वैल्यू लिखा होता है और कब परचेज किया था वो लिखा होता है. Premises is a depreciable asset. So once you know when it was purchased, for how much it was purchased, your job is to find out its WDV based on the rate of depreciation. So find out at the beginning of the year what was the value of premises, at the end of the year what is the value of premises. Ask him, did you purchase any new premises during the year? Have you sold any old premises during the year? If yes, adjustments have to be done. Similarly, other assets, machinery हो सकता है, furniture हो सकता है, motor car हो सकता है. So just find out what are the values of these assets at the beginning and at the end of the year. Businessman will give you the information, and remember it has to be a written down value after charging depreciation. Ask the businessman, do you have any investments? Do you have any investments? For example, have you made any investments in fixed deposit, shares, debentures, bonds? He will tell you, yes, I have some fixed deposit. Yes, I have some investments in shares and so on. That value has to be recorded over here. But when you record investments, remember it has to be recorded at cost price. कितने में खरीदा था? That value has to appear over here. So investments will be appearing at cost price. This will be appearing at WDV, remember. Find out what are the other assets that you can have. Stock. What was the stock at the beginning of the year? What is the stock at the end of the year? Now remember, he is not maintaining any books of accounts. Stores ledger नहीं है, stock register नहीं है, but he is doing a business. उसको पता होता है on an average what is the value of stock that is there in the premises. It will not be an exact figure. If you actually do physical stock counting, वो आंसर और ये आंसर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं होगा. So he will tell you on an average how much stock he is maintaining. So what was the stock at the beginning of the year and at the end of the year. Again, this stock has to be valued at cost or market price, whichever is lower. Remember, selling price पे नहीं, cost price or market value, whichever is lower. Ask him, do you sell goods on credit? और अगर आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हो तो आप उस कस्टमर का नाम कहीं पे लिख के रखते होंगे, कितने वैल्यू का गुड्स बेचा वो आपने लिख के रखा होगा, विच मीन्स आपके पास डेटर्स का डिटेल्स होंगे. कॉस्ट से कस्टमर को गुड्स बेचा, कितना पैसा उससे लेना बाकी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर एज वेल एज एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड डेटर्स फिगर्स विल बी गिवन टू यू. आस्क हिम, डू यू हैव अ बैंक अकाउंट? और अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक बैलेंस मिलेगा आपको, एंड इट्स वेरी इजी. बैंक स्टेटमेंट देख लोगे तो आपको बैंक बैलेंस उसका मिल जाएगा ना. फाइंड आउट व्हाट इज दिस बैंक बैलेंस, रिमेंबर. एंड फाइनली cash balance. Cash balance will be on the basis of figures that he gives you, and he tells you on an average मेरे cash होता है around 500 to 1000 rupees and so on. On an average, it is not the exact figure, remember. So you have recorded whatever figures were provided by that person. Now what is very important over here is when you record the bank balance, remember the bank balance logically has to be as per cash book. But is he maintaining books of accounts? The answer is no. Does he have any subsidiary books? The answer is no. But they will be giving you the bank balance as per the passbook, as per the bank statement.
But bank statement or the balance as per passbook is the balance as it appears in the books of the bank, not in the books of the businessman. You have studied a chapter called as bank reconciliation statement. So whenever they give you the bank balance as per passbook, don't copy the same in your balance sheet. You have to arrive at the balance as per cash book. If he had maintained cash book, उसने मेंटेन नहीं किया, बट अगर मेंटेन किया होता तो पासबुक और कैश बुक का बैलेंस नॉर्मली सेम नहीं होता ना बैंक बैलेंस. तो व्हाट यू हैव टू थिंक इज, अगर मुझे पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है एंड दे आर गिविंग मी सम रिकंसिलिएशन आइटम्स, आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी माय bank balance as per cash book, and that bank balance should appear in the balance sheet, not the balance as per passbook. Remember, asset side is almost done. Now you ask him about the various liabilities. Liabilities में क्या होता है, एक होगा लोन. Have you taken loan from anyone? बैंक से लोन लिया है, फ्रेंड से लोन लिया है, रिलेटिव से लोन लिया है बिजनेस करने के लिए. लोन कितने का लिया था? बिगिनिंग ऑफ द ईयर व्हाट वाज द लोन अमाउंट, एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज द लोन अमाउंट. दे विल गिव यू दिस फिगर. और क्या हो सकते हैं लायबिलिटीज में? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, अगेन ही विल बी हैविंग अ लिस्ट. जैसे डेटर्स का कैसे लिस्ट होगा उसके पास, वैसे क्रेडिटर्स का भी एक लिस्ट होगा, कौन से सप्लायर को कितना पैसा देना है. अकॉर्डिंगली यू राइट डाउन द फिगर. आस्क हिम, डू यू हैव एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? Salaries paid in the next month, electricity charges paid in the next month. He will be having details of the same. So find out what were the outstanding expenses at the end as well as at the beginning of the year, remember. And then what you have to do is simply close the balance sheet. Tally nahi hoga, difference आएगा opening as well as closing में. दोनों में डिफरेंस आएगा. लायबिलिटी साइड, असेट साइड विल बी मोर, लायबिलिटी साइड विल बी लेस, एंड दिस डिफरेंस इज व्हाट वी कॉल इट एज कैपिटल बैलेंस. सो व्हाट यू हैव इज दिस कैपिटल बैलेंस एट द बिगिनिंग as well as at the end of the year, remember. Let's take a hypothetical figure. Opening capital balance was 10 lakhs, closing comes to 12 lakhs. Opening capital balance is 10 lakhs, closing capital balance is 12 lakhs. Now you are supposed to find out the profit made by the businessman during the year. If you recollect while preparing normal final accounts, when you prepare a balance sheet कैसे बनाते थे आप? सबसे पहले रिकॉर्ड करते थे ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ओवर ईयर, फिर add if any capital was introduced during the year. So add capital introduced. इसमें से माइनस करते थे ड्रॉइंग्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज माइनस होगा, एंड अगर नेट प्रॉफिट किया तो हम ऐड करते थे, नेट लॉस होगा तो माइनस करते थे, एंड द बैलेंस दैट यू गेट इज योर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस इन द आउटर कॉलम. दिस इज हाउ यू नॉर्मली यूज्ड टू प्रेजेंट इट. But over here you have the opening capital, you have the closing capital balance. Opening was 10 lakhs, closing was 12 lakhs. Now you should ask the businessman, throughout the year, have you introduced any fresh capital into the business? Opening was how much? 10 lakhs. Closing is how much? 12 lakhs. Ask him, have you introduced any fresh capital during the year? बिजनेसमैन ने अगर कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया होगा तो उसको बराबर याद होगा, एंड ही विल टेल यू, yes, I have introduced 50,000, yes, I have introduced 1 lakh. He will give you some figure. Let's assume he had not introduced any amount, zero. Drawings. Ask him, have you withdrawn any money from the business for personal use throughout the year? And he will tell you, yes, I have a system of withdrawing every month 10,000 rupees on the very first day. On the first day of each month, I withdraw 10,000 rupees from the business for personal household use, remember.
per month 10,000 multiplied by 12 months. So that gives me 1.2 lakhs. Drawings हो गया ना ये 10,000 per month into 12 months. So now what is missing is your net profit. So how do we get the net profit over here? ऐसे हम calculate नहीं करते. Statement of affairs में how do we calculate the same? Calculation of net profit for the year. You always start with the closing capital balance. In this case, it was 12 lakhs. इसमें आप add करोगे drawings during the year. And how much he had withdrawn during the year? 1,20,000. हम reverse में जा रहे, तो reverse हो जाएगा साइंस. सर ऊपर तो ड्राइंग्स आपने माइनस किया, यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो. ऊपर हमने माइनस किया था ओपनिंग कैपिटल में से, यहाँ पे हम रिवर्स में जा रहे. यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, सो यू हैव टू ऐड बैक द ड्राइंग्स. माइनस ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. डू वी नो द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस? यस, 10 lakhs. And you will minus additional capital introduced. In this question, it is 0. Do the plus minus, you will get your net profit for the year. And if you check, the answer is 3,20,000 now. So how much profit the businessman has earned during the year? 3,20,000. He is just concerned with the net profit. He doesn't want you to tell him what was his salary expense for the year, what was the electricity expense for the year. Individual incomes or expenses का bifurcation उसको नहीं चाहिए. He doesn't want to know what was his total sales for the year or purchases for the year. उसको वो सब additional bifurcation नहीं चाहिए. कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उतना मुझे आप सब बता दीजिए. This is a shortcut method called as statement of affairs method, where you will prepare two balance sheets, one at the beginning of the year, one at the end of the year, and then with the help of opening and closing capital balances plus drawings and capital introduced information given in the question, you find out his net profit for the year, remember. This is one part of the chapter called as statement of affairs method. Second part of the chapter is conversion method. Second part of the chapter is conversion method. The businessman tells you मुझे सिर्फ net profit नहीं चाहिए, मुझे detailed bifurcation चाहिए. I want a detailed trading and P&L. I want a detailed balance sheet. I want a detailed financial statements, remember. So here your main solution will comprise of a normal trading and profit and loss account for the year ended 31st March something. क्वेश्चन में डेट दिया होगा, कभी दिसंबर होता है, कभी मार्च होगा, रिमेंबर. नॉर्मल ट्रेडिंग एंड पीएनएल हॉरिजॉन्टल इन नेचर, सोल प्रोप्राइटर का है, पार्टनरशिप का है, कंपनी का नहीं है, तो वर्टिकल नहीं बनाना है. नॉर्मल हॉरिजॉन्टल, द वे यू आर डूइंग इट इन 11th standard and so on 12th standard. Plus you will also prepare the balance sheet at the end of the year. Proper final accounts बनाओगे. Opening stock, purchases, sales, wages, carriage inward, manufacturing expenses, closing stock, सब कुछ proper record करोगे. Balancing figure GP, which you take it to profit and loss account. P&L में दुनिया भर के incomes record करोगे. सारे expenses आप record करोगे, whichever is given. Balancing figure net profit. That net profit you will take it to the balance sheet. बैलेंस शीट नॉर्मल बनाओगे. कैपिटल होगा आपके पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर.
to that you add net profit, drawings कुछ होगा तो minus कीजिए, capital introduced होगा तो add कीजिए, record all other assets and liabilities and your balance sheet has to tally at the end of the year. Normal final accounts banana hai, which you have been doing in 11th standard and 12th standard, remember. But to prepare this normal final accounts, you may have to prepare certain working notes. Working notes is a part and parcel of your solution. It has to be along with the main solution, not on a different supplement altogether. Working notes में क्या क्या बनाने को हो सकता है? First, you may have to prepare a opening balance sheet. Opening balance sheet will be the balance sheet at the beginning of the year, remember. कि starting of the year में क्या क्या assets थे उसके, क्या क्या liabilities थे, and accordingly the balancing figure will be his opening capital balance. Second that you will have to prepare is a debtors account. Third working that you will have to prepare is a creditors account. Fourth working that you will have to prepare is a cash or bank account. Fifth working that you may have to prepare is a bills receivable account. And sixth that you may have to prepare is a bills payable account. 6 workings maximum. But every question में 6 workings होगा, इसका rule नहीं है. In certain questions, opening balance sheet ready-made question में दिया जाता है. और अगर रेडीमेड क्वेश्चन में दिया तो आपको वो बनाने की जरूरत नहीं है, रिमेंबर. इन सर्टेन क्वेश्चन देयर विल बी नो ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल. अगर ट्रांजैक्शंस ही नहीं है तो आप वो दो अकाउंट्स भी नहीं बनाओगे ना. सो डिपेंडिंग ऑन द इंफॉर्मेशन यू विल डिसाइड हाउ मेनी वर्किंग नोट्स डू आई हैव टू प्रिपेयर, एंड यू हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज ओवर हियर of 11th standard journal entries. If you know the basic journal entries of the transactions that takes place, you can easily do this chapter, remember. Now, when you prepare the opening balance sheet, normal. Ask him what are his fixed assets at the beginning of the year. Investments कुछ है तो कितना था, स्टॉक कितना था, डेटर्स कितना था, कैश और बैंक कितना था. All these figures he will tell you at the beginning of the year. On the other side you will have his creditors. लोन लिया होगा तो वो इंफॉर्मेशन होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो वो इंफॉर्मेशन होगा. क्लोज कीजिए, टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा, एंड दैट इज हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. So opening balance sheet में balancing figure क्या होगा? Capital balance at the beginning of the year. They will be telling you what are his fixed assets, investments, stock, debtors, and so on. You just have to write it properly, and the balancing figure is this capital at the beginning of the year, remember. Second account that you have to prepare is a normal debtors account. Now, what appears in your debtors account? Let's think about the transactions that takes place with debtors. Debtors are customers to whom goods are sold on credit basis. So, but naturally at the beginning of the year, there will be some opening balance of debtors. और कहां से मिलेगा ये ओपनिंग बैलेंस? आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में से मिलेगा. आपने यहाँ पे जो डेटर्स का अमाउंट रिकॉर्ड किया था, सेम अमाउंट विल अपीयर इन माय डेटर्स अकाउंट as to balance brought down. Ask the businessman, are you selling goods on credit basis? He'll say yes. Are you maintaining a rough book or diary in which you write down किसको कितना क्रेडिट पे बेचा? He'll say yes. कौन से कस्टमर को कितने क्रेडिट का गुड्स बेचा था, कौन से डेट पे बेचा था, उसने पैसा कब दिया, सब डिटेल्स उसके पास होता है. Which means you can easily find out your credit sales now.
And what is the normal entry for credit sales? It is debtors account debit to sales account. So in my debtors account, it will appear on the debit side to sales. सेल्स का सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. विच साइड? क्रेडिट साइड. बाय सेल्स क्रेडिट, इनर कॉलम. देन आज द बिजनेसमैन, कस्टमर्स को जो गुड्स बेचा उसमें से किसी कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किया था क्या? जिसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न. बिजनेसमैन विल गिव यू द आंसर. यस, कुछ कस्टमर्स ने गुड्स रिटर्न किया था. व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न? इट इज सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. So how do I do the posting? In debtors account credit side by sales return. सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. विच साइड? क्रेडिट साइड. सेल्स में से क्या करोगे? माइनस करोगे. एवरी ट्रांजैक्शन के आपको दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड करने हैं. देन आज द बिजनेसमैन, कस्टमर ने पैसा दिया. यस, पैसा मिला. कैश में मिला, चेक में मिला, तो वो भी बाइफर्केशन वो देगा. कितने कस्टमर्स ने कैश में दिया, कौन से कस्टमर्स ने चेक से दिया. आपको पैसा मिला. व्हेन यू रिसीव मनी, कैन आई से द एंट्री फॉर द सेम इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो वेयर विल यू रिकॉर्ड इट? इन माय डेटर्स अकाउंट बाय कैश और बैंक. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट. विच साइड? ऑन द डेबिट साइड टू डेटर्स. रिमेंबर. Then ask the businessman, have you given any discount to the customers? The answer is yes. मैंने कुछ customers को discount दिया था. कितने का discount? He will tell you the amount. What is the entry for discount allowed to customers? It is discount account debit to debtors account. So in my debtors account, by discount allowed, you will get the amount. Ask the businessman, ऐसा कोई कस्टमर था जो डूब गया? बैड डेट्स. एंड टेल यू यस, एक कस्टमर था, पैसा डूब गया. कितने का गुड्स बेचा था? 5,000. कितने का बैड डेट्स हुआ? 5,000. व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री फॉर बैड डेट्स? बैड डेट्स अलाउड अकाउंट डेबिट टू, सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो इन माय डेटर्स अकाउंट इट विल बी बाय बैड डेट्स. डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड. रिमेंबर. आस्क द बिजनेसमैन, डू यू ड्रॉ बिल्स? बिल्स ड्रॉ करते हो क्या आपके कस्टमर्स पे? बिल्स रिसीवेबल. ही सेज यस, कुछ कस्टमर्स पे हम करते हैं. व्हाट इज द एंट्री फॉर बिल्स ड्रॉन? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. सो इट विल कम इन माय डेटर्स अकाउंट एज बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में टू डेटर्स करके जाएगा. एंड देन आस्क द बिजनेसमैन, व्हाट्स योर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स? कितना पैसा लेना है? टू बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन. हो गया ना? अब एवरी क्वेश्चन, एवरी डेटर्स अकाउंट शुड हैव एटलीस्ट 4 figures. And those figures which should be there is your opening balance होना चाहिए, credit sales का figure होना चाहिए, cash received का figure होना चाहिए and closing balance का figure होना चाहिए. Every debtors account में ये 4 figures होने चाहिए. सेल्स रिटर्न कंपलसरी नहीं है, डिस्काउंट अलाउड कंपलसरी नहीं है, बैड डेट्स अलाउड कंपलसरी नहीं है, बिल्स रिसीवेबल कंपलसरी नहीं है, बट ये 4 फिगर्स होने चाहिए. नॉर्मली ये 4 में से एक फिगर मिसिंग होगा. एवरी क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है. किसी में ओपनिंग बैलेंस मिसिंग होता है, तो किसी में क्लोजिंग बैलेंस मिसिंग होगा, तो किसी में कैश रिसीव्ड मिसिंग होगा, तो किसी में सेल्स का फिगर मिसिंग होगा. 4 में से एक फिगर मिसिंग होगा. आपको पता होना चाहिए कि एवरी डेटर्स अकाउंट में कम से कम ये 4 फिगर्स होने चाहिए. ओपनिंग बैलेंस, सेल्स, कैश रिसीव्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस. This is how you prepare your normal debtors account. It's a working note, remember. Next working note that you are supposed to understand is normal creditors account. जैसे डेटर्स का कॉन्सेप्ट यूज किया ना, वैसे ही क्रेडिटर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके एक अकाउंट बनाना है आपको. ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कहां से मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में.
What was the balance of creditors at the beginning of the year? So we write it as by balance brought down. Creditors have a credit balance. On the credit side as by balance brought down. Ask the businessman, credit में purchase करते हो ना, तो उसका records maintain किया. Or not is the normal entry for credit purchase of goods, it's purchases account debit to creditors account. So in my creditors account, by purchases. Purchases का second effect कहाँ जाएगा? Trading account, debit side, to purchases, underline credit inner column. Purchases में से कुछ goods return किया था, purchase return, he says yes. Entry for purchase return is creditors account debit to purchase return. So creditors account debit side to purchase return. Did you make any payment to the creditors? पैसा दिया, cash में दिया, check से दिया. And when you pay the amount to the creditors, entry is creditors account debit to cash or bank. So over here it will be to cash or bank. Second effect कहाँ जाएगा? Cash or bank account, credit side. Did you receive any discount from the creditors? पैसा दिया, किसी supplier ने आपको discount दिया? Yes, income हो गया. Entry क्या होता है for discount received? It's creditors account debit to discount received. So creditors account debit side to discount received. Discount received का second effect कहाँ जाएगा? Profit and loss account on the credit side, remember, as by discount received. Next, did you accept any bill of exchange? Any bills of exchange were accepted? Yes, it was accepted. Entry for accepting a bill of exchange will be creditors account debit to bills payable. So over here it will be to bills payable account. Second effect कहाँ जाएगा? Bills payable account में by creditors. Every transaction का basic journal entry आपको पता होना चाहिए. Now close it. It will not tally. And there will be a difference which you call it as closing balance. To balance carried down. Again remember creditors account में 4 figures होने चाहिए. Opening balance, credit purchases, cash paid and closing balance. ये 4 figures होने चाहिए and normally ये 4 में से एक figure कोई भी missing होगा. That will be your balancing figure. Not necessary that every question you will have purchase return. Every question you will have discount received or bills accepted. No. But ये 4 figures तो होना ही चाहिए every question में और normally ये 4 में से कोई भी एक figure missing होगा. That's your creditors account. Next, what you're supposed to understand is your cash or bank account. Cash or bank account. Now, cash or bank account depends whether you have to prepare one amount column or whether you have to prepare 2 amount columns. एक कॉलम बनाना है या 2 कॉलम बनाना है, ये डिपेंड करता है ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में बैलेंसेस देते वक्त कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस सेपरेटली दिया, कैश इन हैंड 5000, बैंक बैलेंस 10000, दोनों सेपरेटली अगर दिया है, then you will prepare a cash or bank account with 2 columns. One will be cash column, second will be bank column. To balance brought down. Cash 5000, bank 10,000. But कुछ questions में वो क्या करते हैं? They give you a combined figure. Cash and bank balance 12,000. No one can tell you 12,000 में से cash कितना है, bank कितना है. In that case, bifurcation is not possible. So when you prepare a cash or bank account, there will be only one amount column. To balance brought down 12,000. So if they give you the bifurcation in the opening balances, cash in hand is this much, bank balance is this much, then you will prepare cash or bank account with 2 amount columns. If they don't give you the bifurcation, in that case, you will prepare it only with 1 amount column, remember.
On the debit side, what you record is all your receipts. Receipts will be cash sales का पैसा आएगा, collection from debtors. कैश सेल्स का एंट्री क्या होता है? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. कैश और बैंक में एक इफेक्ट, तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट. विच साइड? क्रेडिट साइड. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से पैसा मिला, एंट्रीज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. वन इफेक्ट कैश और बैंक, दूसरा इफेक्ट कहां पे गया? डेटर्स अकाउंट में. एवरी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स. मिसलेनियस इनकम रिसीव्ड, income is received, entry will be cash or bank account debit to miscellaneous income. एक इफेक्ट कहां पे आएगा? कैश और बैंक डेबिट. दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड. All receipts have to be recorded. Debit side, money coming in, remember. On the credit side, आप क्या रिकॉर्ड करोगे? सारे पेमेंट्स. सैलरीज पेड, एंट्री क्या होता है? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. एक इफेक्ट कैश और बैंक. सैलरीज का सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? पीएनएल डेबिट. मशीनरी परचेज, सिंपल एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. एक इफेक्ट कहां पे रिकॉर्ड किया? कैश और बैंक. दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट, मशीनरी रिकॉर्ड होगा. ऑल पेमेंट्स, whether they are capital in nature or revenue in nature, पैसा गया ना to cash or bank, it has to appear in my cash or bank account, remember. Expenses पे किया तो दूसरा इफेक्ट आपका ट्रेडिंग पीएनएल में जाएगा. असेट के लिए अगर पेमेंट किया है तो सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा. क्रेडिटर्स को पैसा दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, तो कहां जाएगा? क्रेडिटर्स अकाउंट में जाएगा एक इफेक्ट. बिल्स पेएबल ऑनर्ड, व्हाट इज द नॉर्मल एंट्री? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. So, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बिल्स पेएबल अकाउंट में जाएगा. So prepare a normal cash or bank account, remember. You have the opening balances, you write down all your receipts, you write down all your payments, and then close, you will get by balance carried down. Cash ka closing balance, bank ka closing balance, remember. So normally cash or bank account is the normal receipts and payments account. Receipts debit side, cash coming in, payments credit side, cash going out. पैसा आया debit में record करो, payments पैसा गया credit में record करो. Close your cash or bank account. Closing balances will go to my closing balance sheet asset side, remember. So we have discussed opening balance sheet, we have discussed debtors, creditors, cash or bank account. Bills receivable and bills payable is normal account. सोचो बिल्स के अगर ट्रांजैक्शन है तो उसका इफेक्ट देना है. बिल ड्रॉन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. बिल्स ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, पैसा मिला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बी आर डिसऑनर्ड, इट विल बी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. बी आर एंडोस्ड, किसको एंडोस करोगे? क्रेडिटर्स, एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल. अगर बिल्स रिसीवेबल के ट्रांजैक्शंस दिए हैं तो नॉर्मल अकाउंट बनाने का, नॉर्मल पोस्टिंग करोगे. एवरी क्वेश्चन में बीआर और बिल्स पेबल के अकाउंट नहीं होते हैं, रिमेंबर. नाउ क्लोज इट, बैलेंस शीट मिलेगा. फिर ट्रेडिंग पीएनएल जो आपका मेन सोल्यूशन था वो आप क्लोज करते जाओगे वन बाय वन. पहले जीपी मिलेगा, टेक इट टू योर पीएनएल. पीएनएल में नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आएगा, टेक इट टू योर बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट में से ओपनिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर था, उसमें आप ऐड करोगे. ड्रॉइंग्स अगर कुछ है तो वो माइनस करोगे. क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस मिलेगा. बैलेंस शीट क्लोज कीजिए, टैली होना चाहिए. You are preparing a normal final accounts, but besides that you also have to prepare some working notes. Conversion method is a long cut method because you are presenting individual incomes and expenses. फर्स्ट मेथड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में हमने ट्रेडिंग पीएनएल नहीं बनाया था, उनको सिर्फ पूरे साल का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिया था. यहां पे हम प्रॉपर ट्रेडिंग पीएनएल बना रहे हैं. This is slightly longer solution as compared to statement of affairs, but this solution gives you a proper net profit. अब एग्जाम में क्या करना है तो क्लियरली मेंशन किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर मेथड फॉलो करना है तो.
Otherwise, they will be giving you all the transactions, all opening balances will be given, all closing balances will be given to you. Various transactions for the year will be given to you. What is your cash sales? What was your credit purchases? What was your credit sales? What is your cash purchases? Which expenses were paid? Which incomes were received? Then in that case, you always have to follow the conversion method. Normal trading P&L balance sheet, working notes बनाओगे, and then you will be getting your closing balance sheet as a tallying figure. This is regarding single entry chapter. There is no method called as single entry method. There's only double entry system of bookkeeping. Single entry basically means incomplete records. Proper books of accounts were not maintained by the businessman, and this will happen only in case of small businessmen, sole proprietors or partnership firms. It will never happen in case of companies, remember. So you have to find out the profit or loss made by the businessman during the year, either by following statement of affairs method or conversion method. Statement of affairs method if they specifically mention. Otherwise, it is always conversion method, remember. That is all about single entry chapter. Okay, the next chapter that we are going to revise is hire purchase. You have normally studied that whenever goods are purchased or sold, it's on credit basis or on cash basis. In cash transaction, what happens is amount is paid or received and immediately the product is delivered, remember. In credit purchase, what happens is the product is delivered now, but the amount will be received after a certain time period. It may be a week, it may be a month, and so on. Now, the third thing that you're going to learn today is hire purchase. In hire purchase, what happens is the total amount of the product is not paid immediately, neither the total amount will be paid at a specific period of time in future, that's after a month or so. In hire purchase, the buyer pays only a part of the amount right now on the date when he purchases the product, and the balance amount is paid in parts over a period of time. This concept is called as hire purchase over here. So in hire purchase, the total amount is not paid by the buyer immediately. Only a part of the amount is paid and the balance amount will be paid in parts over a period of time. Let's take a very simple example. The price at which the product is normally sold is called as cash price. So suppose if a person purchases to buy a particular product, he asks for the price of that particular product. The price at which the product is normally sold is called as cash price. Let's say the cash price of that particular product, and the product, let's assume, is a car. We are going to purchase a car in a car showroom. So the price of that car is 10 lakh rupees. That is what you call it as cash price over here. Buyer doesn't have full 10 lakh rupees to pay to the vendor, but he wants the car today itself. He is able to pay a part of the amount right now, and the amount that he can pay right now is what we call it as down payment. So down payment is the amount that the buyer pays to the vendor on the date when the product is purchased. Let's say the balance amount he is paying right now is 1 lakh rupees. The down payment amount that the buyer pays immediately to the vendor on the date when he is purchasing the product is 1 lakh. That's the down payment amount. What about the balance? So what the vendor tells the buyer, give me the balance 9 lakhs in 3 equal annual installments along with interest. I am giving you a credit period, so I want something extra, remember, and that extra amount charged is what we call it as interest. So the balance amount in 3
equal annual installments along with interest at the rate of 10% per annum. So the vendor tells the buyer, yes, you can take the car, you take it home, just give me 1 lakh rupees right now, and the balance 9 lakhs in 3 equal annual installments along with interest. So the buyer will not have to pay only 3 lakh rupees every year for the next 3 years. Along with that 3 lakhs, he also has to pay the interest amount, remember. Rate of interest is decided, it is 10% per annum. So how do we find out what is the installment amount that the buyer has to pay at the end of first year, at the end of second year, and at the end of third year? So here you are going to calculate your installment amount, and installment amount is always comprising of two figures, two components, that is cash price component plus interest component. It always comprises of two figures, cash price plus interest. Now at the end of first year, he will be paying 3 lakhs cash price balance amount. Remember, the balance cash price was 9 lakhs, which is to be paid in 3 equal annual installments. So every year 3 lakhs, 3 lakhs, 3 lakhs plus interest at the end of first year. Now interest rate is given 10%, but you will calculate 10% on which figure? On the balance cash price that was outstanding throughout the first year. 10 lakhs was the cash price, 1 lakh was the down payment. So what was the balance outstanding throughout the first year? 9 lakhs. You will calculate interest on that 9 lakh rupees at the rate of 10% for 1 year, which will give you 90,000. So the total installment paid at the end of first year will be 3,90,000. 390 is the installment amount which comprises of two figures. It includes your cash price plus it includes your interest also. At the end of second year, second installment has to be paid. And this installment will also include cash price of 3 lakhs plus interest. But now the interest will not be 90,000. Interest has to be calculated 10%. 10% of which figure? The balance cash price. And the balance cash price was 6 lakh rupees. So calculate 10% of 6 lakh rupees, that gives you 60,000. So the second installment is called as 3,60,000. Third installment will be paid at the end of third year. Again it will include cash price of 3 lakhs plus interest. 10%, but 10% of now only the balance 3 lakhs, which will be 30,000. So the total installment amount is 3,30,000. All these calculations are done on the very first day. Both the parties, buyer and the vendor, knows each and every figure. Both of them know what is the cash price. Both of them know what is the down payment. Both of them know what is the rate of interest, what is the cash price installment that you are supposed to pay, plus interest. So what will be the total installment at the end of first year, second year and third year is known to both the parties on the very first day when the transaction is taking place. Based on this, you are supposed to now calculate your higher purchase price. HPP's higher purchase price, it basically means what is the total amount that the buyer will pay to the vendor over a period of time. It also represents the total amount that the vendor will receive from the buyer over a period of time. And there are two ways of calculating this higher purchase price. The first way is cash price plus total interest.
The first way of calculating your hire purchase price is cash price plus total interest. Now, cash price, if you recollect in the above example, it was 10 lakhs. Find out what is the total interest that the buyer will be paying, and that you get it from the previous working. If you see in the first installment, the interest is 90, second it is 60, third it is 30. If I add up the three figures, can I say the total interest is 1,80,000? So over here my hire purchase price will be cash price 10 lakhs plus total interest 1,80,000. That gives me 11,80,000. This is one way of calculating your hire purchase price. There's another way of calculating your hire purchase price, or hire purchase price can also be calculated as down payment plus total installments. It's down payment plus total installments. If you recollect in the above example, your down payment was 1 lakh plus total installments, and that you can get it from the previous working. The first installment is of 390, second installment is of 360, third installment is of 330. Add up these three figures, 390 plus 360 plus 330. If you check the total, can I say it will be equal to 10,80,000? So over here, my hire purchase price will be down payment 1 lakh plus total installments 10,80,000. So my hire purchase price is 11,80,000. Two ways calculating. Answer remains the same. Cash price plus total interest is giving me 1180. Down payment plus total installment is also giving me 1180. You follow any technique, the answer will remain the same, remember. Now in this case, you are supposed to do the accounting in the books of two parties. In the books of the buyer and in the books of the vendor, remember. And there are two methods of doing the accounting in the books of both the parties. So now let's look at the accounting part. First, let's discuss the first method, and the first method is credit purchase or sale method. It's credit purchase or sale method. Now we are going to look at the accounting in the books of two parties, remember. One will be your HP buyer, second will be HP vendor. First transaction is for purchases, and over here the first transaction will be for sales. Now what has the buyer purchased? The buyer has purchased a car. From the buyer's point of view, car will be an asset, because he will not be purchasing cars on a regular basis, everyday basis, remember. So the buyer has purchased a car which is an asset for him. So entry over here in the books of the buyer will be asset account debit to HP vendor account. Asset account debit to HP vendor account, and this entry has to be recorded with the amount of cash price. If you recollect the example, the cash price was 10 lakh rupees, remember.
So the first entry, asset account debit to vendor account with the cash price. Think from the vendor's point of view. He has sold a car, but for the vendor, car is goods, because that's his business, to sell cars on a daily basis, remember. So in the books of the vendor, when the car is sold, it is as good as goods sold. So the entry in the books of the vendor will be HP, buyer account debit to sales account. Amount will be cash price amount, which was 10 lakhs in the example if you recollect. First entry in the books of the buyer, in the books of the vendor. Second entry on the same date, and that is for down payment. On the date the buyer purchased the car of rupees 10 lakhs, he has paid 1 lakh to the vendor. Buyer ने पैसा दिया vendor को. In the books of the buyer, the entry will be very simple. HP, vendor account debit to cash or बैंक account. वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो वेंडर को डाउन पेमेंट का पैसा मिला, अमाउंट इज रिसीव्ड. सो इन हिज बुक्स द एंट्री फॉर द सेम विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू HP, बायर अकाउंट. कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू HP, बायर अकाउंट. Third entry will be at the end of the year. Interest calculate किया हमने first year का. If you recollect the example, in the first year the interest was 90,000. Buyer के point of view से he is supposed to pay interest to the vendor. So for the buyer, interest is an expense. From the vendor's point of view, he is supposed to receive interest from the buyer. So for the vendor, interest will be an income. So the next entry in the books of the buyer and vendor is for interest. In the books of buyer, the entry will be interest account debit payable to the vendor. So to HP, vendor account. और वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट इज रिसीवेबल फ्रॉम द बायर, इनकम इज रिसीवेबल फ्रॉम द बायर. सो इन हिज बुक्स द एंट्री विल बी HP, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री इज फॉर इंस्टॉलमेंट पेड एंड रिसीव्ड. Buyer will pay the installment, vendor will receive the installment. Buyer ने installment pay किया, मतलब पैसा दिया. किसको पैसा दिया? Vendor को पैसा दिया. So in the books of buyer, entry for installment paid will be HP, vendor account debit to cash or bank account. वेंडर को इंस्टॉलमेंट मिला, पैसा मिला. किससे पैसा मिला? बायर से पैसा मिला. सो एंट्री ओवर हियर विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू HP, बायर अकाउंट. अब रिमेंबर, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कार इज एन असेट. ही हैज गॉट द डिलीवरी ऑफ द कार, पोजेशन उसके पास आ गया, and he has used the car for the whole year. So but natural कार पे कुछ wear and tear हुआ होगा, और अगर wear and tear होगा तो depreciation charge करना पड़ेगा. So the next entry in the books of the buyer will be for depreciation. Entry will be very simple. It will be depreciation account debit to asset account. But vendor depreciation charge नहीं करता है.
वेंडर ने गुड्स बेचा, गुड्स पे डेप्रीसिएशन नहीं होता है, सो इन द बुक्स ऑफ द वेंडर it will be no entry. And at the end of the year, you will be transferring interest and depreciation to profit and loss account. Buyer के लिए interest is an expense, depreciation a loss, transfer it to profit and loss account. So in the books of the buyer, entry for the same will be profit and loss account debit to interest account and to depreciation account. वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो इंटरेस्ट इज एन इनकम, ट्रांसफर इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. वेंडर के बुक्स में डिप्रीसिएशन नहीं था, रिमेंबर. सो वेरी सिंपल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, इट विल बी इंटरेस्ट account debit to profit and loss account. These entries are to be recorded in the books of both the parties in the very first year. But in the second and subsequent years, all entries repeat nahi hoga. First entry for purchases, sales and second entry of down payment will not be repeated in the second and subsequent years, remember. Second and subsequent years में सिर्फ 4 entries आएंगे in the books of the buyer. Interest, installment, depreciation, transfer to P&L. And in the books of the vendor, सिर्फ 3 entries आएंगे. Interest, installment and transfer of interest to P&L, remember. If they ask you to prepare necessary accounts, then in the books of the buyer, you have to prepare maximum 4 accounts. अगर necessary accounts बोला तो maximum 4 accounts. First account will be your asset account. Second will be HP, vendor account. Third will be interest account and fourth will be depreciation account. But if they tell you to pass or prepare accounts in the books of the vendor, तो सिर्फ 2 accounts आपको बनाने हैं. That is HP buyer account and second will be your interest account. This is the accounting in the books of the buyer and vendor as per the credit purchase or credit sales method, remember. There's one more method and that is called as interest suspense method. Interest suspense method. Again, you have to learn accounting in the books of both the parties, that is in the books of the buyer and vendor. HP buyer and you will have HP vendor. First entry is for purchases. Now on the date when the buyer is purchasing that asset, उसको पता है मेरा कैश प्राइस कितना है, उसको पता है मुझे डाउन पेमेंट कितना पे करना है, उसको पता है कि मुझे कब इंस्टॉलमेंट पे करना और कितने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट पे करना है, which means he can easily find out what is the total interest that I will pay to the vendor over the period of time. This total interest is known on the very first day and the same is to record it in the books on the very first day under this particular method. So when the buyer purchases an asset, uske books mein entry will be asset account debit. And this will be recorded with the
cash price figure. ऊपर के एग्जाम्पल में याद करोगे तो कैश प्राइस was 10 lakhs. You will also debit interest suspense account, and this has to be debited with the amount of total interest. ऊपर के एग्जाम्पल में याद करोगे तो total interest was 1,80,000. This amount is payable to the vendor. So to HP vendor account, and this has to be recorded with your higher purchase price, remember. So the first transaction for purchase is in the books of the buyer. Vendor के books में it is sales, because he has sold goods. Cars for a vendor is goods, remember. किसको बेचा? Buyer को. कितना पैसा लेना है? सिर्फ कैश प्राइस नहीं लेना है, इंटरेस्ट भी तो लेना है ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो ओवर हियर द एंट्री विल बी HP buyer account debit, but it will be debited with your higher purchase price. 2. Sales account. This will be with the cash price amount. And 2. Interest suspense account with the amount of total interest, remember. So the first entry is for purchases and sales. Second entry is for down payment, and that remains the same under both the methods. Buyer ने पैसा दिया vendor को, simple entry, vendor account debit to cash or bank. Vendor को पैसा मिला, simple entry, cash or bank account debit to buyer account. Third entry will be for interest. Slight modification in books of both the parties. In the books of the buyer, interest is an expense. So entry for the same will be interest account debit to. Remember, total interest has already been debited in the first journal entry in the name of interest suspense account. That does not include only the first year's interest. It includes the first year plus second year plus third year. That is, of all years, interest is included over there. Out of which now you are recognizing the expense of the first year only. So it will be interest account debit to interest suspense account. Whereas in the books of the vendor, for the same transaction, now the entry will be interest suspense account debit to interest account. Fourth entry is for installment. Buyer will pay installment to the vendor. So same entry, HP vendor account debit to cash or bank. Vendor receives the installment from the buyer, पैसा मिला, cash or bank account debit to HP buyer. No change, same as it is. Fifth entry is for depreciation. Again, this entry will come only in the books of the buyer. Depreciation का entry vendor के books में नहीं आएगा. Simple entry, depreciation account debit to asset account. Sixth is transfer your interest and depreciation to P&L. Transfer interest and depreciation to P&L. Again, same simple entry. In the books of buyer, entry क्या होगा? P&L account debit to interest and to depreciation. Vendor के books में क्या entry होगा? Interest account debit to P&L. So what is changing is basically in two entries. First और second method में slight change है, वो भी सिर्फ दो entries में, first entry and third entry. Interest suspense is recognized over here because it is an interest suspense method in the very first entry. Now, which method are you supposed to follow in the exam? If they specifically mention follow interest suspense method, then and only then
you're going to follow interest suspense method. If they don't specify which method you are supposed to follow, you are always supposed to follow the credit purchase or credit sales method. Interest suspense method mein if they ask you to prepare the necessary ledger accounts, then whatever accounts we have seen in the earlier method, वो सब तो आएंगे ही. एक extra account आएगा यहाँ पे, and that extra account over here will be your interest suspense account in the books of both the parties, buyer as well as vendor. दोनों के books में एक extra account आएगा, that is your interest suspense account, remember. So we have seen how to do the accounting in the books of both the parties. Now in this chapter, before you do the accounting, before you record the transactions, you need to know various figures. What is the cash price of the product? Down payment कितना है? First year का interest कितना है? First year का installment कितना है? What will be the interest of second year? Installment of second year and so on. ये सब कुछ आपको पहले से पता होना चाहिए. Only if you know these figures, you will be able to do the accounting part, that is posting into the ledger accounts. So in this chapter, सबसे पहले आपको एक working note बनाना है in which you will be showing all the figures. मेरा cash price कितना है, down payment कितना है, interest of the first year, installment of the first year and so on. And how do we prepare this working note? This is where you have to be slightly careful, remember. थोड़ा careful यहाँ पे इस बारे में रहना है. If the working goes wrong, figures in the working goes wrong, भले ही आप correct journal entry record करो, उसका posting perfect करो, but amount अगर wrong है, gone marks. So let us see examples of how do we prepare this working note, remember. First example. Let's take a case where they tell you what is the down payment. Down payment उन्होंने दिया is 10,000 rupees. They are telling you that there are 3 annual installments of rupees 11,000 each. कितने इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हो? 3 इंस्टॉलमेंट्स, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, और ईच इंस्टॉलमेंट कितने का है? 11,000 रुपए का. एंड दे टेल यू व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum. But what they have not told you is the cash price, remember. और अगर आपके पास कैश प्राइस ही नहीं है तो सबसे पहला एंट्री कैसे रिकॉर्ड करोगे इन द बुक्स ऑफ द बायर एंड वेंडर? Assuming credit purchase or sales method is to be followed, first entry in the books of the buyer is asset account debit to vendor account with the cash price figure. और वो कैश प्राइस तो आपके पास है ही नहीं, तो जब तक कैश प्राइस नहीं होगा अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं होगा. How do we find out the cash price in such cases, remember? So, working note has to be prepared now. How do I prepare this working note? Very simple, and same format will be followed in every question for the working note over here. सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं कैश प्राइस, जो आपको पता नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया गया है. इसमें से आप माइनस करोगे डाउन पेमेंट. एंड व्हाट वाज द डाउन पेमेंट अमाउंट? 10,000. दैट इज गिवन टू यू ना. कैश प्राइस में से अगर मैं डाउन पेमेंट माइनस करता हूं, can I say I'll get my balance at the beginning of first year? I'll get the balance at the beginning of the first year.
अब पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करना है? 1 साल के बाद. But installment includes interest. So first you should add interest for first year at the rate of 10%. बट ये 10% किसका कैलकुलेट करोगे आप? बैलेंस का, एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर. बट डू वी नो द बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर राइट नाउ? द आंसर इज नो. So can we calculate the interest at the rate of 10% right now? The answer is no. But it's a working note. So write down these items. Amount पता नहीं है. Balance plus interest will give you some total which we don't know and there is no name for the same. Then you minus the first installment. कब पे करोगे? At the end of first year. Do you know the installment amount? The answer is yes. 11,000 is the installment amount now. 3 annual installments. Each installment is of 11,000. माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर. फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड ईयर में इंस्टॉलमेंट पे करना एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. But before that you will be charging interest. So add interest for second year at the rate of 10%. But 10% किसका calculate करोगे? Of the balance at the beginning of the second year. Do we know the balance at the beginning of the second year right now? The answer is no. So can we calculate the interest right now? The answer is no. But there will be some figure ना. Leave it for the time being. फिर जो टोटल आएगा उसमें से आप माइनस करोगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट. Do you know the second installment amount? Yes, that is also 11,000 ना. और वो पे करने के बाद the answer is balance at the beginning of third year, जो फिलहाल आपको पता नहीं है. इसमें आप क्या ऐड करोगे? इंटरेस्ट. कौन सी ईयर का इंटरेस्ट? इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर. क्या रेट से? 10%. बट 10% किसका कैलकुलेट करोगे? बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर, which we don't know. So we can't calculate the interest right now. But मिल जाएगा आंसर. फिर एक टोटल आएगा और उसके बाद आप माइनस करोगे थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट. कितने का? 11,000. तीनों इंस्टॉलमेंट 11,000 का था. तो वो पे करने के बाद कहना है इससे मैंने सारे पैसे दे दिए. सो बैलेंस आफ्टर 3 years will be 0. So how do we go about it now? 11,000 is the last installment. और वो पे करने के बाद आपका बैलेंस 0 हो जाता है. कैश प्राइस नहीं दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया है, बट they have not given us the cash price. So how do we calculate the same? It's very simple. You calculate by going in a reverse order, remember. उल्टा जाने का. तो सबसे पहले ये वर्किंग बना लीजिए. Once the working is ready, then you go in a reverse order, remember. नीचे से ऊपर जाना है आपको. अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने 11,000 का पे किया, उसके बाद आपका बैलेंस 0 हो जाएगा ना. Which means what was the amount that you are supposed to pay over year will be 11,000. और 11,000 कैसे आएगा? बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%. Do you know the balance at the beginning of the year? No. Can you calculate interest for the third year at the rate of 10%? No. So what we do is we make a very simple assumption. Balance at the beginning of the third year is 100 rupees.
तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा 10%, 10% ऑफ 100 and that will give you 10. So this is 110. If 110 is 11,000, 100 is how much? Simple cross multiply कीजिए. Use your calc. So it will be 100 multiplied by 11,000 divided by 110. So what you will get is your 100 ka figure, which is balance at the beginning of third year, which was 10,000. Interest 10% of the balance. 10,000 ka 10% gives me 1,000. You're going in a reverse order, remember. उल्टा जाओगे तो साइंस भी चेंज होते जाता है ना. How do I get this 10,000 balance at the beginning of the third year? It is after deducting 11,000 from the previous figure. तो प्रीवियस फिगर कितना होना चाहिए? रिवर्स में जाइए. 11 माइनस करने के बाद 10 आया, तो रिवर्स में अगर जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इंस्टेड ऑफ माइनसिंग नाउ वी विल ऐड 11,000 टू 10,000. सो ये कितना आएगा? 21 आएगा ना. 10 plus 11. How do we get this 21,000? It's balance at the beginning of second year plus interest of second year. But interest 10% किसका calculate करना है? Balance at the beginning of the second year. Do we know the balance at the beginning of the second year? No. So can we calculate the interest on that balance? No. But we are going in a reverse order na. So क्या assume करने का that the balance at the beginning of the second year was 100. The interest 10% of 100 will be how much? 10. So this is 110. If 110 is this much, 100 is how much? Again use the calc. 21,000 divided by 110%. If you check the answer, it is 19091. The answer that you get over here is 19091. Interest कितना? 10%. 10% of 19091. Can I say it will be 1909? और आप कैलसी चेक कर सकते हो. 19091 plus 1909 will give me exactly 21,000. Remember. अब 19091 आपको कैसे मिला? आफ्टर डिडक्टिंग 11,000. 11,000 माइनस करने के बाद आपको 19091 मिला. हम रिवर्स में जा रहे तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे. सो 19091 प्लस 11,000 दैट गिव्स मी हाउ मच? 30091. But how do I get 30091? It is the balance at the beginning of first year plus interest 10% on the same. But do we know the balance at the beginning of the first year? The answer is no. So again same concept. Assume कीजिए balance at the beginning of first year is 100. Interest 10% will be 10. So this total is 110. 110 is this much. 100 is how much? Simply cross multiply and 100 gives you 30091 divided by 110%. This gives you 27,355. इसका 10% इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो 2736 आएगा ना. और कैलसी पे चेक करोगे तो यू विल गेट अ टोटल ऑफ 30,091. हाउ डू यू गेट 27,335? Whatever is the cash price minus down payment gives you the balance at the beginning of the first year. This. You're going in a reverse order now. So minus will become plus. 27,355 plus 10,000. Your cash price is 37,355. Remember. 37,355. So if they give you the down payment,
the installments amount and the rate of interest, cash price नहीं दिया है. This is how you're going to find out the cash price by going in a reverse order. पहले पूरा वर्किंग लिख देने का. Whatever figures are available, आपके पास कैश प्राइस का फिगर था और आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट्स के फिगर थे. तो जो भी फिगर्स आपके पास अवेलेबल है वो आप पहले लिख दीजिए. डाउन पेमेंट मैंने लिख दिया 10,000 और 3 इंस्टॉलमेंट्स मैंने 11,000 के लिख दिए हैं. एंड देन वी गो इन अ रिवर्स ऑर्डर एंड वी गेट द कैश प्राइस एज 37,355. रिमेंबर, दिस इज वन way of calculating this interest, cash price and so on. Now once these figures are available with you, you can easily prepare the accounts. Cash price पता चल गया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पता है, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पता है, डाउन पेमेंट पता है, इंस्टॉलमेंट पता है. सिंपली डू द पोस्टिंग नाउ. अगर बायर के बुक्स में रिकॉर्ड करने को कहा जाएगा तो दे विल ऑल्सो स्पेसिफाई द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन. अकॉर्डिंगली चार्ज डेप्रीसिएशन. वेंडर के बुक्स में अगर वो अकाउंट्स बनाने कहते हैं तो वो डेप्रीसिएशन का रेट नहीं देते हैं. बिकॉज इन द बुक्स ऑफ द वेंडर यू डोंट चार्ज एनी एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन. रिमेंबर, this is one example of calculating your cash price and so on. Remember, let's take another example. Example 2. Example 2, where rate of interest will be missing. इंटरेस्ट रेट वो आपको नहीं देंगे, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वो आपको नहीं देंगे. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. कैश प्राइस इज 86,000 एंड दे टेल यू हायर परचेज प्राइस इज 1 lakh. कैश प्राइस 86, higher purchase price 1 lakh. So can you find out the total interest? Very simple. Higher purchase price minus cash price will give you the total interest. In this example, 1 lakh minus 86, 14,000 is your total interest for the period, remember. Then they'll tell you down payment is, let's say, 20,000. Down payment is given as 20,000. First installment after 1 year is, let's say, 40,000 का. Second installment और वो आप कब पे करोगे? आफ्टर 2 years. And let's say the second installment amount is given as 20,000. Third installment after 3 years. And think what will be the balance. अगर straight away दे दिया, lucky. नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? Balance at the end of third year. तो balance कितना होगा? Higher purchase price 1 lakh. इसमें से डाउन पेमेंट आपने 20 पे कर दिया वेरी फर्स्ट डे, फिर आपने 40 पे किया 1 साल के बाद, फिर आपने 20 पे किया 2 साल के बाद. तो अब 3 साल के बाद आपको बैलेंस पे करना है. कैन आई से दैट बैलेंस विल आल्सो बी 20,000. डाउन पेमेंट 20 प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 40, 60 हो गया, प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20, 80 हो गया. हायर परचेज प्राइस 1 लाख है तो थर्ड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट हैज टू बी 20,000. Total interest not given in the question, but you can easily find out now. How do I get this total interest? Higher purchase price minus cash price. Do you know the higher purchase price? Yes, it is 1 lakh. Do you know the cash price? Yes, it is 86,000. So what is my total interest? 14,000. But ये 14,000 एक साल का इंटरेस्ट नहीं है. This 14,000 सोचोगे ना तो टोटल 3 साल का इंटरेस्ट है.
इसमें फर्स्ट ईयर का भी इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट है, थर्ड ईयर का भी इंटरेस्ट है, बट नोवेयर इन द क्वेश्चन दे टोल्ड यू व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट परसेंटेज, वेदर इट इज 5%, 10% और 20%, वो नहीं दिया है आपको. So how do we find out this interest? Interest will be decided or calculated on the basis of outstanding higher purchase price. Interest कैसे calculate करोगे? It will be on the basis of outstanding higher purchase price. So how do we do the calculation? यहां पे years आएंगे. First year, second year, third year. Outstanding higher purchase price. On the very first day, जब वो प्रोडक्ट बेचा गया या खरीदा गया है, दोनों पार्टीज को पता था कि हायर परचेज प्राइस 1 लाख है. उसमें से डाउन पेमेंट कितना हो गया था? 20,000, और वो वेरी फर्स्ट डे पे डाउन पेमेंट का अमाउंट पे कर दिया होगा. तो डाउन पेमेंट पे करने के बाद व्हाट इज द बैलेंस हायर परचेज प्राइस दैट यू आर सपोज्ड टू पे? 80,000. और इसमें से 40,000 आपने कब पे किया? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. मतलब थ्रू आउट द फर्स्ट ईयर यू आर स्टिल सपोज्ड टू पे ऑन अकाउंट ऑफ हायर परचेज प्राइस 80,000. 1 lakh हायर परचेज प्राइस ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. उसमें से डाउन पेमेंट 20 आपने पे कर दिया. 80 अभी भी पे करना बाकी है. पूरा साल 80,000 आउटस्टैंडिंग था. उसमें से 40,000 आपने पे किया बट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. अब 80 में से अगर आपने 40 पे कर दिया, सो ना हाउ मच बैलेंस यू आर सपोज्ड टू स्टिल पे? 40,000. सो थ्रू आउट द सेकेंड ईयर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना होगा हायर परचेज के नाम पे? 40,000. इसमें से आप 20,000 पे करोगे. कब पे कर रहे हो? एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. तो वो पे करने के बाद यू स्टिल हैव टू पे इन द थर्ड ईयर 20,000. बट ये थर्ड ईयर में 20,000 अब कब पे करोगे? ऑन द लास्ट डे ऑफ द थर्ड ईयर. सो थ्रू आउट द थर्ड ईयर आई न्यू आई स्टिल हैड टू पे 20,000 रुपीज एज हायर परचेज प्राइस का. अब ये जो आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस है ना, इसका आप रेशियो फाइंड आउट कीजिए. 80,000 इज टू 40,000 इज टू 20,000 का अगर मैं रेशियो ढूंढता हूं तो कैन आई से इट इज इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. तीनों में से 4 जीरोस निकाल दो. 8:4:2. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, तीनों को 2 से डिवाइड कीजिए. 4:2:1. अब इस रेशियो में आप क्या करोगे? इंटरेस्ट को डिवाइड करोगे. आपका टोटल इंटरेस्ट कितना है? 14,000. हायर परचेज प्राइस 1 लाख माइनस कैश प्राइस 86,000. अब ये 14,000 को डिवाइड कीजिए इन द रेशियो ऑफ 4:2:1. कैन आई से इसका टोटल 7 आएगा ना? सो 14,000 डिवाइडेड बाय 7, 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 4. तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 8,000. सेकेंड 14,000 डिवाइड बाय 7, 2,000 multiplied by 2. So that will give me 4,000 interest of second year, and third year's interest is 2,000. So total interest 14,000. First year ka 8, second year ka 4, third year ka 2,000. This is how you distribute the total interest among all the years, remember. So इस एग्जाम्पल में क्या दिया था उन्होंने? कैश प्राइस दिया था. और क्या दिया था? हायर परचेज प्राइस दिया था. और क्या दिया था? डाउन पेमेंट दिया था. और क्या दिया था? इंस्टॉलमेंट्स के अमाउंट दिया था. क्या नहीं दिया था? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज मिसिंग. रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन. इन सच केसेस आप टोटल इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए और इस टोटल इंटरेस्ट को आप डिवाइड करोगे इन द रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस. रिमेंबर, सो वी सॉ 2 examples where
एक में कैश प्राइस नहीं दिया था, हमने फाइंड आउट किया। सेकेंड एग्जाम्पल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया था, तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज व्हाट वी सॉ इन दैट पार्ट। And once you have these figures, you can easily do the accounting part, remember. Next concept in this chapter is what we call it as repossession of goods. Repossession means the vendor takes back the product. Remember, it's a hire purchase transaction. Hire purchase transaction में the ownership of the asset passes to the buyer only when he pays the last installment. जब तक सारे इंस्टॉलमेंट्स बायर पे नहीं कर देता है, इस प्रोडक्ट का ओनर कौन गिना जाता है, वेंडर, सेलर। अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, इफ ही डिफॉल्ट्स इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट, वेंडर के पास पावर्स होता है, वो बायर के घर जाके वो प्रोडक्ट उठा के लेके आएगा, बिकॉज द ओनरशिप इज स्टिल विद द वेंडर. This concept of taking back the product which was sold by the vendor is what we call it as repossession of goods. Goods ka repossession, because for the vendor it is goods and not asset, remember. अब ये जो repossession होता है, ये दो parts में होता है. First repossession is what we call it as complete repossession. Complete repossession means what? Whatever quantity sold, total quantity is repossessed by the vendor. अगर वेंडर ने एक कार बेचा और वो एक कार वो रिपोजेस करता है, लेके आता है, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिपोजेशन. अगर वेंडर ने 5 कार्स बेचे थे, 5 का 5 वो उठा के लेके आता है, इट इज कॉल्ड एज कंप्लीट रिपोजेशन, रिमेंबर. So complete repossession में total quantity sold by the vendor is taken back. Taken back is what we call it as repossessed, remember. How do you do the accounting in the books of the buyer and vendor in case of complete repossession? HP buyer and HP vendor. पहले समझ लीजिए कि repossession will always take place only when the buyer does not pay the installment amount. अगर बायर रेगुलरली ऑन टाइम इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे करता है, अगर उसने डिफॉल्ट नहीं किया, vendor doesn't have the powers to repossess the goods. अगर बायर गलती करता है तो वेंडर रिपोजेस करता है, और गलती क्या होगा बायर का, नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट. सो सबसे पहला एंट्री इन द बुक्स ऑफ द बायर दैट यू विल हैव टू रिकॉग्नाइज इज योर नॉर्मल इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन. बायर हैज टू पे इंटरेस्ट. रिमेंबर, इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले हम इंटरेस्ट रिकॉर्ड करते हैं. फॉर द बायर इट इज एन एक्सपेंस. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू vendor account, normal. Vendor will also record the entry for interest income receivable from the buyer. Entry will be HP buyer account debit to interest account. After that, if you recollect, there is an entry for installment. Buyer installment pay करता है, vendor installment receive करता है, but in this case no installment will be paid. अगर इंस्टॉलमेंट पे किया तो रिपोजेशन का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होगा ना. सो नो एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट पेड, नो एंट्री फॉर इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड इन द बुक्स ऑफ द वेंडर. बट इंस्टॉलमेंट कब पे करना था, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर? द आंसर इज एट द एंड ऑफ द ईयर इंस्टॉलमेंट पे करना था ना. विच मीन्स बायर ने पूरे साल वो असेट यूज किया, सो ही इज entitled to claim depreciation. तो यहां पे सेकेंड एंट्री विल बी फॉर depreciation.
सिंपल एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, बट वेंडर के बुक्स में देयर विल बी नो एंट्री फॉर डेप्रीसिएशन. इंटरेस्ट का एंट्री वो रिकॉर्ड करेगा, रिसीवेबल फ्रॉम द बायर, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बट डेप्रीसिएशन का एंट्री वो रिकॉर्ड नहीं करेगा. अब क्या करेगा वेंडर, जाके प्रोडक्ट रीपोजेस करता है, उठा के लेके आया. Repossession. Think from the buyer's point of view. वेंडर आके असेट उठा के लेके गया, असेट गया, asset is going out. So in the books of the buyer you will credit asset account. कौन उठा के लेके गया, वेंडर उठा के लेके गया ना. So entry will be HP, vendor account debit to asset account. But what will be the amount of this entry? इस एंट्री का अमाउंट क्या होगा? It will be recorded with the balance in vendor account. Remember, it is a case of complete repossession. वेंडर उठा के लेके गया कार. अगर वेंडर कार उठा के लेके गया, बायर ने एक ही गाड़ी खरीदा, इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया, कार उठा के लेके गया, तो अब बायर के पास कार है क्या? एक ही गाड़ी खरीदा था. कंप्लीट रीपोजेशन. द आंसर इज नो. सो विल द बायर पे एनी अमाउंट टू द वेंडर इन फ्यूचर? द आंसर इज नो. जब वेंडर उठा के लेके जा रहा है, रीपोजेस कर रहा है, तो बायर बोलता है लेके जाएगा तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा तेरे को फ्यूचर में. वेंडर कहता है मत दे, ऐसे भी नहीं देने वाला था. So in that case, nothing is payable to the vendor in future. So whatever is the balance in vendor account has to be closed by transferring it to your asset account. अब asset है क्या आपके पास? नहीं है, वो तो repossess हो गया ना. So now close asset account, in which you will have a balance. That balance will always be a loss. और वो loss कहां पे ट्रांसफर करोगे? to your profit and loss account. अब बायर के पास असेट नहीं है, तो असेट अकाउंट कंटिन्यू करके क्या मतलब रहेगा? क्लोज कर दीजिए असेट अकाउंट. टैली नहीं होगा, उसमें डिफरेंस आएगा, बैलेंस आएगा. इट विल ऑलवेज बी अ लॉस विच विल बी ट्रांसफर्ड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. That is how you do the accounting in the books of the buyer in case of complete repossession. Now let's think in the books of the vendor. Repossession. But remember, what the vendor is repossessing is goods, not asset. So it will be repossession of goods. Vendor के लिए वो product goods है, asset नहीं है. तो एंट्री क्या आएगा फॉर repossession in the books of the vendor? It will be repossessed goods account debit to HP buyer account. Repossess goods account debit to HP buyer account. But amount क्या होगा? It will be the value decided by vendor. वेंडर जब वो प्रोडक्ट लेके आ रहा है फ्रॉम द बायर्स प्लेस, ही विल लुक एट द कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड ही एस्टिमेट्स कि अब अगर मैंने इस प्रोडक्ट को किसी और को बेचा, आई विल हैव टू सेल इट एज सेकेंड हैंड प्रोडक्ट, अ यूज्ड प्रोडक्ट, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा एस्टिमेट करता है. कौन डिसाइड करेगा ये एस्टिमेटेड वैल्यू? वेंडर डिसाइड करता है. The entries when repossess goods account debit to buyer account. Then you close HP buyer account. टैली नहीं होगा, उसमें कुछ बैलेंस होगा, और ये बैलेंस फ्यूचर में मिलने वाला है क्या फ्रॉम द बायर? द आंसर इज नो. उससे वो प्रोडक्ट उठा के लेके आए,
हाउ डू यू एक्सपेक्ट योर बायर फ्यूचर में वेंडर को पैसा देगा? नहीं देगा. So जो भी बैलेंस है यू विल ट्रांसफर इट टू profit and loss account. You'll transfer that balance to profit and loss account. So now buyer account is closed. अब जो repossessed goods उठा के लेके आया वेंडर, he will look at the condition. थोड़ा डैमेज हो गया है, तो डैमेज गुड्स को बेचना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना. इवन इफ दे आर सेकेंड हैंड गुड्स, बेचते वक्त हम बताएंगे कि ये सेकेंड हैंड गुड्स है बट डैमेज्ड है, तो डैमेज गुड्स तो कोई खरीदता नहीं है ना. तो वेंडर क्या करता है, वो रीपोजेस गुड्स पे थोड़ा खर्चा करता है, रिपेयरिंग करता है, पेंटिंग करेगा, कलरिंग करेगा. एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड सो दैट वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट लुक्स इन अ गुड कंडीशन. अच्छा दिखना चाहिए क्योंकि उसको बेचना है, तो नेचुरली उस पे कुछ एक्सपेंसेस इनकर करेगा. एंट्री विल बी एक्सपेंसेस ऑन repossessed goods. Journal entry will be repossessed goods account debit. खर्चा किया, पैसा गया, so to cash or bank account. Repossessed goods account debit to cash or bank account. And then customer मिला, बेच दो वो repossessed goods, पैसा मिलेगा. इट हैज टू बी सोल्ड एज कैश सेल्स. फिर से उसको हायर परचेस में नहीं बेचा जाता है. सो नेक्स्ट इज सेल ऑफ repossessed goods. बेचोगे तो पैसा मिलेगा ना. सिंपल एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू repossessed goods account. Cash or bank account debit to repossessed goods account. और finally close repossessed goods. Tally नहीं होगा, difference balance transfer to P&L account. So close repossessed goods account, it will never tally. You will have a balance and that balance you will transfer it to profit and loss account. This is your repossession, complete repossession. Whatever quantity sold is repossessed by the vendor. एक यूनिट बेचा, एक यूनिट रिपोजेस किया, 5 यूनिट्स बेचा, पांचों का 5 रिपोजेस किया, इसको कहा जाता है कंप्लीट रिपोजेशन. नेक्स्ट इज पार्शियल रिपोजेशन. पार्शियल रिपोजेशन में क्या होता है, टोटल क्वांटिटी सोल्ड इज नॉट रिपोजेस्ड बाय द वेंडर. जितना यूनिट्स बेचा था सारे के सारे यूनिट्स वेंडर रिपोजेस नहीं करता है. 3 गाड़ियां बेची थी, वेंडर ने एक रिपोजेस किया, 2 रिपोजेस नहीं किया. दिस विल बी नोन एज पार्शियल रिपोजेशन. 4 गाड़ियां बेची, 3 रिपोजेस किया, एक रिपोजेस नहीं किया, टोटल क्वांटिटी इज नॉट रिपोजेस्ड. इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल रिपोजेशन. How do we do the accounting in the books of the buyer and in the books of the vendor? First of all, repossession क्यों हो रहा है, क्योंकि बायर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया. बट इंस्टॉलमेंट पे करने के पहले आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना पड़ता है ना. एक्सपेंस फॉर द ईयर फॉर बायर और वेंडर के लिए इट विल बी इनकम फॉर द ईयर, रिमेंबर. सो सबसे पहला एंट्री यहां पे क्या होगा, इंटरेस्ट. नॉर्मल बायर के बुक्स में इंटरेस्ट का एंट्री क्या होता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर. वेंडर के बुक्स में इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा, बायर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. आपने वर्किंग बनाया है, आपको ऑलरेडी पता है उस ईयर का इंटरेस्ट कितना है, सिर्फ वो अमाउंट आपको यहां पे रिकॉर्ड करना है. इंस्टॉलमेंट बायर ने पे नहीं किया, बट डिप्रिसिएशन वो चार्ज कर सकता है ना, बिकॉज रिपोजेशन होगा तो कब होगा, एंड ऑफ द ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. इंस्टॉलमेंट कब पे करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो सेकेंड एंट्री ओवर हियर विल बी फॉर depreciation.
सिंपल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। वेंडर के बुक्स में नो एंट्री। अब वेंडर क्या कर रहा है? पार्शियल रिपोजेशन, टोटल क्वांटिटी रिपोजेस नहीं है, कुछ यूनिट्स वो उठा के लेके आए। सो नेक्स्ट इज रिपोजेशन। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, असेट गया, कौन उठा के लेके गया? वेंडर उठा के लेके गया। तो बायर के बुक्स में क्या एंट्री आएगा? HP, वेंडर अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। बट इसका वैल्यू डिसाइड कौन करता है? वेंडर डिसाइड करेगा। सो ओवर हियर दिस एंट्री हैज टू बी रिकॉर्डेड विद द वैल्यू डिसाइडेड बाय वेंडर। अब वेंडर के बुक्स में भी एंट्री आएगा ना, उसके पास गुड्स आया, सो नॉर्मल एंट्री, रीपोजेस गुड्स अकाउंट डेबिट टू, किससे उठा के लेके आए? बायर, सो इट विल बी HP बायर अकाउंट। क्या अमाउंट आएगा इसका? वैल्यू डिसाइडेड बाय वेंडर, वैल्यू डिसाइडेड बाय वेंडर। अब क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ द बायर, always remember, whatever product is repossessed by the vendor, जो प्राइस पे वो repossess कर रहा है, that value will always be less than the book value, written down value in the books of the buyer. अगर हायर वैल्यू पे अगर वेंडर रीपोजेस कर रहा है तो इसमें तो बायर का प्रॉफिट है, बुक्स में कम वैल्यू है, वेंडर इज टेकिंग ओवर एट अ हायर प्राइस, अच्छा है लेके जा, ऐसा कभी नहीं होता है। फॉर द बायर देयर विल ऑलवेज बी लॉस ऑन repossession. For the buyer, it will always be loss on repossession. How do we find out this loss on repossession? WDV of asset repossessed. See in the books of the buyer, what is the WDV of the asset repossessed? इसमें से आप माइनस कीजिए अग्रीड वैल्यू ऑफ असेट रीपोजेस्ड, और ये आपको कहां से मिल जाएगा? थर्ड पॉइंट में से मिल जाएगा। क्या वैल्यू पे वेंडर ने रीपोजेस किया? अग्रीड वैल्यू विल ऑलवेज बी लेस देन द रिटन डाउन वैल्यू, सो यू विल ऑलवेज हैव लॉस ऑन रीपोजेशन, और ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Next, in the balance of books of buyer, if there is any balance in vendor account, it has to be settled. Payment कर देने का, पैसा दे दो, whatever is the balance. Partial repossession इसका मतलब है कि वेंडर को पूरा पैसा नहीं मिला, buyer is able to pay some amount of money. तो कुछ पैसा वो दे पाएगा, कुछ पैसा नहीं दे पा रहा है, जो पैसा नहीं दे पा रहा है उसके लिए पार्शियल रिपोजेशन किया, बट जो दे पा रहा है वो पैसा दे देने का ना, पे बैलेंस टू वेंडर if the repossession takes place in the last year, remember. So these are the accounting in the books of the buyer. But what about the vendor? Vendor तो repossess करके लेके आया, buyer account, so entry क्या होगा? repossess goods account debit to HP buyer account. अब buyer के account में कुछ balance होगा, balance in HP buyer will be settled.
मतलब वेंडर को पैसा मिलेगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एचपी बायर अकाउंट। पूरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट नहीं दे सकता है बायर। अगर बायर पूरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दे सकता है, देन देयर इज नो क्वेश्चन दैट द वेंडर विल रीपोसेस द गुड्स। पूरा पैसा नहीं दे पा रहा था बायर, इसीलिए वेंडर ने रीपोसेस किया, बट सारे एसेट्स रीपोसेस नहीं किए, ओनली अ फ्यू गुड्स वर रीपोसेस्ड, पार्शियल रीपोसेशन। नेक्स्ट विल बी expenses on repossessed goods. Similar to your complete repossession, entry will be repossessed goods account debit to cash or bank. Next will be sale of repossessed goods. वो repossessed goods को क्या करेंगे हम, बेच देंगे, पैसा मिलेगा, कैश सेल्स, सिंपल एंट्री लाइक द प्रीवियस केस, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू repossessed goods account. And then close repossessed goods, balance transfer to P&L. repossessed goods account क्लोज कर दीजिए, बैलेंस कुछ होगा, बैलेंस ट्रांसफर कर दीजिए P&L. प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. So in repossession, there are two possibilities, remember, complete repossession and partial repossession. अगर वो आपको अकाउंटिंग पूछते, लेजर अकाउंट्स बनाने को बोला, तो इन द बुक्स ऑफ द वेंडर, न्यू एक्स्ट्रा अकाउंट विल बी योर repossessed goods account. Remember, बायर के बुक्स में कोई नया अकाउंट नहीं बनेगा. क्रेडिट, परचेस और सेल्स मेथड, 4 अकाउंट्स थे, असेट अकाउंट, वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रीसिएशन अकाउंट सेम रहेगा. इन द बुक्स ऑफ द वेंडर एक नया अकाउंट आ जाएगा, रीपोसेस गुड्स अकाउंट, जो हम क्लोज करेंगे, डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा. This is how you do the accounting revision of hire purchase chapter. Revision ends of this chapter. Now the next chapter that we are going to revise is department accounts. A very simple chapter. In an organization, if there are various sections which sells different products, then at the end of the year, they will be preparing final accounts for the whole organization. They will be preparing one trading account, a P&L and a balance sheet. The trading account will disclose the gross profit earned by the whole organization. P&L will disclose the net profit earned by the whole organization. The balance sheet will show the assets and liabilities of the whole organization, remember. But the organization would like to know what is the profit or loss made from each section of the organization. These sections are basically called as departments. So departmental account is basically used in those organizations where there are different sections in which different types of products are sold. So they would like to know what is the profit made or loss incurred from each and every department. So when you follow departmental accounts, when you prepare a trading and P&L account, you will be preparing columnar trading and P&L account. So departmental, trading and profit and loss account. Balance sheet is not prepared separately for each department, remember. Balance sheet combined for the whole organization. But trading and P&L has to be prepared in a columnar form. So when you prepare your trading and P&L over here,
Let's assume there are only two departments. So I'm preparing only two columns, remember. This is your department A, this is B, this is A, this is B. And normal, particulars. They will be giving you the detailed information for each department pertaining to trading account. So trading account proper bifurcation will be given. What is the opening stock of each department will be given to you. Purchases less returns of each department will be given. Sales will be given of each department. Wages will be given of each department. Carriage inward. If they give you the bifurcation, well and good. If they give you the division, it's good. But if they don't give you the division and they give you the total of carriage inward comes in my trading account. But I have two columns, A column and B column, A department, B department. If they give us the total carriage inward, it has to be divided in your purchases ratio, remember. Purchases bifurcation is there, na? Divide that total carriage inward in your purchases ratio. On the other side, what you will have is your closing stock. So what you will come to know is your GP of each department. Balancing. Now this GP will record it in your P&L account credit side now by gross profit brought down. On the debit side, you're going to record the various expenses. Now, if they give you the bifurcation of the expenses of P&L, for example, salaries of A is how much, salary of department B is how much. If they give you this bifurcation, well and good, simply copy the same. So, if P&L expenses division is already given to us, each department how much expense, no need to worry, simply copy the same. But in maximum cases, what happens is they don't give us the direct bifurcation or division of your expenses. They give us the combined figure. Salaries total will be given. A how much, B how much will not be given. Electricity total is given. For A department how much, for B department how much will not be given to you. This is where you have to use the knowledge of department account. You have to divide the expenses, which we call it as common expenses, among the various departments on a suitable basis. It has to be divided on the suitable basis. So now you have to understand how do we divide the expenses on a suitable basis. Division of expenses. Few examples. Salaries. If they give you the combined salary, it will go in the ratio of number of employees. How many employees are working in department A? How many employees are working in department B? Based on that, you divide the expenses of salaries between the two departments. Electricity. How will you divide electricity? On the basis of number of light points, we call it as. Rent. Rent will be divided among the various departments on the basis of area occupied. Each department occupied how much area, on the basis of that rent will be divided. Then you have your sales related expenses, which includes your discount allowed, it includes your bad debts, it includes your carriage outwards, it includes your sales commission to salesmen, it includes your various advertising expenses and so on. All of them will be divided in your sales ratio. You already have the bifurcation.
Department A, what was the sales? B was what was the sales? In that ratio, you have to divide all your sales related expenses. Depreciation. Depreciation, you will divide it in the ratio of value of asset. They'll specify what was the value of assets in Department A, what was the value of assets in Department B. In that ratio, depreciation expense has to be divided, remember. So for major expense, they will be giving you some basis of allocation. It has to be divided among the various departments in which ratio. That information will be given to you. Make use of that information, divide the expenses among the various departments. However, there may be certain expenses which cannot be divided between the two departments on a suitable basis. Expenses not to be apportioned. Certain expenses which you cannot apportion, which you cannot divide it among the various departments. A few examples of the same. Suppose if they give you MD's remuneration. Suppose if they give you director's fees. Suppose if they give you general expenses. Now these expenses cannot be divided among the various departments on a suitable basis. In such cases, these expenses which cannot be divided will be recorded in your general profit and loss account. You will prepare a separate account called as general profit and loss account, and in that account all these expenses will be recorded which cannot be divided among the various departments on a suitable basis, remember. So very simple initial part. Trading items bifurcation will be given. P&L, certain items bifurcation may be given. Those expenses for which the bifurcation is not given, you have to make use of a suitable basis, remember. And there will be certain expenses which cannot be divided among the various departments on a suitable basis. Then those expenses will have to be recorded in your general profit and loss account, remember. When you prepare a general P&L, it will have only one amount column on both the sides, remember. Balance sheet you are not supposed to prepare. Your solution will comprise of only trading, P&L in columnar form. Number of columns will depend on the number of departments, and a general P&L which will have only one amount column. It's for the whole organization. That's the initial part. The second part of this chapter is basically transfer of goods from one department to another. If one department transfers the goods to another department, how do you do the accounting for the same? Now this transfer of goods may be at cost price, or it will be at selling price. Transfer of goods may be at cost price or at selling price. Whatever may be the case, the entry for transfer of goods is very simple, remember. The journal entry for transfer of goods will be transferee department account debit. Transferee department is the department which is receiving the goods to transferor department account. Transferor department is the department which gives the goods, remember.
So entry is very simple, irrespective whether it is at cost price or at selling price, remember. Transferee department account debit to transferor department. Now let's take an example for both of them one by one. Suppose the goods are transferred at cost price first. Goods are transferred at cost price first. So first of all, you will be having a normal trading account. In this case, you are not supposed to think about the P&L account, remember. Just concentrate on your trading account over here. A, B, let's take some hypothetical figures. Opening stock. It will be given to you. Let's say this opening stock was 2 lakhs, this was 5 lakhs. Purchases, bifurcation will be given to you. Let's say this was 25 lakhs and this is 45 lakhs. Then wages will be given to you. Let's say this was 10 lakhs, this is 15 lakhs. On the other side, sales will be given to you. Sales was, let's say, over here 60 lakhs and here it was, let's say, 90 lakhs. And they give you one extra information. Department A transferred goods costing 1 lakh to Department B. A has transferred goods costing 1 lakh to Department B. So the goods are transferred at cost price. At whatever price A had purchased the goods, at the same price A transferred the goods to B department, remember. So how do we do the accounting over here? If you look at the top, the journal entry is transferee department account debit to transferor department. Transferee means the department which is receiving the goods. In this case, it is Department B. To transferor means the department which is giving the goods. In this case, it is Department A, remember. So can I say my journal entry will be Department B account debit to Department A account, remember. So in my trading account on the debit side, I will have to transfer. Column of B, 1 lakh. And on the credit side, I will have by transfer. Column of A, 1 lakh. Then you will be having something called as over here, closing stock. Let's say the closing stock over here was 3 lakhs and this is 7 lakhs. If they give you the transfer of goods at cost price, simply transfer the goods, pass the entry transferee account debit to transferor account and then forget it. No further adjustments are required, remember. If you close this account, balancing figure will be your gross profit, remember, over here. This will be your GP. And how will you get the GP rate, percentage? Very simple. Gross profit divided by sales will give you the GP margin, remember. So if the goods are transferred at cost price, just check out which department transferred the goods to which department. Find out who is the receiving department. Find out which department is giving the goods. Accordingly, you just have to record it in your trading account. It will appear on both the sides, debit side and credit side in respective columns. That's the end of that particular adjustment, you can say. So cost price, very simple, remember. Problem comes if the goods are transferred at selling price. If the goods are transferred at selling price,
then there might be some issue. For example, when the goods are transferred at selling price, the department which is transferring the goods, we call it as a transferor department. That department treats the transferee department, that is the department which is receiving the goods, as one of its regular customer. कोई बाहर से गुड्स खरीदने आएगा तो उसको हम क्या प्राइस पे बेचेंगे? उसी प्राइस पे द ट्रांसफरर डिपार्टमेंट सेल्स द गुड्स टू द ट्रांसफरी डिपार्टमेंट. रिमेंबर, they treat that other department as a normal customer, which means the department transferring the goods will be earning profit not only on the goods sold to outside customers, but they will also earn profit on the goods transferred to the other department of the same organization. To the other department of the same organization. Simple example over here if we take once again. Okay, opening stock. One lakh, 2 lakhs. Purchases. Let's say purchases were 20 lakhs, 30 lakhs. Forget about wages, carriage inward. If given, fine. Otherwise, ignore. Here you will be having sales and you will be having closing stock. Let's say the closing stock over here is 2 lakhs and here it is 3 lakhs. All these figures will be given to you. Proper bifurcation in the question. What is the opening stock of each department, purchases of each department, closing stock of each department. This you do not have to do any bifurcation. It will be given to you. You simply accept these figures and write it in the solution, remember. Sales are given to you, remember. Sales are given over here as 35 lakhs. Sales are given to you as 35 lakhs. And they tell you some extra information. Here you can take the sales as 60 lakhs. These are relevant. And they give you some extra information. Department A transferred goods of selling price 3 lakhs to Department B. Department A transferred goods of selling price 3 lakhs to Department B. Journal entry will remain the same. Transferee department account debit to transferor department, B account debit to A account in simple words, remember. So over here, to transfer, column of B, 3 lakhs, by transfer, column of A, 3 lakhs. No further transactions as of now. So now if I close these accounts, it will not tally. I will get a difference and that difference you call it as gross profit now. Balancing figure, balancing figure. Let's find out the GP of A department first. If you see on the credit side, there are 3 figures. 35 plus 3 is 38 plus 2 is 40 lakhs. 40 lakhs. So what's my profit over here?
19 lakhs, balancing figure. Let us do it for department B also. 63 lakhs, 63 lakhs. Difference, if you see, it is 63 minus 35, that's only 25 lakhs. Difference is 25 lakhs over here. Now, what will be the GP rate of each department? What is the GP percentage of each department over here? And what is important is the GP rate of the department which has transferred the goods. And which department has transferred the goods over here? A department had transferred the goods to B department. So now first find out what is the GP rate of department A, remember. So how do I get my GP rate of A department? It will be calculated as gross profit upon. Normally, what is the formula for GP rate? It is gross profit divided by sales into 100. But in this question, over here, A has earned GP not by selling goods only to outsiders. A has earned a GP of 19 lakhs not only on 35 lakh rupees, remember. When A transferred the goods to B, of rupees 3 lakhs, it is at selling price. So on that 3 lakhs also department A has earned profit now. So GP rate of A will be calculated as GP upon sales plus transfer into 100. Transfer should be considered only if the goods were transferred at selling price. If the goods are transferred at cost price, no calculations of transfer in your GP rate formula. So if I replace these figures, 19 lakhs upon 35 lakhs plus 3 lakhs into 100, can I say my GP rate is 50% on sales? What is important is the GP rate of the department which is transferring the goods. B has received the goods. For B, remember, 3 lakhs is as good as cost price. So whether they purchase it from outsiders for 30 lakhs or from one of their other departments for 3 lakhs, both the figures are cost price for department B, remember. Important is the GP rate of the transferor department. So this is GP rate of A department, and A department is your transferor department. Now suppose if they tell you closing stock of department B includes goods received from department A of rupees 50,000. What was the value of goods transferred? 3 lakhs. Out of 3 lakhs, 50,000 worth of goods are still lying with department B. It is included in the stock of department B, that is in the closing stock of department B. Now, if you see the closing stock of department B, it is given as 3 lakhs. But this closing stock is made up of now 2 figures. This closing stock is now made up of 2 figures. One is from outsiders. Goods which were purchased from outsiders and they are still lying unsold with department B. And second is transfer from A, one of our own departments. Out of 3 lakhs, transfer from A is 50,000. So outsiders will be 2 lakhs 50,000. Now this is important. A had transferred the goods to B at selling price. For B, it is cost price.
But what happens is, from the organization's point of view, consolidated point of view, it is at selling price to the organization and not at cost price. And you have studied, stock always has to be shown at cost or market value, whichever is lower, remember. So 50,000 is at selling price. If you show this 50,000 in the balance sheet of the organization, then it's a wrong presentation, because you are showing 50,000 at selling price and not at cost price, remember. This is where you are supposed to calculate stock reserve. And stock reserve basically means unrealized profit. Stock reserve basically means unrealized profit. Profit is not realized. Goods were just transferred by one department to another department in selling price. But the receiving department, transferee department, has not yet sold the goods. The goods are still lying unsold with them, and therefore it is called as unrealized profit, that is stock reserve. Stock reserve is also known as unrealized profit. Now this is important. How do we calculate this unrealized profit? Students make a simple mistake. When you calculate unrealized profit over here, or we call it as stock reserve. How do we calculate the same? It is not calculated on 3 lakhs. It will not be calculated on the closing stock of Department B, which was 3 lakhs, remember. It has to be calculated only on the goods which were received from transferor department. Goods received from A at selling price. How much is it? 50,000. Selling price है ना, इसमें profit included है, but profit कौन सा department कमाता है? The one which had transferred the goods. Who had transferred the goods? A had transferred the goods to B. B had received the goods from A. तो 50,000 में किसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो लॉजिकली सोचिए. इसमें B का प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है. सेलिंग प्राइस 50,000 फ्रॉम B's पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस में अपना प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता है. दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ A. तो इसमें किसका प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा? A का प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा. तो 50,000 पे आप अप्लाई कीजिए जीपी मार्जिन ऑफ ट्रांसफरर डिपार्टमेंट. जीपी मार्जिन ऑफ transferor department. In this case, it is 50% GP of A. Amount will be how much? 25,000. This is your closing stock reserve. इसको हम क्या कहते हैं? Closing stock reserve, which is also called as unrealized profit, remember. And where will you present this closing stock reserve? It comes in my general profit and loss account. On which side it will come? It will come on the debit side as to closing stock reserve. Where will it appear? In my general P&L account, remember. It doesn't appear in my trading account. It doesn't appear in my P&L account, which is in a columnar form, remember. It has to be presented in my general P&L account. Which side? Debit side. As to closing stock reserve. Amount will be 25,000. So how do we calculate the stock reserve figure? It's very simple. Closing stock of Department B includes certain goods which were received from Department A. So who had sold the goods or transferred the goods? A.
A is transferring at selling price. So it includes profit of which department? A department. Find out the GP margin of A department. Apply that on the value of goods lying unsold with department B. Find out your stock reserve. And where do you present it? Very simple. Only in my general P&L account on the debit side. If B had transferred the goods to A, it will be included in the stock of A. Again at selling price. तो किसने ट्रांसफर किया था? बी ने ट्रांसफर किया था, मतलब उसमें किसका प्रॉफिट इंक्लूडेड है? बी का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना है तो किसका जीपी मार्जिन अप्लाई करोगे? बी डिपार्टमेंट का अप्लाई करना है, ए डिपार्टमेंट का नहीं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर। If A's closing stock includes goods received from B at selling price, it includes profit of B. Apply GP margin of B to get the stock reserve figure. If closing stock of B includes goods received from A at selling price, it includes profit of department A. So to calculate the stock reserve, you have to apply the GP margin of department A, remember. Find out the stock reserve, record the stock reserve in your general P&L, not in your individual trading or P&L account. स्टॉक के फिगर में से कुछ भी प्लस माइनस नहीं करने का, रिमेंबर, इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे क्वेश्चन में दिया है स्टॉक का वैल्यू सेम कॉपी करने का। डोंट डिडक्ट 2500 फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट बी, रिमेंबर। इट जस्ट हैज टू अपीयर इन माय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Now, can I say closing stock of current year will become opening stock of next year? So, next year का opening stock of department B will include certain goods which were received from department A at selling price, which included some unrealized profit or stock reserve. Where will you record that unrealized profit or stock reserve? In my general P&L, but on which side now? On the credit side. Opposite sides. Closing stock appears in your trading account credit side. So, stock reserve appears in my general P&L account on the debit side. If opening stock appears in my trading account debit side and if it is at selling price, if it includes unrealized profit, it will appear in my general P&L account on the credit side, remember. And opening stock reserve figures will be given to you. Because it is not necessary that current year's GP margin and last year's GP margin must be the same. So they will give you the opening stock reserve. Simply record it in your general profit and loss account on the credit side, remember. So in departmental accounts, what is important is interdepartmental transfer. Cost price, very simple. Cost price पे अगर transfer किया तो stock reserve का calculations नहीं आएगा. Stock reserve unrealized profit ka calculation will come only if the goods were transferred at selling price, invoice price, and if those goods are lying unsold, then and only then stock reserve calculation has to be done. अगर B के क्लोजिंग स्टॉक में कुछ भी गुड्स A से आया हुआ इंक्लूडेड नहीं होता, if B had sold all those goods before the year ending, सर B ने कितने में बेचा? 4 lakhs में, 5 lakhs में या 6 lakhs में? That's irrelevant. If all the goods received by Department B was sold by Department B before the year ending, which means if none of the goods are included in the closing stock, then there is no question of unrealized profit. There is no question of calculating your stock reserve, remember. So, departmental accounts, you have to be careful only in case of calculation of stock reserve. Rest expenses of P&L has to be divided among the various departments in a suitable basis. And we have seen at the top various bases of dividing your expenses of P&L, remember. And those expenses which cannot be divided among the various departments on a suitable basis. I gave you some examples: MD remuneration, directors fees, general expenses, etc. Then it will go to my general P&L. So, 3 things: a trading account, a P&L account and a balance sheet. Trading and P&L in columnar form. Number of columns will depend on the number of departments, and general P&L only with one amount column. Transfer of goods may be at cost price, at selling price. Cost price, no issue, simple transaction. Transfer, department account debit to transfer a department.
Even if the goods are lying unsold included in the closing stock of transferee department, no question of stock reserve because the goods were transferred at cost price. But if the goods are transferred at selling price and if they are lying unsold with the transferee department, stock reserve has to be calculated, and to calculate a stock reserve, you should apply the GP margin of transferor department, remember. Stock reserve will be recorded in your general profit and loss account. That's your departmental accounts revision, remember. Now the next chapter that we are going to revise is investments accounts. Investments account. Now, a person can make investments in various type of products, you can say. Certain investments will be carrying a fixed rate of return, whereas certain investments will not be carrying a fixed rate of return. In this chapter, we are going to see how do we do the accounting when a person does investments in securities which carries fixed returns and investments which does not carry fixed returns, remember. So this investment accounts over here is basically divided into two parts. Investments carrying fixed returns, and second is investments not carrying fixed returns. Now, investments which carries fixed returns means when a person is investing in such type of securities, he knows what is the rate of return that he will get and when will he receive this returns, on what date will he receive the return on these investments. Whereas investments not carrying fixed returns, the rate of return is not fixed, neither the date. He is not sure whether he will be receiving in returns or not, and if yes, what will be the rate at which returns will be received is not known. Investments carrying fixed returns, the basic examples will be your debentures and bonds. Debentures and bonds. Whereas investments not carrying fixed returns will basically include your equity shares. Now, whenever a company issues debentures, they always specify two things at the time of issue of debentures. One, what will be the rate of return per annum? And second, when are you going to receive this returns? Normally, returns on debentures are on a half yearly basis. They are received after every six months, remember. So first now we will see how do we do the accounting in case of investments made carrying fixed returns, remember. Investments carrying fixed returns. Now these investments, a simple example that we take is debentures. These debentures will be purchased from the stock market and it will be sold in the stock market. Whenever an investor purchases this debentures, he will be purchasing it from the stock market, he will be selling it in the stock market. But when he is making this investments, he knows two things. One is what is the rate of interest, and second will be the date of interest. The rate of interest remains constant.
It's not going to change irrespective whether the company earns high profits or low profits. Debenture holders will receive the same return which was promised when the debentures were issued by the company, remember. So this is not going to change over here. In such cases, how do we do the accounting? Very, very simple concept. When you prepare your investment account, it will comprise of the following columns, remember. It's an account, so it's basically divided into two categories. A debit side and a credit side. A date column, a particulars column, face value column, interest column, cost column. This is your debit side. Credit side, date columns, particular column, face value, interest, cost. This is in the books of the investor, not in the books of the company, remember. Now, as an investor, when you are purchasing these debentures from the stock market, the stock market price quoted is either X interest price, we call it as EIP, or it is cum interest price, we call it as CIP. It is cum interest price or X interest price. Now, what do you mean by X interest price? What do you mean by cum interest price? Let's take a very simple example. 12% debentures of XYZ Limited. Which company has issued debentures? XYZ Limited. 12% represents the rate of interest that will be received on the debentures every year. And the company has specified interest dates as, let's say, 31st March and 30th September of every year. After every six months, the company will be paying interest. In the exams, the interest dates are either 31st March and 30th September, one alternative, or it will be June and December. 30th June and 31st December. Any one of the two alternatives will come, remember. So, if I am purchasing debentures of this particular company from the stock market, I know two things. I will be getting 12% interest every year, and I know the dates when I will be receiving these interest from the company, remember. Now, suppose my accounting year is from 1st April 21 to 31st March 22. Accounting year is the 1st April 21 to 31st March 22, for which you are supposed to prepare this investment account, remember. Now, when I go to the stock market to purchase these debentures, let's take a case where I go to the stock market on 1st June 21 to purchase debentures. I go to the stock market on 1st June to purchase debentures, and in the stock market, the price quoted per debenture is, let's say, 98, and they sell it is X interest price. The seller is quoting me, I am the buyer, I am going to the stock market to purchase the debentures. The seller is quoting me a price of 98 X interest price. What do you mean by this?
I have to pay 98 rupees per debenture plus I also have to pay interest from the last interest date to the date of transaction. When am I purchasing these debentures? On 1st June. Think prior to 1st June, XYZ Limited had paid interest on which date? They must have paid interest on 31st March. So April, May, 2 months have passed by. So when I purchase these debentures, I have to pay 98 rupees per debenture plus I also have to pay interest to the seller for 2 months, April and May, because 98 price does not include interest, remember. So X interest price is the price which does not include interest from the last interest date to the date of transaction. So over here, I will have to pay separately, interest for April and May. Pay interest separately for April and May, remember. Let's take the second concept. On 1st July 21, I again purchased debentures. I asked the stockbroker, what is the price going on in the market? And he tells me the price is 99, but this is cum interest price. CIP stands for cum interest price. So what does this cum interest price mean? Cum interest price means this 99 rupees price includes interest from the last interest date till the date of transaction. I don't have to pay that separately over and above 99. No, 99 includes that interest. So when you say cum interest price, it includes interest from last interest date till the date of transaction. It includes interest from the last interest date till the date of transaction. In this example, it includes interest from 1st April 21 to 1st July 21. That is for a period of 3 months, April, May, June. So whenever they give you X interest price, I will have to pay 98 rupees plus interest. But cum interest price means that price includes interest. I don't have to pay anything extra over and above 99 rupees. But your job will be to divide this 99 rupees into two parts. One is cost and one is interest. Interest will be for how many months? 3 months. So balance will automatically be your cost price, remember. So two possibilities, X interest price, cum interest price. And suppose if in the question they tell you, for debentures were purchased at rupees 97 full stop. So 97 X interest है या cum interest है, ये तो specify नहीं किया हुआ है. In the absence of any information, it is always to be taken as X interest price, remember. अगर कुछ भी specify नहीं किया, X interest price. So cum interest will be considered only if it is specifically mentioned that this price is a cum interest price, remember. Brokerage. Whenever you buy or sell investments through the stock market, naturally you will be taking the services of a stock broker, remember. And stock brokers charge some commission which we call it as brokerage. Brokerage on purchases will be added to the cost, and on sales बेचोगे तब भी ब्रोकर थ्रू बेचोगे. ब्रोकर उस वक्त भी ब्रोकरेज चार्ज करता है. परचेज करोगे तब भी ब्रोकरेज पे करना है, सेल करोगे तब भी ब्रोकरेज पे करना है. दोनों टाइम ब्रोकरेज पे करना पड़ता है.
परचेज करते वक्त आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, यू एड इट टू द कॉस्ट, और सेल्स करते वक्त लेस फ्रॉम द वैल्यू। ब्रोकर से उतना कम पैसा मिलेगा, ब्रोकर क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज माइनस करेगा और बैलेंस पैसा अपने को सिर्फ मिलेगा। जबकि परचेज करते वक्त वी विल हैव टू पे हिम एक्स्ट्रा मनी, दैट्स व्हाई इट इज एडेड, और सेल करते वक्त क्या करोगे, लेस करोगे फ्रॉम द सेल्स वैल्यू, यू कैन से। ब्रोकरेज कैलकुलेट किस पे करने का, इफ दे गिव यू एज अ परसेंटेज, परसेंटेज किस पे अप्लाई करोगे, ऑन द परचेज प्राइस। तो क्वेश्चन में देखिए आपने क्या प्राइस पे खरीदा है। इफ यू हैव परचेज्ड ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, तो ब्रोकरेज विल बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्स इंटरेस्ट प्राइस। अगर आपने कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा है तो ब्रोकरेज किस पे कैलकुलेट करोगे, कम इंटरेस्ट प्राइस। कुछ ट्रांजैक्शंस एक्स इंटरेस्ट प्राइस के होंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस कम इंटरेस्ट प्राइस के होंगे। तो सी द प्राइस एट विच यू आर परचेज्ड और सोल्ड, according to that price the brokerage will be calculated, remember. Next is interest is received on the due date. This is many a time a hidden adjustment. काफी क्वेश्चंस में वो स्पेसिफाई करते ही नहीं है, इंटरेस्ट डेट, इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड नहीं देते हैं ये ट्रांजैक्शन। अपने एग्जांपल में इंटरेस्ट डेट्स क्या था, मार्च एंड सितंबर। वो अगस्त का ट्रांजैक्शन देंगे, नवंबर का ट्रांजैक्शन देंगे, बट क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेंगे ऑन 30th सितंबर इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ हिडन एडजस्टमेंट। अगर नहीं दिया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज एन इंप्लाइड इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड। यू कैन नॉट से सर नहीं दिया तो मैंने अज्यूम किया नहीं मिला, गलत होगा ये। सो व्हेनेवर दे डोंट गिव यू द स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड, दे विल बी गिविंग यू द डेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऑन दैट डेट यू हैव टू रिसीव इंटरेस्ट, यू हैव टू रिकॉर्ड द एंट्री फॉर इंटरेस्ट received, remember. So interest dates will be given, but interest received is not given. If it is not given, it is implied that it is received on the due date, remember. Next is sale of investments. Investments खरीदा है तो इन्वेस्ट बेचोगे भी. And if you sell investments but natural, you're going to make some profit or loss. Confirm. या तो profit होगा या तो loss होगा. And how do we calculate this profit or loss? Sale of investments पे you will have some profit or loss, and this is always calculated by following weighted average method, WAM. In the absence of any information, whenever you sell your investments, you're always going to calculate the profit or loss by following weighted average method, remember. However, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया फॉलो फीफो मेथड, तो आप फीफो मेथड फॉलो करोगे, अदरवाइज नॉट, रिमेंबर. सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, ऑलवेज वेटेड एवरेज मेथड हैज टू बी फॉलोड while calculating the profit or loss on sale of investments. Now, how do we get this weighted average method? Let's take a very, very simple example. Purchases. Let's say on 1st June 21, आपने purchase किया 100 debentures at a cost of 9,800. कितना डिबेंचर्स आपने खरीदा? 100. क्या कॉस्ट था आपका? 9,800. अगेन लेट्स से ऑन 1st August 21,
फिर से आपने परचेज किया 200 डिबेंचर्स, कितने में परचेज किया? 20,200। आपका कॉस्ट क्या था? 20,200। एंड देन दे टेल यू सोल्ड 150 debentures at the rate of 102 EIP। कितने डिबेंचर्स बेचे? 150 डिबेंचर्स बेचे। क्या प्राइस पे बेचा? 102x इंटरेस्ट प्राइस। नाउ द क्वेश्चन इज, ये 150 डिबेंचर्स आपने कौन से लॉट में से बेचा? ऑल 100 डिबेंचर्स बेच दिया प्लस 50 फ्रॉम 200, और सारे 150 आपने 200 में से ही बेचा, या 75 फर्स्ट वाले में से, 75 सेकेंड वाले में से? हाउ डू वी मेक इट आउट? अगर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया तो आप क्या फॉलो करोगे? वेटेड एवरेज मेथड, रिमेंबर। सो हाउ डू आई फाइंड आउट माय प्रॉफिट और लॉस इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन? My selling price will be 150 debentures multiplied by 102। कितने डिबेंचर्स बेचे? 150। क्या प्राइस से बेचा? 102। So if I multiply, do I get it as 30,300? इसमें से आप माइनस करोगे proportionate cost by following वेटेड एवरेज मेथड। इसमें से आप क्या माइनस करोगे? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट बाय फॉलोइंग वेटेड एवरेज मेथड। नंबर ऑफ डिबेंचर्स और उसका कॉस्ट। जिस दिन बेचा उस दिन आपके पास इन ऑल कितने डिबेंचर्स थे? 300 डिबेंचर्स थे। पहले 100 खरीदा, फिर 200 खरीदा, मतलब टोटल आपके पास कितने डिबेंचर्स है? 300 डिबेंचर्स है। उसका कॉस्ट क्या है? 9,800 प्लस 20,200, दोनों को ऐड कीजिए। आर यू गेटिंग इट एज 30,000 रुपीज? आपने कितने डिबेंचर्स बेचे? यू सोल्ड 150 डिबेंचर्स, तो उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कितना होगा? दिस 30,300 will not come. This will be 15,300. 150 debentures into 102. अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 300 डिबेंचर्स का 30,000 है, तो 150 डिबेंचर्स का कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कैन आई से द आंसर इज 15,000, विच मीन्स आपने प्रॉफिट कमाया। कितने का प्रॉफिट कमाया? 300 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। Weighted average method has to be followed if they don't give you any specific instructions. FIFO method कब follow करोगे? Only if they specifically tell you in the question follow FIFO method तो करने का, otherwise not, remember. Next is purchase or sale transaction on interest date. Purchase or sale transaction on interest date. अपने एग्जाम्पल में हमने इंटरेस्ट डेट्स क्या लिया था? 31st March एंड 30th September. On the interest date, if there is also a transaction of purchase or sale, then the question arises, पहले कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए? इंटरेस्ट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए या परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना चाहिए? Then the rule is, if on the interest date they give you a purchase or sale transaction also, then you should first record purchase or सेल ट्रांजैक्शन। अब पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? परचेज और सेल ट्रांजैक्शन, एंड देयर आफ्टर ऑन
रिवाइज्ड होल्डिंग। रिवाइज्ड होल्डिंग मतलब क्या? अगर आपने परचेज किया होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज हो जाएगा, रिवाइज्ड होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड। और अगर आपने सेल किया पुराने डिबेंचर्स तो आपका रिवाइज्ड होल्डिंग कम हो गया है। ऑन रिवाइज्ड होल्डिंग इंटरेस्ट will be received. Interest will be received. Next, on interest date, interest is received for full 6 months. इंटरेस्ट डेट पे आपको इंटरेस्ट पूरा 6 महीने का मिलेगा, इररिस्पेक्टिव आपने वो डिबेंचर्स कब खरीदा था। सपोज द इंटरेस्ट डेट वाज मार्च एंड सितंबर, तो इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड ऑन 30th of September. Even if you purchase the debentures on 1st September, तो लॉजिकली आपके पास तो डिबेंचर सिर्फ 1 महीने के लिए ना, दैट इज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। बट 30th सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलेगा फुल 6 मंथ्स का। कंपनी पेज इंटरेस्ट फॉर फुल 6 मंथ्स ऑन द इंटरेस्ट डेट टू द पर्सन होल्डिंग द डिबेंचर्स ऑन इंटरेस्ट डेट। कंपनी नहीं पूछती है इन्वेस्टर को आपने कब खरीदा, कितने महीने से आपके पास है, आपको सिर्फ उतने महीने का ही हम देंगे, बाकी का इंटरेस्ट हम दूसरे पुराने होल्डर को देंगे, ऐसा नहीं होता है। So interest is always received for full 6 months on the interest date, irrespective of when you purchased those debentures, remember. At year end, valuation will be done if market price is given. ईयर एंड पे आपको वैल्यूएशन करना पड़ेगा इफ दे गिव यू द मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है एट द एंड ऑफ द ईयर, नो वैल्यूएशन। बट अगर मार्केट वैल्यू दिया है तो वैल्यूएशन करना है एंड विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस, रिमेंबर. Let's take a scenario over here. Let's take a scenario over here, an example. Suppose आपका cost price at year end, your cost price is, let's say, 62,000. आपका कॉस्ट प्राइस कितना है? 62,000. एंड लेट्स से द मार्केट वैल्यू एज ऑन दैट डेट वाज 62,500. You will always value at cost or market value, whichever is lower. Value whichever is less. तो क्या वैल्यू पे करोगे? 62,000 because it's less than the market value. However, second scenario, at year end, let's say your cost price, now let's take some other figures, is 85,000, but your market value 84,000. Cost price means the price at which you had purchased it. हमने कितने में खरीदा था? 85,000. लेकिन अब उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 84. मतलब वैल्यू कम हो गया। बेचने जाओगे तो लॉस का चांसेस है ना? Whichever is less. So it will come at how much? 84,000. 85 का 84 हो गया, वैल्यू कम हो गया, वी कॉल इट एज लॉस ऑन
valuation. कितना आएगा लॉस ऑन वैल्यूएशन 1000 and where will this go to my profit and loss account? First scenario में there is no loss on valuation because your cost was less than the market price. So मतलब profit on valuation है. Are we supposed to record the same? The answer is no. Unrealized profits are never to be recorded, but unrealized losses का provision करना होता है. That's why we say whichever is less. और अगर cost market price से कम है, मतलब आपको loss नहीं हुआ है, तो उसका accounting नहीं करना है. But if the market value is less than the cost price, that means the value has reduced. Chances of losses are there. Make a provision for the same, and that loss will be transferred to my profit and loss account, remember. Accrued interest. When will you have accrued interest? Accrued interest comes into existence when year ending and interest dates do not coincide. सेम अगर नहीं है तो आपका accrued interest का क्वेश्चन आएगा. Let's take a very simple example. Interest dates are 30th June and 31st December each year. जिस कंपनी के डिबेंचर्स आपने खरीदी है वो कंपनी इंटरेस्ट कब पे कर रही है? 30th June and 31st December of each year, remember. Year ending is 31st March आपका. So you are going to prepare accounts for the year ending 31st March. But what are the interest dates? June and December. अब सोचिए लॉजिकली 31st मार्च को जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे, ईयर एंड हो रहा है, अकाउंट क्लोज करोगे, that time you will have to calculate something called as accrued interest because the interest dates and the year ending dates are not the same, remember. दोनों अलग अलग है. ईयर एंडिंग मार्च है, इंटरेस्ट डेट्स आर जून एंड दिसंबर. मतलब इंटरेस्ट 31st मार्च को नहीं मिल रहा है. तो 31st मार्च को अगर आप क्लोज कर रहे हो तो लास्ट इंटरेस्ट आपको कब मिला था? 31st दिसंबर को मिला था. Have you received interest for the month of January, February and March of the current year? The answer is no. When are you going to receive interest for the month of Jan, Feb and March? On 30th June. But 30th June falls in the next accounting year. तो करंट ईयर के 3 महीने का इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा? नेक्स्ट ईयर में मिलेगा. You can't call it as an income of next year. It has to be recognized as income of the current year on accrual basis. So here you will calculate on 31st March accrued interest. कितने मंथ्स का कैलकुलेट करोगे? 3 मंथ्स के. कौन से 3 मंथ्स? जैन, फेब एंड मार्च. Those 3 months are in the current year, but interest will be received in the next year. It can't go to the P&L of the next year. It has to go to the P&L of the current year because it is income of the current year, remember. So accrued interest will have to be calculated if the interest dates and the year ending dates are not the same, remember. This is your concept of investments in securities carrying fixed returns. Normal examples will be debentures and bonds, or you can also have government securities, जहां पे percentage pre-defined होता है, pre-specified होता है. Now, how do you look at the investments not carrying fixed returns? Investments not carrying fixed returns.
और इसमें एग्जाम्पल क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स. Equity shares are those investments which does not carry fixed return. When a company issues equity shares, they don't promise at the time of issue that every year you will be getting this much returns. तो वो हो जाता है investments not carrying fixed returns. The return on equity shares is called as dividend. इक्विटी शेयर्स पे जो रिटर्न्स मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं. एंड नो कंपनी प्रायरली अनाउंसेस द रेट ऑफ डिविडेंड कि आपको अगले साल इस पे 20% मिलेगा या हर साल आपको 30% डिविडेंड मिलेगा, ऐसा कोई कंपनी प्रॉमिस नहीं करती है. The format of preparing the account is almost the same with a slight change. If you see at the top in your investment account, the columns that you had prepared was basically date, particulars, face value, interest and cost. Equity shares में columns में slight change होगा. Instead of face value column, it is called as number of shares column, and instead of interest, it will be called as dividend column in case of equity shares. तो यहाँ पे भी number of shares आएगा, डिविडेंड आएगा. कॉस्ट रिमेन्स कॉस्ट कॉलम, वो चेंज नहीं होता है. डेट रिमेन्स डेट, पर्टिकुलर्स रिमेन्स पर्टिकुलर. सो सिर्फ चेंजेस क्या है, फिक्स्ड फेस वैल्यू के जगह पे इट विल बी नंबर ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट के जगह पे इट विल बी डिविडेंड कॉलम. रिमेंबर. नाउ इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी शेयर्स, whenever you purchase investments, equity shares from the stock market, examination point of view, there will be no concept called as ex dividend or cum dividend. डिबेंचर्स में एक्स इंटरेस्ट होता है, कम इंटरेस्ट होता है. इक्विटी शेयर्स नो एक्स डिविडेंड प्राइस और कम dividend price. So you don't have to calculate what is the dividend from the last date till the date of transaction. पता ही नहीं है कितना dividend मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं ये भी मालूम नहीं है, तो उसका अकाउंटिंग आपको करना ही नहीं है. कितना डिबेंचर शेयर्स खरीदा, जस्ट रिकॉर्ड दैट. क्या रेट पे खरीदा वो रिकॉर्ड करो. एंड इफ देयर इज एनी ब्रोकरेज, परचेसेस पे क्या करोगे, ऐड करोगे, और सेल के टाइम पे क्या करोगे, यू विल डिडक्ट, माइनस करोगे. रिमेंबर, जैसे डिबेंचर्स में था वैसे ही शेयर्स में भी होगा. रिमेंबर, बट इन केस ऑफ शेयर्स देयर आर सम एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शंस. एक होता है राइट्स इश्यू और दूसरा होता है bonus issue. In case of shares, there are two transactions. One is called as rights issue and one is called as bonus issue. Remember. First, what do you mean by rights issue? In rights issue, what happens is, the company is willing to issue equity shares to the existing shareholders but not free of cost. अगर आपको चाहिए एक्स्ट्रा शेयर्स, कंपनी इज विलिंग टू गिव यू एक्स्ट्रा शेयर्स, बट उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा. And the price that is charged by the company is normally less than the market price of the shares. स्टॉक मार्केट में अगर 100 रुपए का शेयर बिक रहा है, देन कंपनी गिव्स दिस राइट्स इश्यू लेट्स से फॉर 80 रुपीज, 85 रुपीज, 90 रुपीज, लेस देन द मार्केट प्राइस. बट शेयर होल्डर हैज टू टेक अ कॉल. कंपल्सरी नहीं है कि एवरी शेयर होल्डर को राइट शेयर्स खरीदना ही है. खरीदना नहीं खरीदना उसका डिसीजन है, कंपनी फोर्स नहीं करती है उसको. सो हाउ डज दिस गो अबाउट? रिमेंबर, let's take a very simple example.
holding, the person is holding 1000 shares. इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स है उस पर्टिकुलर कंपनी के? 1000 शेयर्स है, रिमेंबर. नाउ राइट्स इश्यू. is in the ratio of 1:2. But it is at the rate of, पैसा देना है, फ्री में नहीं मिलेगा, remember. It is at the rate of 40 rupees. उसका market price was 60 rupees per share. Market price 60 rupees, but कंपनी कितने में देना चाहती है? 40 rupees में. क्या रेशियो उन्होंने अनाउंस किया? 1:2. 1:2 का मीनिंग क्या होता है? इफ यू आर होल्डिंग 2 शेयर्स, अगर आपके पास 2 शेयर्स है, राइट्स विल बी 1 शेयर, रिमेंबर. आपके पास अगर 2 शेयर्स है, राइट्स विल बी 1 शेयर. आप एक शेयर खरीद सकते हो. ऑलरेडी इन्वेस्टर के पास कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे, तो वो कितना खरीद सकता है? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है. आंसर इज 500 शेयर्स. सो इफ द रेशियो इज 1:2, इसका मतलब है कि अगर इन्वेस्टर के पास 2 शेयर्स है, वो एक शेयर खरीद सकता है. फ्री में कंपनी नहीं दे रही है. 40 रुपया देना है, जबकि मार्केट प्राइस 60 रुपीज है. 1000 शेयर्स है उसके पास, मतलब वो कितने शेयर्स खरीद सकता है? 500 शेयर्स खरीद सकता है. Now let's take a case where he subscribes. Subscribes मतलब उसने शेयर्स खरीदा. So how much amount will he pay to the company? 500 shares into 40 rupees. 500 into 40, that gives you 20,000 na? Simple purchase of investment. Debit side, to cash or bank, number of shares column 500, cost column 20,000, date होगा वो date लिख देने का. The end. Very very simple concept. Second is does not subscribe. फॉर्म आया घर पे, लेटर आया, आप 500 शेयर्स खरीद सकते हो, बट 40 रुपीज पे करना है पर शेयर, दैट इज 20,000 रुपीज. इन्वेस्टर को लगा नहीं खरीदना है. He does not subscribe to the shares. उसने शेयर्स नहीं खरीदा, तो इसका नो एंट्री आएगा. इग्नोर दैट ट्रांजैक्शन. And the third possibility is sale of rights entitlement. Sale of rights entitlement. अब ये शेयर होल्डर कितने शेयर्स खरीद सकता है? 500, बट उसके लिए उसको 40 रुपीज कंपनी को पे करना है. He doesn't want to subscribe the shares. तो उसके पास चॉइस क्या है? Called as sale of rights entitlement. शेयर्स नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा? फॉर्म बेच देगा. वो किसी और को अथॉरिटी देगा कि आपको अगर चाहिए तो आप ये 500 शेयर्स कंपनी से खरीद सकते हो, मुझे नहीं खरीदना है. He is transferring his rights to subscribe the shares to some other person. अब सोचो वो आदमी तो कितना खुश होगा, बिकॉज उसको शेयर्स कितने में मिल रहा है? 40 रुपीज में, जबकि मार्केट प्राइसेस 60 रुपीज पर शेयर. तो वो आदमी क्या सोचेगा? मैं 40 में कंपनी से खरीदूंगा, मार्केट में 60 में बेच दूंगा, मेरे को 20 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा. बट ये जो इन्वेस्टर है ना, जब ही ट्रांसफरिंग द rights to subscribe to some other person, what he tells that other person,
मैं आपको 500 शेयर्स खरीदने दूंगा मेरे बिहाफ पे, बट मुझे एक शेयर का 5 रुपया चाहिए। पर शेयर यू गिव मी 5 रुपीज, मैं आपको 500 शेयर्स खरीदने का राइट्स दे दूंगा। अब वो आदमी अग्री करता है, तो 500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 5 रुपीज, इन्वेस्टर को कितना पैसा मिलेगा? 2500। ये इन्वेस्टर का क्या है? इनकम है, क्योंकि उसको पैसा मिला ना, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट डजंट कम इन योर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिमेंबर, 2500 रुपीज इन्वेस्टर को मिलेगा। रिमेंबर, वो खुद शेयर्स नहीं खरीद रहा है, वो शेयर्स नहीं बेच रहा है किसी और को। व्हाट इज सेलिंग इज द राइट्स टू सब्सक्राइब द शेयर्स। व्हाट इज टेलिंग द कंपनी, मुझे शेयर्स नहीं खरीदना है, मेरा एक दोस्त है, आप ये मेरे 500 शेयर्स मेरे दोस्त को दे दो। और दोस्त को क्या बोलता है? मैं फॉर्म दूंगा, 500 शेयर्स तो खरीद पाएगा कंपनी से, अगर को सिर्फ 40 रुपीज पे करना है, लेकिन मैं फॉर्म कब दूंगा? इफ यू गिव मी 2500 रुपीज तो मैं फॉर्म दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो इन्वेस्टर ने शेयर्स नहीं बेचे हैं, इन्वेस्टर हैज सोल्ड हिज राइट्स टू सब्सक्राइब द शेयर्स, हेंस इट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ राइट्स। एंटाइटलमेंट, जो भी पैसा इन्वेस्टर को मिलेगा वो उसका इनकम है, एंड वेयर विल दिस इनकम गो? टू हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिमेंबर, सो राइट्स इश्यू में 3 पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टर खुद खरीदता है तो नॉर्मल परचेस हो गया, इन्वेस्टर नहीं खरीदता है, एंड तीसरा है सेल ऑफ राइट्स, एंटाइटलमेंट। तो चौथा ऑल्टरनेटिव क्या आ सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड 3। 200 शेयर्स खुद खरीदेगा और 300 शेयर्स का किसी और को दे देगा। तू खरीद, 5 रुपीज पर शेयर, 300 शेयर्स का मेरे को 1500 रुपए दे, मैं 200 शेयर्स खरीदूंगा। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट अकाउंट में सिर्फ सब्सक्राइब किया उसका इफेक्ट आएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। अब सेल ऑफ राइट्स एंटाइटलमेंट है, पैसा मिला, इनकम, बट दैट गोज टू पीएनएल, दैट डजंट कम इन माय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। रिमेंबर, so that was relating to rights issue. Next is bonus. Very simple. Bonus is basically shares received free of cost from the company. Shares received free of cost. शेयर होल्डर को उसके लिए पैसा नहीं देना है, तो जो शेयर्स आएंगे कहां पे रिकॉर्ड करोगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। विच साइड? ऑन द डेबिट साइड, बट ओनली इन योर नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम, और कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होगा। कॉस्ट कॉलम 0, बिकॉज यू हैव नॉट पेड अ सिंगल रुपी फॉर दिस बोनस शेयर्स। रिमेंबर, बोनस भी जब अनाउंस होता है ना तो एक स्पेसिफिक रेशियो में होता है। इफ दे अनाउंस बोनस इन द रेशियो ऑफ 1:1, विच मीन्स अगर आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर फ्री में मिलेगा, 100 शेयर्स है तो 100 शेयर्स फ्री में मिलेंगे। सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स में आएगा, टू बोनस नंबर ऑफ शेयर्स कॉलम, राइट डाउन द नंबर ऑफ शेयर्स रिसीव्ड, नथिंग इन योर कॉस्ट कॉलम। रिमेंबर, सो बोनस वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशंस आपको प्रॉपरली करना है। एंड द लास्ट पार्ट इज रिलेटिंग टू डिविडेंड। very important. Dividend, very important. Let's take a case where आपका accounting year is 1st April 21, so it will end on 31st March 22. 15th April 21, purchased 1000 shares of ABC Limited. कितने में खरीदा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने शेयर्स कब खरीदे? 15 अप्रैल 21 को खरीदा। कितने शेयर्स खरीदे? 1000 शेयर्स खरीदे ऑफ ABC लिमिटेड।
Whether you purchased it for 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees, 40 rupees is totally irrelevant, remember. 15th July 21. Received dividend from ABC Limited at the rate of 30% for 2021. कौन से ईयर का डिविडेंड मिला? 2021 का. आपका अकाउंटिंग ईयर कौन से अकाउंटिंग ईयर गिना जाएगा? 21, 22. Now, on 15 July dividend मिला. Were you holding the shares on 15th of July? Yes. कितने shares थे आपके पास? 10. Dividend is always calculated as a percentage of your paid up value, not of your cost price. मार्केट प्राइस के बेसिस पे डिविडेंड नहीं पे किया जाता है. अगर 10 रुपया फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू है, फिर आपने मार्केट में से 20 में खरीदा, 50 में खरीदा, 100 में खरीदा, इररेलेवेंट है. और 20, 50, 100 पे कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है. कंपनी पेज डिविडेंड ओनली ऑन द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स, रिमेंबर. और नॉर्मली पेड अप वैल्यू होता है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू होगा 10 रुपया इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. Solution. 15th July 21. Dividend received will be 1000 shares into 10 rupees into 30%. कितना पैसा मिलेगा आपको? 3000. आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? 3000. Your bank balance will increase by 3000. Now, this dividend which you have received is called as a capital received. इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसीट. Why capital received? आपको डिविडेंड कौन से ईयर के लिए मिला? 2021. बट 2021 में आपके पास वो शेयर्स थे क्या? आपने वो शेयर्स खरीदा कब? 15th April 21. Can I say that comes in the accounting year 21-22? तो पिछले साल आपके पास शेयर्स नहीं थे, फिर भी करंट ईयर में आपको उन शेयर्स पे डिविडेंड मिला. आपको नहीं मिलना चाहिए था. लॉजिकली ये डिविडेंड किसको मिलना चाहिए था? उस शेयर होल्डर को जिसके पास ये शेयर्स 2021 में थे. बट कंपनी क्या कहती है? हम ढूंढने नहीं जाएंगे उनको. डिविडेंड डेट पे आपके पास शेयर्स है ना, आपको हम डिविडेंड देंगे. हम आपको पूछेंगे नहीं पिछले साल आपके पास शेयर्स थे या नहीं थे. रिमेंबर, डिविडेंड के डेट पे ना ये ले लो शेयर्स. But then you have to follow the accounting principles. Last year, during 2021, you were not having the shares. Still, you have received this dividend. किसी और के हक का पैसा आपको मिला. किसी और को डिविडेंड मिलना चाहिए था, वो आपको मिला. ये आपका इनकम नहीं है. This is called as a capital receipt, and therefore, well, will you record it in your investment account? Which side? On the credit side. But in which column? In your cost column, remember. कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट कॉलम. यू हैव रिसीव्ड द मनी, सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. कहां पे रिकॉर्ड करोगे? सेकेंड इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट. विच साइड? क्रेडिट साइड. डेट लिखोगे 15 जुलाई, बाय कैश और बैंक. बट ये 3000 रुपीज आप कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट कॉलम में, नॉट इन द डिविडेंड कॉलम, बिकॉज दिस इज नॉट योर रेवेन्यू डिविडेंड. ये आपका इनकम नहीं है, किसी और का इनकम आपको मिला है. लास्ट ईयर आपके पास ये शेयर्स नहीं थे, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड आपको नहीं मिलना चाहिए था, फिर भी आपको मिला, बिकॉज ऑन द डिविडेंड डेट यू आर होल्डिंग दीज शेयर्स. रिमेंबर, hence it will be recorded in your cost column. It reduces your overall cost. Average cost कम हो जाता है. This is one example of dividend. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. अकाउंटिंग ईयर सेम, 1st April 21.
31st March 22. So can I say this is 21, 22? Now, 1st April 21, holding 5,000 shares of ABC Limited, purchased on 1st July 20. 1st अप्रैल को आपके पास कितने शेयर्स है? 5,000 शेयर्स है। और ये कब खरीदे थे आपने? 1st जुलाई 20 को खरीदे थे। 1st June 21, purchased 1,000 shares of ABC Limited from stock market। 1st जून को आपने और कितने शेयर्स खरीदे? 1,000 शेयर्स खरीदे, सेम कंपनी का। लेकिन कहां से खरीदा? स्टॉक मार्केट से। यू कांट वॉक इनटू द कंपनीज ऑफिस एंड टेल देम मुझे आपके 1,000 शेयर्स दीजिए, प्लीज सेल मी 1,000 शेयर्स। कंपनी ऐसे शेयर्स नहीं बेचती है। 14th August 21, received dividend from ABC Limited for 2021 at the rate of 40%। 14th August को आपको डिविडेंड मिला पिछले साल का 2021 का। क्या रेट से मिला? 40% से मिला। आपको कौन से शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा? ओपनिंग का जो 5,000 है उस पे डिविडेंड मिलेगा, प्लस जो 1,000 शेयर्स आपने 1st जून को स्टॉक मार्केट से खरीदा है उस पे भी आपको डिविडेंड मिलेगा। आपको डिविडेंड दो शेयर्स पे मिलेंगे। 5,000 जो ओपनिंग बैलेंस था उस पे मिलेगा, प्लस 1,000 शेयर्स जो आपने 1st जून को खरीदा उस पे भी मिलेगा। बट सर 1st जून वाला शेयर्स हमने जो खरीदा वो लास्ट ईयर मेरे पास नहीं था। अग्रीड, बट कंपनी क्या कहती है? 14th अगस्त को आपके पास है ना, हम आपको डिविडेंड देंगे। कंपनी विल नॉट आस्क दैट पर्सन व्हेन डिड यू परचेज द शेयर्स, आपके पास लास्ट ईयर शेयर्स थे या नहीं थे? नहीं थे तो हम आपको डिविडेंड नहीं देंगे, थे तो हम आपको डिविडेंड देंगे। ऐसा कंपनी नहीं कहती है। कंपनी कहती है 14th अगस्त को आपके पास शेयर्स है ना, ये ले लो डिविडेंड, बात खत्म हो गई। सो नाउ दो पार्ट्स होते। सॉल्यूशन, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन, एक होगा 5,000 शेयर्स पे और एक होगा 1,000 शेयर्स। ये कब खरीदा? 1st जून 21। ये कब खरीदा था? 1st जुलाई 21 को खरीदा ना। और डिविडेंड इज रिसीव्ड फॉर विच ईयर? 2021। 1,000 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय 10 रुपीज। व्हाट इज द 10 रुपीज? इट इज योर फेस वैल्यू एज वेल एज पेड अप वैल्यू। कितना हो जाएगा वैल्यू? 10,000। इस पे कितना परसेंट अप्लाई करोगे डिविडेंड? 40%। तो डिविडेंड कितना मिला? 4,000। बट आपके पास पिछले साल ये शेयर्स थे, 2021 में नहीं था, तो आपको ये डिविडेंड मिलना चाहिए था क्या? नहीं, फिर भी आपको मिला ना। दिस इज योर कैपिटल रिसीप्ट, रिमेंबर। और ये कहां पे रिकॉर्ड करोगे? इन योर कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड। कहां रिकॉर्ड करोगे? कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, बिकॉज ये कैपिटल रिसीप्ट है। आपको नहीं मिलना चाहिए था बिकॉज पिछले साल आपके पास ये शेयर्स ही नहीं था, फिर भी आपको मिला। दैट मीन्स किसी और का पैसा आपको मिला। दैट्स नॉट योर इनकम, रेगुलर रेवेन्यू इनकम नहीं है। इट्स अ कैपिटल रिसीट, रिकॉर्डेड इन द कॉस्ट कॉलम। योर एवरेज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स गोज डाउन।
नाउ लेट्स कम टू दैट फर्स्ट कैटेगरी, 5,000 शेयर्स, इसका एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, 50,000 हो गया, कितना परसेंट, 40%, कितना डिविडेंड मिलेगा, 20,000, कौन सी ईयर का, 2021, दैट इज फॉर 1st April 20 to 31st March 21 का मिला ना। आपने खरीदा कब ये 5,000 शेयर्स, 1st July 20 को, और लास्ट ईयर स्टार्ट कब होता है, 1st April 20 को। तो पिछले साल अप्रैल में आपके पास ये शेयर्स थे, नहीं थे। मई में आपके पास ये शेयर्स थे, नहीं थे। जून में आपके पास ये शेयर्स थे, नहीं थे। जुलाई में आपके पास शेयर्स थे, यस। जुलाई से मार्च, इट्स अ पीरियड ऑफ 9 मंथ्स, आपके पास शेयर्स थे, यस। मतलब पिछले साल के 12 महीने में से फर्स्ट 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून, आपके पास शेयर्स नहीं थे। जुलाई से मार्च 9 मंथ्स आपके पास शेयर्स थे, तो आपको लॉजिकली डिविडेंड मिलना चाहिए था सिर्फ 9 मंथ्स का, लेकिन कंपनी आपको पूरा 12 महीने का डिविडेंड देगी ना। पिछले साल का अप्रैल में जून का भी डिविडेंड आपको दिया गया, जबकि लॉजिकली आपको नहीं मिलना चाहिए था। तो इस डिविडेंड को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, 3 मंथ्स एंड 9 मंथ्स। 3 मंथ्स कौन सा होगा, अप्रैल मई जून। 9 मंथ्स कौन से होंगे, जुलाई टू मार्च। तो इसको सिंपली डिवाइड कर दो। Can I say the figures will be 5,000 and 15,000? 20,000 is for the full year, 12 months. So 3 months का proportionate कितना होगा, 5,000. 9 months का कितना होगा, 15,000. This is capital in nature. किसी और के हक का पैसा आपको मिला. Whereas this 15,000 will be treated as revenue in nature. कैपिटल कहां जाएगा, कॉस्ट कॉलम। रेवेन्यू कहां जाएगा, डिविडेंड कॉलम। आपके पास जुलाई से मार्च 9 मंथ्स के लिए शेयर्स था, तो आपको सिर्फ 9 मंथ्स का डिविडेंड मिलना चाहिए। आप मालिक थे उस वक्त, वो आपका हक का पैसा, दैट इज रेवेन्यू इनकम, डिविडेंड कॉलम में रिकॉर्ड होगा। और जो पीरियड में आपके पास शेयर्स नहीं था, उसका जो डिविडेंड मिला वो आपके कॉस्ट कॉलम में जाएगा। ये दोनों रिकॉर्ड होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। बाय कैश और बैंक, कॉस्ट कॉलम में आएगा 5,000, डिविडेंड कॉलम में आएगा 15,000 रुपीज, रिमेंबर। सो डिविडेंड इज समथिंग वेयर यू हैव टू बी केयरफुल। पिछले साल का डिविडेंड आपको करंट ईयर में मिलेगा, तो आपको सोचना है कि आपके लिए कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीट है। अगर पिछले साल आपके पास वो शेयर्स नहीं थे, फिर भी आपको डिविडेंड मिला करंट ईयर में, तो ये आपका कैपिटल रिसीट है, इट गोज इन माय कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड। और अगर पिछले साल आपके पास वो शेयर्स थे, तो आपको मिलना चाहिए, मिला, रेवेन्यू इनकम, डिविडेंड कॉलम, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट साइड, रिमेंबर। Again at the end of the year to the valuation, जैसे डिबेंचर्स में कॉस्ट और मार्केट वैल्यू whichever is less। अगर आपने शेयर्स बेचा तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। अगेन वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे, जैसे हमने फॉलो किया था इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, रिमेंबर। बट देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ अक्रूड डिविडेंड, जैसे डिबेंचर्स में अक्रूड इंटरेस्ट था, यहां पे अक्रूड डिविडेंड नहीं हो सकता है, बिकॉज द रेट इज नॉट फिक्स्ड। 31 मार्च को आपको पता नहीं है कि अगले साल डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रेट से मिलेगा, तो अक्रूड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। सो दिस इज रिलेटिंग टू योर इन्वेस्टमेंट चैप्टर। रिविजन एंड्स ओवर हियर।
Now the next chapter that we are going to revise is redemption of debentures. Next chapter that we are going to revise is redemption of debentures. Now, all of you know debentures are a long-term borrowings. They are borrowed funds, loan taken from the general public, you can say. Redemption means repayment back of the debenture money which was received from the general public. Now, every company which issues debentures have to compulsorily redeem them within a maximum period of 10 years, remember. 10 साल में पैसा return कर दो. Whenever a company issues any debentures, they always specify two things. One is rate of interest. Issue of debentures के वक्त पे one thing that they specify is rate of interest, and second is date of interest. And it is also specified that it will be redeemed within a maximum period of 10 years. उसके पहले भी कंपनी रिडीम कर सकती है, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 8 साल के बाद, but maximum 10 years. Redemption कैसे होगा? They'll simply give a notice to the debenture holders. वक्त कंप्लीट हो गया, debentures redeem करने का वक्त आ गया, give back your debentures, take back the money. Debentures will be redeemed either at par or at premium, never at a discount, remember. Redemption will be at par or at premium, but never at a discount. At the same time, these debentures will be listed on the stock market. And that is because अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं किया तो डिबेंचर होल्डर्स फंस जाते हैं, उनको पैसा वापस नहीं मिलता है टिल द रिडेम्पशन टाइम. And if any debenture holder needs money before that redemption date, he will not be able to get it now. So debentures are always listed on the stock market. Trading होता है, बहुत कम ट्रेडिंग होता है, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं होता है, remember. Now what happens over here? Company has an option of purchasing its own debentures from the open market with the intention of immediate cancellation. Let's take a very simple example. Balance sheet of a company. For example purpose, I'm doing it horizontal. Let's say यहाँ पे 12% debentures है, and let's say the value was 10 CR. कितने का debentures issue किया? 10 करोड़ का. What is the rate of interest that is carrying? 12%, remember. On the other end, they have bank balance. कितना है? 15 करोड़ का bank balance है. And remember, this bank balance will be lying in a current account which doesn't give any returns over here. So what happens is, the chartered of the company tells the board of directors, इसमें से अपने पास excess amount है around 3 CR and the balance 12 CR will be required for working capital requirements. वर्किंग कैपिटल के 12 करोड़ चाहिए, एक्स्ट्रा अपने पास 3 करोड़ है विच विल नॉट रिक्वायर, करंट अकाउंट में पड़ा, इट इज नॉट गिविंग एन इज रिटर्न. सो व्हाट डू वी डू विद दिस 3 CR? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं? काम कीजिए, बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रख दीजिए. कितना रिटर्न्स मिलेगा? 6% पर एनम. बट यू आर अ चार्टर्ड, सो व्हाट यू टेल द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? एक काम करते हैं, अपने डिबेंचर्स जो हमने इश्यू किया है, इट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक मार्केट. क्या करते हैं? स्टॉक मार्केट में जाके अपने डिबेंचर्स खरीदते हैं विद द इंटेंशन ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन. सो इट इज कॉल्ड एज
Purchase of own debentures for immediate cancellation. So you purchased it from the stock market. अब stock market में let's say the price was, stock market price is let's say 98 rupees per debenture. 98 रुपीस का मार्केट प्राइस है, तो आप क्या करोगे, आप डिबेंचर्स खरीद लोगे. इफ आई गो बाय दिस फिगर्स, 10 crores डिबेंचर्स वैल्यू है. एक डिबेंचर कितने का होता है, 100 रुपए का होता है. मतलब कितने डिबेंचर्स कंपनी ने इश्यू किए थे, 10 लाख डिबेंचर्स इश्यू किए होंगे ना. सो नाउ स्टॉक मार्केट इज 98, सो यू परचेज 3 लाख डिबेंचर्स. आपने मार्केट से कितना डिबेंचर्स खरीदा, 3 लाख डिबेंचर्स खरीद दिया फॉर इमीडिएट कैंसलेशन. अब सोचिए यहां पे आपने टोटल कितना पैसा दिया होगा while purchasing 3 lakhs debentures. You must have paid 2 crores 94 lakhs. Remember, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 crores 94 lakhs. जबकि फेस वैल्यू ऑफ 3 लाख डिबेंचर्स विल बी 3 crores ना. 3 करोड़ का फेस वैल्यू आपने 2 crores 94 lakhs में खरीद लिया, विच मींस आपने कम पैसा दिया. देयर इज अ प्रॉफिट टू द कंपनी एंड दिस प्रॉफिट विल बी ऑफ 6 lakhs. रिमेंबर, this profit is called as a capital profit. And where will this capital profit go? It will go to my capital reserve account. Remember, this is called as purchase of own debentures for immediate cancellation. स्टॉक मार्केट से खरीदा विद द इंटेंशन ऑफ इमीडिएट कैंसिलेशन, 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, दैट गोज टू माय कैपिटल रिजर्व अकाउंट. थिंक फ्यूचर में दिस विल बिकम ओनली 7 CR. आपने 3 लाख डिबेंचर्स खरीदा, कैंसिल कर दिया, आपका लायबिलिटी कम हो गया. फ्यूचर में जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो अब 12% 10 CR का नहीं पे करना है, 12% ऑफ 7 CR पे करोगे. मतलब इंटरेस्ट एक्सपेंस भी कम हो जाएगा. बेनिफिट टू द कंपनी. दिस इज वेरी वेरी गुड ऑप्शन. सो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी हैज पावर्स to purchase its own debentures from the stock market for immediate cancellation. Concept remains the same like investment account. जब आप stock market से खरीदोगे तो this debentures may be listed at X interest price or cum interest price. X interest price does not include interest from the last interest date to the date of transaction. Cum interest price includes interest from the last interest date to the transaction date. Separately pay नहीं करना है. And normally when you purchase your own debentures from the open market, stock market is also called as open market, you normally purchase it at a lower price. Cancellation पे profit होगा, capital profit, it goes to capital reserve. However, अगर आपने higher rate पे खरीदा तो loss होगा. So loss on cancellation is a normal revenue loss which should be transferred to profit and loss account. Remember, that's the first part of your redemption of debentures, where company purchases its own debentures from the stock market with the intention of immediate cancellation. Now you are supposed to understand the concept of debenture redemption reserve, DRR. Certain companies have to maintain a DRR. और DRR कितना होना चाहिए, 10% of outstanding debentures.
कौन सी कंपनीज को मेंटेन नहीं करना है? Which companies do not have to maintain DRR? Do not have to maintain. इसमें आता है AIFI, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको DRR मेंटेन नहीं करना है। NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको नहीं करना है। HFC stands for हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इनको नहीं करना है। रिमेंबर, बैंकिंग कंपनीज, इनको भी नहीं करना है। एंड लिस्टेड कंपनीज, these companies do not have to maintain DRR. तो क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाता है XYZ लिमिटेड, अ कंपनी अदर देन AIFI, NBFC, HFC, बैंकिंग, अनलिस्टेड कंपनी करके दे देते हैं। दैट मीन्स दैट कंपनी हैज टू मेंटेन DRR। DRR कहां से मेंटेन किया जाता है? DRR इज क्रिएटेड आउट ऑफ PNL। कहां से क्रिएट किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल। बैलेंस शीट, कंपनी के पास PNL बैलेंस था। कितने का बैलेंस था? इट वाज लेट्स से 50 CR। कंपनी के पास PNL बैलेंस कितना था? 50 CR। न्यू डिबेंचर्स इश्यूड, कितने का? 20 CR। नया डिबेंचर्स इश्यू किया, कितने का इश्यू किया? 20 CR का। इमीडिएटली ऑन द वेरी फर्स्ट डे, जिस दिन डिबेंचर्स इश्यू किया, पैसा मिला, आपने एंट्री रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, इमीडिएटली आपको क्या करना है? CDRR क्रिएट करना है, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। कितने का क्रिएट करोगे? 10% ऑफ योर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। डिबेंचर्स कितने का था? 20 CR। उसका 10% कैलकुलेट करो, 2 CR आएगा ना। कहां से क्रिएट करोगे? PNL में से, मतलब PNL कम हो जाएगा, इट विल बिकम 48 CR एंड हियर यू विल हैव अ न्यू रिजर्व DRR। कितना आ जाएगा? 2 करोड़ रुपीस का आ जाएगा। कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। सर क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैंने क्रिएट नहीं किया, ये गलत होगा। रिमेंबर, so the moment debentures are issued, immediately you should create a DRR 10% of the outstanding debentures। अपने एग्जाम्पल में 20 CR था, तो अपने को 2 CR का DRR क्रिएट करना है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दे गिव यू अ बैलेंस शीट, यहां पे डिबेंचर्स ऑलरेडी दिया हुआ है 100 CR, यहां पे DRR भी दिया हुआ है 6 CR, and you have PNL of let's say 50 CR। अब डिबेंचर्स कितने का इश्यू किया है? 100 CR का। तो DRR कितने का होना चाहिए था? 10%। 10% ऑफ 100 CR इज हाउ मच? 10 CR। बट आपका DRR कितना है? सिर्फ 6 CR, 4 कम है ना। You have to immediately create that balance 4, which means आपका DRR will change to 10 CR। क्रिएट किया, 4 एक्स्ट्रा। कहां से क्रिएट करोगे? PNL में से क्रिएट करोगे, मतलब PNL कम हो जाएगा। एंट्रीज PNL अकाउंट डेबिट टू DRR, दिस विल बिकम 46 CR। रिमेंबर, you have to know that कि DRR हमेशा 10% होना चाहिए। चेक करने का, अगर 10% है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करना है। रिमेंबर, अब ये DRR कब
तक मेंटेन करने का, till the time the debentures are not redeemed. Remember, once the debentures are redeemed, गया, उसके बाद आपको DRR की जरूरत नहीं है. Remember, after redemption of debentures, DRR not required. डिबेंचर्स रिडीम करने के बाद आपको डीआरआर की जरूरत नहीं है. रिमेंबर, लेट्स टेक अ केस ऑफ अ बैलेंस शीट. डिबेंचर्स 50 CR and you did had a DRR of 5 CR. Redeemed all debentures. सारे डिबेंचर्स आपने रिडीम कर दिए. मतलब नया बैलेंस शीट आफ्टर रिडेम्पशन बनाओगे तो उसमें डिबेंचर्स अपीयर नहीं करेगा ना. तो शुड वी हैव डीआरआर इन द न्यू बैलेंस शीट आफ्टर ऑल द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड? द आंसर इज नो. तो जो आपका 5 CR का डीआरआर है, ट्रांसफर डीआरआर टू जनरल रिजर्व. तो एंट्री क्या पास करोगे आप? DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. कितने का ट्रांसफर करोगे? 5 CR. सो रिडेम्पशन के बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, उस बैलेंस शीट में डिबेंचर्स नहीं आएगा, डीआरआर नहीं आएगा, बट यस जनरल रिजर्व बैलेंस विल इंक्रीज. रिमेंबर, दैट्स योर वन ऑल्टरनेटिव. सेकेंड ऑल्टरनेटिव लेते हैं. लेट्स टेक अ सिमिलर बैलेंस शीट. डिबेंचर्स, बट नाउ आई एम टेकिंग इट ऑफ 100 CR और यहां पे डीआरआर है कितना? 10 CR. 10%? Yes. Perfect? Yes. Do we have to create a new DRR? No. Redeemed debentures of 60 CR. आपने कितने का डिबेंचर्स रिडीम किया? सिर्फ 60 CR का. ऊपर बैलेंस शीट में कितना डिबेंचर्स है? 100 डिबेंचर्स. So have you redeemed all 100 crores का डिबेंचर्स? The answer is no. आपने सिर्फ 60 crores का डिबेंचर्स रिडीम किया. ट्रांसफर DRR टू जनरल रिजर्व बट प्रपोर्शनेट अमाउंट. पूरा 10 CR जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं करोगे, प्रपोर्शनेट अमाउंट ट्रांसफर करने का. रिडीम किया 60 CR का, तो उसका 10% कैलकुलेट कीजिए. 60 CR का रिडीम किया, उसका 10% मतलब कितना आएगा? 6 CR. दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. कितना ट्रांसफर करोगे? सिर्फ 6 CR. पूरा 10 CR ट्रांसफर नहीं करने का. तो रिडेम्पशन के बाद अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे, उसमें डिबेंचर्स आएंगे 40 CR, डीआरआर भी आएगा 4 CR और जनरल रिजर्व भी आएगा. रिमेंबर, सो इफ ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, total balance in DRR is transferred to general reserve. If only part of the debentures are redeemed, then proportionate amount should be transferred from DRR to general reserve. Remember. So that's the first part, debenture redemption reserve. Second thing over here is debenture redemption reserve investment account. इसको हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं DRRI. It is called as DRRI. Remember,
Now what is this concept? जब भी कंपनी डिबेंचर्स इश्यू करेगी, दे ऑल्सो हैव टू मेंटेन बिसाइड्स DRR, DRRI. DRRI should be of how much? It should be of 15% of outstanding debenture balance. जितना डिबेंचर्स इश्यू किया उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना है इन सेफ सिक्योरिटीज, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, सिक्योरिटीज हो सकते हैं, पैसे डूबने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो. दिस इज फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. But investment should be only 15% of your debentures balance. जितना डिबेंचर्स से पैसा मिला पूरा इन्वेस्ट नहीं करने का, because debentures are issued, money is received, that's for long term purpose, capital investments, capital expenditure के लिए हो. Investments करने के लिए कोई debentures issue नहीं करता है, remember. But law कहता नहीं, for the safety and security of the debenture holders, a part of that amount received should be invested in safe securities. Who is not supposed to make this investments? कौन इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेगा? अगेन, AIFI will not do, NBFC नहीं करेगा, HFC नहीं करेगा, एंड बैंकिंग कंपनीज नहीं करेगा. Listed companies don't have to create DRR, but listed companies have to make investments. Remember, listed companies को DRR create नहीं करना है, but listed companies को investments करना पड़ेगा. Remember. So over here, suppose if a company has issued debentures of 100 CR, डिबेंचर्स कितने का इश्यू किया? 100 CR का. इमीडिएटली दे शुड इन्वेस्ट इन सेफ सिक्योरिटीज. तो ऑन द एसेट साइड आपका DRRI आ जाएगा. कितने का आ जाएगा? 15 CR का. एंट्री विल बी वेरी सिंपल. इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 1515 CR. रिमेंबर, सपोज इफ दे टेल यू और गिव यू अ बैलेंस शीट जिसमें डिबेंचर्स दिया हुआ है 200 CR, तो लॉजिकली 15% ऑफ 200 CR कितना होना चाहिए? 30 CR होना चाहिए ना. बट ऑन द असेट साइड you have DRRI of only 25 CR. Is it equal to 15% of the debentures issued? The answer is no. 200 का 15% is 30 CR. Investments कितने का होना चाहिए था? 30 CR का है. You are a chartered, you know कि ये 30 CR तो नहीं है, सिर्फ 25 है, मतलब they are not following the rules, remember. So what you have to do is, यहाँ पे कैश और बैंक बैलेंस होगा. Let's say cash and bank balance was 18 CR. इमीडिएटली आप क्या करोगे? क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं करेंगे दैट इन्वेस्टमेंट्स आर लेस देन 15%, प्लीज इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट्स. ऐसा नहीं दिया जाता है. यू आर चार्टर्ड, यू नो द प्रोविजंस. तो आपको इमीडिएटली क्या करना है? 5 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट्स करना है. जब आप नया इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा 13 CR और ये हो जाएगा 30 CR ना. Now are the investments equal to 15%? The answer is yes. So investments should always be 15% of outstanding debentures. अगर है अच्छी बात है. अगर नया डिबेंचर्स इशू किया इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट्स करना है. अगर पुराने डिबेंचर्स है तो चेक करने का बैलेंस शीट एसेट साइड, डू दे हैव इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 15% इक्विवेलेंट? इफ यस, नो प्रॉब्लम. अगर कम इन्वेस्टमेंट्स है आपको इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट्स करने का जो भी डिफरेंस है वो. ज्यादा सोचना भी मत.
कि सर 15% से ज्यादा होगा, तो ऐसा होता ही नहीं है। कोई करेगा क्यों कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट सेम रखेंगे या कम करेंगे? कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता है। इंटरेस्ट ऑन DRRI, इन्वेस्टमेंट्स किया तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, and interest on investment is your income. Where will this go? It will go to your profit and loss account. It will go to your profit and loss account. And now comes redemption of debentures. इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। All debentures redeemed. सारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ऑल डिबेंचर्स। डू वी नीड टू कीप एनी इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर? आफ्टर रिडेम्पशन का जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें डिबेंचर्स ही नहीं है। डिबेंचर्स ही नहीं होगा तो ऑन दी एसेट साइड इन्वेस्टमेंट्स क्यों रखने का? नो नीड टू कीप एनी इन्वेस्टमेंट। सेल ऑल DRRI, सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दो। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, where will it go? To my profit and loss account. सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दो, and whenever you sell investments, naturally you're going to make some profit or loss. Transfer it. Where will you transfer it? To your profit and loss account. Part of the debentures are redeemed. All debentures are not redeemed. Only a part of the debentures are redeemed. Then sell proportionate DRRI. सारे इन्वेस्टमेंट्स नहीं बेचोगे, प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स ही बेचोगे 15%. So see what is the debentures redeem, what is the face value, उसका 15% कैलकुलेट करो, इतना इन्वेस्टमेंट्स बेच दो. Profit or loss on sale of investments, where will it go? It will go to my profit and loss account, remember. So in case of redemption of debentures, either you can redeem it by purchasing it from the open market. Open market means stock market with the intention of immediate cancellation. And when you cancel your own debentures by purchasing it from the open market, you can purchase it at X interest price, cum interest price. Profit on cancellation is a capital profit which will go to capital reserve. Loss on cancellation is treated as a revenue loss which goes to my profit and loss account. If your company has issued debentures, they have to maintain DRR, 10% of the outstanding. कौन से कंपनीज को मेंटेन नहीं करना है? रिमेंबर, देन AIFI, NBFC, HFC, बैंकिंग एंड लिस्टेड कंपनीज को DRR मेंटेन नहीं करना है. कहां से क्रिएट करोगे DRR? PNL में से. डिबेंचर्स इशू किया, इमीडिएटली DRR क्रिएट करो. अगर ऑलरेडी डिबेंचर्स इशूड है, चेक करो बैलेंस शीट, DRR है या नहीं है. नहीं है तो इमीडिएटली क्रिएट करो. अगर है तो चेक कीजिए, इज इट इक्विवेलेंट टू 10%? इफ यस, नो प्रॉब्लम. अगर 10% से कम है तो जितना भी शॉर्ट है उतना नया DRR क्रिएट कर दीजिए. PNL का बैलेंस कम हो जाएगा, DRR बढ़ जाएगा. वंस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, DRR की जरूरत नहीं है. अगर सारे डिबेंचर्स रिडीम कर दिए तो वट एवर इज द बैलेंस इन DRR गोज टू माय जनरल रिजर्व. और अगर प्रपोर्शनेट डिबेंचर्स रिडीम किए तो प्रपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम DRR विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. रिमेंबर, एक और आ जाता है कॉन्सेप्ट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट्स, DRRI. किसको मेंटेन नहीं करना है? AIFI, NBFC, HFC एंड बैंकिंग लिस्टेड कंपनीज को इन्वेस्टमेंट्स मेंटेन करना है. 15% of the outstanding debenture balance. Similar concept to your DRR. अगर इश्यू किया है डिबेंचर्स, चेक कीजिए, इन्वेस्टमेंट्स है 15% है, परफेक्ट. नहीं है, कम है, तो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट्स आपको करना है, जो भी डिफरेंस है उसका. बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स विल इंक्रीज. इन्वेस्टमेंट्स पे इनकम मिलता है, दैट गोज टू PNL, रिमेंबर.
और अगर डिबेंचर्स रिडीम करते हो तो इन्वेस्टमेंट्स बेच देने का, इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे तो प्रॉफिट या लॉस होगा, दैट विल गो टू P&L। अगर सारे डिबेंचर्स रिडीम किए, सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दो। इफ पार्ट ऑफ द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, देन प्रपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट्स शुड बी सोल्ड। 15% ऑफ द डिबेंचर्स रिडीम शुड बी सोल्ड ऑफ, रिमेंबर। That's your revision of redemption of debentures chapter. Okay. The next chapter that we are going to revise is branch accounts. Branch accounts. What do you mean by the branch? If the main place of business organization is scattered over various areas, various cities, various states, then those areas where you have a separate place of business is what we call it as branches, remember. So over here you are supposed to understand how do we do the accounting of a branch in the books of HO, and if the branch is maintaining separate books of accounts, how do we do the accounting in the books of the branch over here. So branch accounts, always remember there will be two organizations. One will be the head office, whom we call it as the HO, and second is the branch. Head office is the main principal place of business, and branch is another organization of the same place where you are situated in a different city and so on. So now over here, whenever you have branches, these branches are basically divided into two categories, remember. Branches are basically divided into two categories. One is domestic branches and second is foreign branches. Domestic branches are those branches which are situated in the same country in which the HO is based. So if the head office is in India and if they have branches anywhere in India, then those branches will be termed as domestic branches. Foreign branches are those branches which are in a different country as compared to the place of the original HO country, remember. So two categories, one is domestic, one is foreign branches. In domestic branches also there will be two further subcategories. Whether the branches are dependent or whether the branches are independent. From accounting point of view, dependent branches are those branches which are small in size and which do not maintain proper books of accounts. Independent branches are normally those branches which are big in size and which maintain proper books of accounts. In dependent branches, as the branches are not maintaining proper books of accounts, their accounting will be done by the head office, remember. Whereas in independent branches, the branches are maintaining proper books of accounts. So whatever transaction the branch undertakes will be recorded in their own books of accounts by following normal double entry system of bookkeeping, remember. Foreign branches, if you think logically, it is always independent. It can never be dependent, remember. Because they are situated in a different country, so they are supposed to maintain books of accounts over there. As per the rules, they have to do it of that particular country, remember. So foreign branches are always independent, domestic may be dependent or independent. Now, in case of dependent branches, the branches are not maintaining proper books of accounts. So, all accounting of the branch will be undertaken by the HO, remember. Branch at regular intervals of time intimates the HO. These are the transactions which you undertook in the given period. HO will be recording those transactions in their books of accounts. And for this purpose, there are two methods over here. One is called as debtors method
and second is called as stock and debtors method. In the question, they specifically mention which method are you supposed to follow. Debtors method follow करना है या stock and debtors method, clearly दिया जाता है, remember. Now first, let's understand debtors method. Remember, accounting is done in the books of HO. Branch is not maintaining any proper books of accounts. At the most एक रफ बुक मेंटेन किया जाएगा in which they will be recording कि हमने क्या क्या transactions किए हैं and those transactions का details are given to the HO. But branch के पास proper subsidiary books नहीं है, ledger नहीं है, वो लोग accounting नहीं करते हैं, remember. सिर्फ एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए थे. So in the books of HO, you are supposed to prepare branch account. Branch is not maintaining books of accounts. Books of HO. ब्रांच का नाम होगा XYZ ब्रांच अकाउंट. HO ये अकाउंट बनाएगा ऑफ XYZ ब्रांच, मतलब जितने ब्रांचेस होंगे उतने सेपरेट अकाउंट्स आपको बनाने हैं. एंड इन दिस अकाउंट transactions will be recorded only which takes place with the XYZ that specific branch. दूसरे ब्रांचेस के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा. HO prepares this account with the intention of finding out कि ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया इन अ गिवन पीरियड. नॉर्मली एक साल के फिगर्स दिए जाएंगे. सो इन दैट 1 year's टाइम पीरियड डिड द ब्रांच मेक प्रॉफिट और इनकर लॉस. दैट इज व्हाट द HO finds out by preparing this particular branch account, remember. So this account is in the books of HO. It's a normal account, so it will have two sides. Two amount columns, one inner column, one outer column. Okay. Now this branch is not a new branch. It's an old branch. 5-10 साल हो गया इस branch को. So naturally, at the beginning of the year, there will be some opening assets at the branch. Assets always have a debit balance. So on the debit side of the branch account, to balance brought down. There may be some furniture at the branch. So furniture का opening balance क्या था वो आप record करोगे. They may be having some cash or bank balance. So वो कितना था वो record करोगे आप. They will be having some opening stock. So what was the stock figure that you are going to record it. अगर goods credit पे बेचा तो customer से पैसा आना बाकी है तो debtors का balance होगा यहाँ पे. If there are any prepaid expenses तो prepaid expenses होंगे यहाँ पे. Write down the opening balances of the branch at the beginning of the year, remember. इन सब का total आप outer column में ले लोगे ना. Then हो सकता है कुछ opening liabilities भी हो. So liabilities will come on the credit side by balance brought down. And normally दो liabilities होते हैं. One will be creditors if the branch is purchasing goods on credit basis, and second is outstanding expenses. Basically two liabilities. Now remember, branch is not maintaining any books of accounts. ये account कौन बना रहा है? HO बना रहा है. Think from the HO's point of view. HO will send goods to the branch. So when the HO sends the goods to the branch, HO क्या record करेगा? Branch account debit to goods sent to branch.
So it will appear in my branch account on the debit side as to goods sent to branch. ब्रांच को गुड्स मिला, चेक किया, कुछ डिफेक्टिव था तो ब्रांच क्या करेगा, वो गुड्स को रिटर्न कर देता है एचओ को. गुड्स आर रिटर्न्ड बैक. मतलब एचओ को गुड्स वापस मिला. कौन सा गुड्स वापस मिला? द वन विच दे हैड सेंट टू द ब्रांच. कहां से वापस आया? इट केम बैक फ्रॉम द ब्रांच. रिमेंबर, एंट्री क्या होगा इन द बुक्स ऑफ एचओ? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट्स. इन माय ब्रांच अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय goods sent to branch in bracket returns. अब ब्रांच के पास गुड्स आ गया. गुड्स कौन बेचेगा? ब्रांच बेचेगा. But branch will not record certain transactions. Remember, they are not maintaining any books of accounts. एक डायरी मेंटेन किया and diary is being sent to the HO for doing the accounting part. Based on that diary, accounting will be done by the HO. Remember. नाउ ब्रांच को कुछ एक्सपेंसेस इनकर करने थे. रेंट पे करना था, सैलरीज पे करना था. कौन पे करता है ये सब कुछ? एचओ पे करता है ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच. एचओ ने पेमेंट किया तो एचओ एंट्री रिकॉर्ड करेगा. पेमेंट किया सो टू कैश और बैंक. किसके बिहाफ पे किया? ब्रांच के बिहाफ पे किया. सो इन द बुक्स ऑफ एचओ एंट्री विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. सो इन योर ब्रांच अकाउंट टू कैश और बैंक. इसमें बेसिकली एक्सपेंसेस आएंगे. जो भी ब्रांच के एक्सपेंसेस एचओ ने पे किया वो यहां पे रिकॉर्ड हो जाएगा. सपोज द ब्रांच वांट्स अ न्यू असेट. एक नया मशीन चाहिए, कुछ नया फर्नीचर चाहिए. एचओ परचेसेस इट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच. परचेस किसने किया? एचओ ने किया. पेमेंट किसने किया? एचओ ने किया. बट असेट कहां पे डिलीवर्ड होगा? ब्रांच पे. यूज कौन करेगा? ब्रांच. बट एचओ ने पेमेंट किया ना. So in the books of HO, entry for the same will be branch account debit to cash or bank. Payment किया on behalf of the branch. Remember, so asset खरीदा branch के लिए. Payment HO ने किया. Recorded. Now what happens is, branch will sell goods. जब branch goods बेचता है तो branch में sell it for cash, branch में sell it for credit. क्रैश सेल्स हो सकता है, क्रेडिट सेल्स हो सकता है. बट ये सेल्स यहां पे रिकॉर्ड नहीं होता है. व्हाट इज रिकॉर्डेड इज ब्रांच ने एचओ को कितना पैसा रेमिट किया, ट्रांसफर किया. ब्रांच ने कितना पैसा एचओ को भेजा वो रिकॉर्ड होता है. रिमेंबर, ये अकाउंट एचओ के बुक्स में है. अगर ब्रांच कैश में बेचेगा गुड्स तो कस्टमर किसको पैसा दे रहा है? ब्रांच को पैसा दे रहा है. एचओ को वो पैसा मिला क्या कस्टमर से? नहीं मिला. एचओ सेज हम ये ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करेंगे. ब्रांच ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, कस्टमर को गुड्स बेचा. इज एचओ इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन? द आंसर इज नो. एचओ सेज हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. बट ब्रांच को जो पैसा कस्टमर से मिला वो ब्रांच को मिला, एचओ को तो नहीं मिला ना. तो इज एचओ इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन? एचओ इज नॉट इन्वॉल्व्ड. सो एचओ सेज ये ट्रांजैक्शन भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. अगर ब्रांच ने किसी कस्टमर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड, ब्रांच ने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, एचओ ने थोड़ी ना डिस्काउंट दिया. एचओ इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रांजैक्शन. एचओ सेज ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. HO does not record those transactions where it is not involved, remember. But अगर ब्रांच ने पैसा भेजा HO को, which we call it as remittances, ब्रांच के पास पैसे कहां से आएंगे? कैश सेल्स. ब्रांच के पास पैसे कहां से आएगा? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कस्टमर से पैसा मिला, ये पैसा ब्रांच करेगा क्या? ब्रांच सेंड्स इट टू HO, which we call it as remittances. अब एचओ को पैसा मिला ना, एचओ से यस ये हम रिकॉर्ड करेंगे. हमको पैसा मिला, कहां से मिला? फ्रॉम द ब्रांच. थिंक फ्रॉम द एचओ's पॉइंट ऑफ व्यू. एचओ इज रिसीविंग द मनी फ्रॉम द ब्रांच. एचओ विल रिकॉर्ड द एंट्री एज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट. सो इन माय ब्रांच अकाउंट यू विल हैव ओवर हियर बाय कैश और बैंक. In bracket we write it as remittances. And this remittances will be on account of cash sales and it will be on account of collection from
डेटर्स। कैश सेल्स का जो पैसा मिला उसमें से कितना पैसा ट्रांसफर किया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स से जो पैसा आया उसमें से कितना पैसा ट्रांसफर किया एचओ को, वो रिकॉर्ड करना है आपको। सो ओवर ये सिर्फ रेमिटेंसेस रिकॉर्ड होता है, कैश सेल्स का फिगर रिकॉर्ड नहीं होता है। सपोज कैश सेल्स इज 1 लाख, बट अगर उस 1 लाख में से ब्रांच ने पैसा भेजा सिर्फ 95,000, ब्रांच को कितना पैसा मिला गुड्स बेच के 1 लाख, लेकिन ब्रांच ने कितना पैसा ट्रांसफर किया एचओ को, सिर्फ 95,000। तो बाय कैश और बैंक रेमिटेंसेस में कैश सेल्स कितना आएगा, 95,000 एंड नॉट 1 लाख। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच को कस्टमर से 3 लाख रुपया मिला, बट हैव दे ट्रांसफर्ड फुल 3 लाख रुपीस टू द एचओ? इफ नॉट, तो जितना ट्रांसफर किया उतना आएगा एज कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में। कितना पैसा ब्रांच को मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कितना पैसा एचओ को भेजा वो रिकॉर्ड करना है आपको यहां पे। Then at the end of the year, you will be recording the closing assets by balance carried down. Closing balance of furniture, and this has to be your WDV after charging depreciation. मान लो 2 मिनट के लिए आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर वाज 10,000। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो फर्नीचर था आपके पास वो कितना था, 10,000 का है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज 10% पर एनम। 10,000 का 10% कैलकुलेट करोगे तो 1,000 आएगा, और डेप्री माइनस करने के बाद 1,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा, 9,000 होगा ना। डेबिट में हमने कितना रिकॉर्ड किया, 10,000। क्रेडिट में हम कितना रिकॉर्ड कर रहे हैं, 9,000। नेट डेबिट इज 1,000, दैट इज नथिंग बट द डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करने का, it is automatically recorded when you are recording the opening balance and closing balance of asset. ओपनिंग WDV रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग WDV रिकॉर्ड किया, तो बाय डिफॉल्ट आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया, डेप्रीसिएशन। Then see what is your cash or bank, see what is your stock, see what is your debtors, see what is your prepaid expenses if any. जरूरी नहीं कि सारे आइटम्स एवरी क्वेश्चन में होंगे, रिमेंबर। एट द सेम टाइम ऑन द अदर साइड यू राइट डाउन द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ योर लायबिलिटीज इफ एनी। बेसिकली 2 लायबिलिटीज हो सकते हैं, एक होगा क्रेडिटर्स और दूसरा होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। Now close the account. It will not tally. Difference will represent your profit or loss. यहां पे अगर difference आता है, it is profit and loss, and where does it go? It goes to my general P&L. This is my branch ने इतना profit कमाया। On the other side अगर आया तो loss हो गया वो। Basic branch account in the books of HO under daters method. HO branch को एक regular customer समझता है, and accordingly whatever transaction takes place between the HO and branch will be recorded over here. Branch ने किसी customer के साथ transactions किया वो यहाँ पे record नहीं होता है, remember. This is the first part of daters method. But what happens is whenever the goods are sent by HO to branch, they normally don't send it at cost price. Whenever goods are sent to branch, they always send it at invoice price. और invoice price includes profit. इसको हम loading भी कहते हैं. So whenever HO sends the goods to branch, it is normally sent at invoice price. Invoice price includes profit, which we call it as loading. Now what is your job? Remember हम ये account बना रहे in the books of HO. जब HO ब्रांच को गुड्स भेज रहा है तो HO को तो पता है कि अपना कॉस्ट प्राइस क्या है, हमने कितना प्रॉफिट ऐड किया है, व्हाट इज द इनवॉइस प्राइस। HO को ये प्रॉपरली पता है
ये अकाउंट एचओ के बुक्स में बन रहा है. सो व्हेन दे रिकॉर्ड गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, इमीडिएटली एचओ क्या करेगा, ऑन द क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच लोडिंग. सो डेबिट में आपने क्या रिकॉर्ड किया, इनवॉइस प्राइस. इमीडिएटली क्रेडिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, लोडिंग, ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट. सो नेट इफेक्ट क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया. रिमेंबर, अब अगर गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा था तो ब्रांच जो रिटर्न करेगा गुड्स वो भी तो इनवॉइस प्राइस पे होगा. सो दिस गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स विल आल्सो बी एट इनवॉइस प्राइस. मतलब इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लोडिंग इंक्लूडेड है, एलिमिनेट करना है. सो हाउ डू वी एलिमिनेट इट, बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द डेबिट साइड ओवर हियर एज टू goods sent to branch, loading on returns over here. सो क्रेडिट साइड पे आपने इनवॉइस प्राइस रिकॉर्ड किया, डेबिट साइड पे आपने लोडिंग रिकॉर्ड किया, तो नेट इफेक्ट आपने कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड कर दिया. सो व्हाट विल हैपन बाय डिफॉल्ट इज एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा ना, बिकॉज गुड्स वर सेंट एट इनवॉइस प्राइस. तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचा होगा ब्रांच पे वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा. इनवॉइस प्राइस इंक्लूड्स प्रॉफिट. एलिमिनेट, हाउ डू यू एलिमिनेट, बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द ऑपोजिट साइड एज टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व. And closing stock of 1 year automatically becomes the opening stock of next year. तो यहां पे जो opening stock दिया होगा वो भी कौन से प्राइस पे दिया होगा, इनवॉइस प्राइस. उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा. एलिमिनेट करो, हाउ डू यू एलिमिनेट, बाय रिकॉर्डिंग इट ऑन द ऑपोजिट साइड. सो क्रेडिट साइड पे लिख दोगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व. So normally HO sends the goods at invoice price, record them at invoice price, but immediately record it on the other side, the loading element. So once you record the loading element, you already recorded the invoice price, the net effect is your cost price, remember. This is your branch account under debtors method in the books of HO. Branch books maintain नहीं करता है. ब्रांच के वहां पे अकाउंटेंट नहीं है. ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड बाय द ब्रांच इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एचओ रिकॉर्ड करेगा ये ट्रांजैक्शंस. नाउ व्हेन यू मेंटेन दिस पर्टिकुलर मेथड, व्हेन यू फॉलो दिस मेथड, व्हेन यू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर अकाउंट, देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट incorporated or recorded in this account, and those are basically those transactions in which HO is not involved. Cash sales. Cash sales is between branch and the customer. ब्रांच ने कस्टमर को गुड्स बेचा, कस्टमर ने ब्रांच को पैसा दिया, दी एंड. वेयर इज एचओ इन्वॉल्व्ड? सो एचओ कहता हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे. कैश सेल्स इज नॉट रिकॉर्डेड. सर क्रेडिट साइड पे आपने लिखा है कैश और बैंक रेमिटेंसेस, कैश सेल्स, दैट इज कैश सेल्स का जो पैसा ब्रांच को मिला उसमें से कितना पैसा उन्होंने एचओ को भेजा, रेमिट किया, ट्रांसफर किया, वो फिगर है. क्रेडिट सेल्स एचओ नहीं रिकॉर्ड करता है. सेल्स रिटर्न एचओ रिकॉर्ड नहीं करता है. अगर ब्रांच ने परचेसेस किया, कैश परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस, एचओ रिकॉर्ड नहीं करेगा. परचेस रिटर्न एचओ रिकॉर्ड नहीं करता है. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्डेड. बैड डेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड. एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, एचओ रिकॉर्ड नहीं करेगा. एचओ ने थोड़ी ना एक्सपेंसेस पे किया. Depreciation is not recorded. By default, it automatically gets recorded. ओपनिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड किया है, क्लोजिंग बैलेंस आपने रिकॉर्ड किया, क्लोजिंग WDV रिकॉर्ड किया, दैट इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन. सो बाय डिफॉल्ट आपका डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो जाता है. रिमेंबर, if there are any loss at the branch, loss by theft है ना, it will not be recorded by the HO because HO says we are not concerned. बट ये सारे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर गुड्स चोरी हो गया तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा ना एट द ब्रांच. तो आप रिड्यूस क्लोजिंग स्टॉक जब रिकॉर्ड करोगे तो बाय डिफॉल्ट व्हाट यू आर रिकॉर्डिंग इज द गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट. सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता है. रिमेंबर,
So that's your first method called as debtors method. Under this method, you may have to prepare certain working notes. एक डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, हो सकता है एक स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, because there may be some missing figures. They will tell you what is the opening balance of debtors, what is the closing balance of debtors. They will tell you what is the credit sales, what is the sales return, what is the discount allowed, what is the bad debts. But they will not tell you कि ब्रांच को कस्टमर से कितना पैसा मिला. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स नहीं दिया गया. तो वो फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन अ वर्किंग एक नॉर्मल डेटर्स अकाउंट बनाना है. ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करो, क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करो, सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करो, क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड करो, डिस्काउंट अलाउड रिकॉर्ड करो, बैड डेट्स रिकॉर्ड करो, क्लोज कीजिए, टैली नहीं होगा. डिफरेंस ऑटोमेटिकली विल बी कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, और वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहां पे आएगा, इन योर branch account credit side under remittances. Remember, similarly stock account शायद बनाना पड़े. They will tell you what is the opening stock, they will tell you what is the goods sent to branch, they will tell you what is the credit sales, cash sales, closing stock देना भूल गए वो. Nothing to worry, आपके पास सारे transactions है ना stock को related. Prepare a normal stock account, close it, tally नहीं होगा. Difference will be the closing balance of stock, and that you record it in your branch account on the credit side as by balance carried down. So besides the main account, branch account, you may have to prepare a debtors account as a working note and a stock account as a working note, but normal principles आपको वहां पे follow करने हैं. ये first method हुआ. Second method is called as same dependent branches में stock and debtors method. Again, remember it is dependent branches, which means branch books maintain नहीं कर रहा है. तो ये किसके बुक्स में अकाउंटिंग हो रहा है, इन द बुक्स ऑफ एचओ. एचओ के पास दो चॉइसेस है, या तो डेटर्स मेथड फॉलो करो या तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड फॉलो करो. हर एचओ एक डिसीजन लेता है. एवरी ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ पॉलिसी कि अपने ब्रांचेस है, डिपेंडेंट ब्रांचेस है, तो क्या करना चाहिए, डेटर्स मेथड फॉलो करना चाहिए या स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. तो यहां पे नाउ वी आर लुकिंग एट स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. एचओ के बुक्स में ब्रांच बुक्स मेंटेन नहीं कर रहा है. अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड यू हैव टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ अकाउंट्स. एक अकाउंट नहीं, बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. एंड एवरी ट्रांजैक्शन दैट द ब्रांच एंटर्स इनटू will be recorded by the HO. Every transaction will be reported by the branch to the HO. हमने इतना कैश सेल्स किया, इतना क्रेडिट सेल्स किया, इतना डिस्काउंट अलाउ किया. Everything will be informed by the branch to the HO. HO, every transaction that the branch entered into will be recording it. तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट्स बनाने, एक अकाउंट से काम नहीं होगा, बहुत सारे अकाउंट्स आपको बनाने. This method is basically an advanced version of your debtors method. Debtors method follow कीजिए, stock and debtors method follow कीजिए, final profit will remain the same. आप सेम क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट फाइनल प्रॉफिट या लॉस का जो फिगर आएगा ना वो डिफरेंट नहीं होगा. रिमेंबर, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड इज अ डिटेल्ड मेथड एज कंपेयर टू डेटर्स मेथड. डेटर्स मेथड में काफी सारे ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करते थे. यहां पे एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. सारे ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड अंडर स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. कौन कौन से अकाउंट्स हम बनाते हैं? वन इज योर ब्रांच स्टॉक अकाउंट, एंड दिस अकाउंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड एट IP. IP का फुल फॉर्म क्या है? इनवॉइस प्राइस. रिमेंबर, सेकेंड अकाउंट दैट यू प्रिपेयर इज अ ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट. Branch stock adjustment account, and this account is always prepared with the loading element
प्रॉफिट एलिमेंट। ऊपर स्टॉक में इनवॉइस प्राइस है उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, वो प्रॉफिट आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे? एडजस्टमेंट अकाउंट में। देन यू हैव अ ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज प्रिपेयर्ड विद द इंटेंशन टू फाइंड आउट कि ब्रांच ने प्रॉफिट कमाया या लॉस किया। देन यू विल हैव वन ब्रांच डेटर्स अकाउंट। All transaction relating to branch daters will be recorded in this particular account. Then you will be having one branch cash account. And then one you have is your goods sent to branch account. Normally maximum 6 accounts, but don't worry, question में all 6 accounts बनाना शायद नहीं भी पड़ेगा। In certain questions they specify आपको कौन से accounts बनाने हैं, so just prepare those accounts, don't prepare all 6 accounts, remember. And remember, all accounts are part and parcel of the solution. None of them is a working note. कोई भी working note इसमें से नहीं है. Remember that. Now, opening balances वो देते हैं ना, नया ब्रांच नहीं है, पुराना ब्रांच है, तो ओपनिंग बैलेंसेस होंगे ना। ओपनिंग स्टॉक होगा तो कहां पे रिकॉर्ड करोगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बट ये कौन से वैल्यू पे होगा? इनवॉइस वैल्यू पे होगा। इनवॉइस वैल्यू पे होगा मतलब इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, लोडिंग इंक्लूडेड है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। Where will you record that stock reserve? In your adjustment account, credit side, by opening stock reserve. Opening daters का balance होगा. We have a daters account. So in your daters account, you'll write it as to balance brought down. कैश अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस देंगे तो अपने पास कैश अकाउंट है, उसका बैलेंस लिख दीजिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। So opening balances of stock, debtors and cash will be given to you. Record it in the respective accounts. But stock का जो opening balance होगा that will be at invoice price. उसमें loading included है. वो loading आप कहाँ record करोगे? Adjustment account on the debit side, on the credit side is by opening stock reserve. Remember. Now HO will send the goods to the branch. HO ने branch को goods भेजा तो branch का stock बढ़ेगा क्योंकि branch को goods मिला. Entry for the same will be branch stock account debit to goods sent to branch. So over here to goods sent to branch. Second effect कहाँ पे आएगा? In my goods sent to branch account as by branch stock account. But जब HO goods भेजेगा branch पे तो it will be sending it at invoice price. Remember this account is at invoice price. अगर वो invoice price पे भेजा है इसका मतलब है कि इसमें loading है. Loading कहाँ पे record करेंगे? Adjustment account. Which side? Opposite side. Credit side is by goods sent to branch. Second effect कहाँ पे आएगा? Goods sent to branch account debit side too. branch stock adjustment account. क्रेडिट में अगर आप सोचोगे तो दिस इज एट इनवॉइस प्राइस, डेबिट में अपने लोडिंग रिकॉर्ड कर दिया तो कैन आई से द नेट फिगर रिकॉर्डेड इन गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इज योर कॉस्ट प्राइस. रिमेंबर, ब्रांच को गुड्स मिला, अच्छा नहीं लगा, डैमेज था, क्या करते हैं? एचओ को रिटर्न कर दिया. सो रिटर्न क्या मतलब? ब्रांच का स्टॉक कम हो जाएगा ना. सो इन माय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड इज बाय
goods sent to branch in bracket returns. तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट ऑन द डेबिट साइड एज टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. बट दिस इज एट इनवॉइस प्राइस. इसमें लोडिंग इंक्लूडेड है. लोडिंग को एलिमिनेट करो. वेयर? इन माय एडजस्टमेंट अकाउंट. विच साइड? टू डेबिट साइड एज टू गुड्स सेंट टू ब्रांच इन ब्रैकेट रिटर्न्स का लोडिंग है ना ये. सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में बाय branch stock adjustment account. Remember, this is returns at invoice price. This is loading. Automatically क्या प्राइस पे रिकॉर्ड हो गया? कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड हो गया. अब ब्रांच के पास गुड्स आ गया. अब ब्रांच गुड्स बेचेगा. कैश सेल्स. तो ब्रांच को पैसा मिलेगा ना. तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक. क्योंकि जब गुड्स बेचोगे तो स्टॉक कम हो जाएगा. सो स्टॉक इज क्रेडिटेड. सो इन माय ब्रांच स्टॉक इट विल बी बाय कैश सेल्स. कैश सेल्स पैसा मिला. ब्रांच को पैसा मिला. सो इन माय ब्रांच कैश अकाउंट टू कैश सेल्स. अगर ब्रांच ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, स्टॉक कम हो गया, डेटर्स हो जाएंगे. सो इन माय ब्रांच स्टॉक अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड बाय क्रेडिट सेल्स. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? ब्रांच डेटर्स में डेबिट साइड टू सेल्स. कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया. कुछ गुड्स तो सेल्स रिटर्न हम कहते हैं ना. सेल्स रिटर्न कहां रिकॉर्ड करोगे? डेटर्स अकाउंट बाय सेल्स रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड. मतलब ब्रांच के पास गुड्स वापस आ गया तो ब्रांच का स्टॉक विल इंक्रीज. तो सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? इन योर ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स रिटर्न. अब क्रेडिट पे गुड्स बेचा तो कस्टमर से पैसा मिलेगा. कस्टमर से पैसा मिला, किसको मिलेगा? ब्रांच को मिलेगा. तो ब्रांच का कैश बढ़ेगा. कस्टमर से पैसा मिला. सो मैं ब्रांच डेटर्स बाय ब्रांच कैश. सेकेंड इफेक्ट इसका मेरा ब्रांच कैश में आएगा टू ब्रांच डेटर्स. जब कस्टमर से पैसा मिला तो उनको हमने डिस्काउंट अलाउ किया. सो डिस्काउंट अलाउ करोगे तो ब्रांच डेटर्स में क्रेडिट में आएगा ना बाय डिस्काउंट अलाउड. सेकेंड इफेक्ट ऑफ दैट विल कम इन माय ब्रांच P&L टू डिस्काउंट अलाउड. अगर किसी कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स, तो दैट विल ऑल्सो कम इन माय ब्रांच डेटर्स ना by bad debts. सेकेंड इफेक्ट इसका P&L में आएगा टू bad debts. ब्रांच ने अगर कुछ एक्सपेंसेस पे किया, रेंट पे किया, सैलरीज पे किया, ब्रांच ने एक्सपेंसेस पे किया, तो ब्रांच कहां से एक्सपेंसेस पे करेंगे? फ्रॉम देयर कैश दे विल पे ना. So entry will be very simple. Expenses account debit to branch cash. और expenses कहां पे जाएगा? branch P&L में जाएगा ना. So over here to expenses. branch ने पे किया तो branch cash में भी आएगा ना क्रेडिट साइड पे बाय expenses. अब ब्रांच को जो पैसा मिला उसमें से कुछ पैसा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, रेमिट कर दिया टू द एचओ. एचओ को पैसा मिला. कहां से पैसा आया? फ्रॉम द ब्रांच आया. रिमेंबर, तो एचओ के एंट्री रिकॉर्ड करेगा. ऑल दिस इज इन द बुक्स ऑफ एचओ. ब्रांच बुक्स मेंटेन नहीं करता है. प्लीज रिमेंबर दैट. एचओ एंट्री रिकॉर्ड करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश. सो ब्रांच कैश में आ जाएगा बाय cash or bank. In bracket I'll write it for your reference.
रेमिटेंसेस। सपोज ब्रांच को पैसों की जरूरत पड़ गई, उन्होंने एचओ को इन्फॉर्म किया हमको पैसा शॉर्ट पड़ रहा है, प्लीज ट्रांसफर कैश टू अस। एचओ ने कैश ट्रांसफर कर दिया, ब्रांच को पैसा मिला। So entry will be branch cash account debit to cash or bank. In the books of HO, HO ने पैसा दिया, branch को दिया, so branch cash to cash or bank. This is transfer from HO. These are the normal transactions. Depreciation. Depreciation record होगा, कहां पे record होगा? P&L में. To depreciation. Now closing stock. Closing stock आपको अगर दिया well and good, नहीं दिया तो it will be a balancing figure. So by balance carried down. But this is at invoice price. तो इसमें profit included है ना? In my adjustment account to closing stock reserve. Now very very important point. अगर आपको closing stock दिया है, record it और close कीजिए stock account. अगर टैली हो गया well and good, जो normally नहीं होगा. You will always have some difference. Suppose if the difference comes on the debit side, then this is called as shortage. इसको हम क्या कहते हैं? Shortage. If the difference comes on the credit side, the difference is called as shortage. और अगर difference debit side पे आया तो इसको कहा जाता है surplus. If it comes on the debit side, it is called as surplus. On the credit side, it is called as shortage, remember. Now, how do we treat this shortage and surplus is what you are supposed to understand. Shortage is at invoice price, remember. ये जो shortage होगा ना, that is basically classified into two parts. Normal loss, or it will be called as abnormal loss. Shortage दो टाइप के होंगे, या तो नॉर्मल होगा या तो एबनॉर्मल होगा. क्वेश्चन में अगर सिर्फ शॉर्टेज दिया, नॉर्मल या एबनॉर्मल स्पेसिफाई नहीं किया, यू शुड ऑलवेज टेक इट एज एबनॉर्मल. Abnormal losses are those losses which are avoidable losses. Like goods चोरी हो गया, they are avoidable. It's not an inherent quality. Normal loss is a loss which on account of inherent quality of the product. होगा ही, कुछ भी कर लो आप उसको रोक नहीं पाओगे नॉर्मल लॉस को, जबकि एबनॉर्मल लॉस आप रोक सकते हो. सो हाउ डू वी गिव द ट्रीटमेंट? नॉर्मल लॉस होगा तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया जाता है दिस इज अ नॉर्मल लॉस. और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो कभी कभी करते हैं, कभी कभी ऐसे वर्डिंग्स होते हैं जिसमें अपने को समझ में आ जाता है. लाइक लॉस बाय थेफ्ट अगर दिया, गुड्स चोरी हो गया, तो सोचिए नॉर्मल है और उसका या एबनॉर्मल लॉस होता है. दिस इज एन एबनॉर्मल लॉस. अगर नॉर्मल लॉस है तो इसके दो इफेक्ट्स है. नॉर्मल लॉस के दो इफेक्ट्स होते हैं. वन इफेक्ट इन माय ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साइड. कौन सा वैल्यू? इनवॉइस प्राइस. Branch stock account credit side at invoice price. And my second effect is it will come in my branch stock adjustment account. But which side? Debit side. And at what value? Invoice price. पूरा वैल्यू कहां पे रिकॉर्ड किया जाएगा? एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड, रिमेंबर. सो नॉर्मल लॉस के सिर्फ दो इफेक्ट्स होंगे. However, if it is abnormal loss,
अगर वो क्लियरली कहते हैं ये एबनॉर्मल लॉस है, रिमेंबर लॉस बाय थेफ्ट दे दिया, तो इन ऑल इट विल हैव 3 इफेक्ट्स। रिमेंबर एबनॉर्मल लॉस के 3 इफेक्ट्स होंगे। फर्स्ट, इन माय ब्रांच स्टॉक अकाउंट credit side at invoice price. In my branch stock account, credit side at invoice price. Second effect will come in my branch stock adjustment account. Which side? Debit side. At what value? Loading. Only the profit element आप वहां पे रिकॉर्ड करोगे, और जो कॉस्ट प्राइस है वो कहां पे जाएगा? इन माय ब्रांच P&L. Debit side, what will you record over there is your cost price of abnormal loss. So shortage में दो possibilities, normal and abnormal. Normal के दो effects, abnormal के 3 effects होंगे, remember. Similar concept comes for surplus also. दो possibility. Suppose if this it is on account of excess of selling price over invoice price. अगर वो क्लियरली कहते कि सरप्लस इज ऑन अकाउंट ऑफ एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर इनवॉइस प्राइस, मतलब ब्रांच ने गुड्स बेचा एट अ प्राइस हायर देन द इनवॉइस प्राइस, ज्यादा वैल्यू पे गुड्स बेचा, तो सिर्फ दो इफेक्ट्स आएंगे उसके. One effect in my branch stock account debit side. और अगर ज्यादा प्राइस पे बेचा है, मतलब ब्रांच ने ज्यादा प्रॉफिट कमाया ना, वो पूरा एक्सेस अमाउंट इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट. सो वेयर विल दैट गो? इन माय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड. So if the surplus is on account of excess of selling price over invoice price, दो effects. But if they tell you it is on account of other reasons, specifically mention नहीं करते हैं that it is on account of excess of selling price over cost price. अगर ये specifically नहीं दिया है, then that surplus will have 2 effects, remember. So 3 effects. First, branch stock account debit side invoice price. Branch stock adjustment account credit side, but only the loading element, remember. Only the loading element. And the third will be in my branch P&L account credit side, and at what value will you record it there? At cost price. If they don't specify, but in maximum cases क्या होता है, it's always of excess of selling price over invoice price. तो सिर्फ आपके दो effects आएंगे, branch stock account debit side and branch stock adjustment account on the credit side, remember. So shortage and surplus, अगर दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो it may be a balancing figure, remember. Accordingly you will have it in your adjustment account, उसका effects. यहाँ पे you will be having an effect of shortage का loading, यहाँ पे surplus होगा आपका. Similarly P&L में हो सकता है, यहाँ पे shortage हो सकता है, यहाँ पे surplus हो सकता है, and so on. So you have closed your stock account. Now close your adjustment account. Close your adjustment account. कभी tally नहीं होगा. Always difference. Always remember the credit side will be more as compared to the debit side. So over here what you will be having is your gross profit, balancing figure. और कहाँ जाएगा वो? In my P&L by gross profit. Close कीजिए P&L, tally नहीं होगा. Difference will be either net profit
or it will be net loss. Debtors close कीजिए, difference is your balance carried down, closing balance of debtors. Close your cash account, difference will represent your closing balance of cash by balance carried down. And close your goods sent to branch account, it will not tally, difference is your cost of goods sent to branch. ये कहाँ पे जाएगा? In your trading account. Your trading account means HO के trading account के credit side पे आ जाएगा, is buy goods sent to branch, remember. So this was domestic branches, dependent in nature. दो methods हमने देखे हैं, one is debtors method and one is stock and debtors method. Dependent branches over. Now we'll revise independent branches. Independent branches. Independent branches किसको कहा जाता है? Those branches which are maintaining proper books of accounts. ब्रांच को पूरा अथॉरिटी दिया जाता है, एक अकाउंटेंट होगा वहां पे, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करो, फॉलो द नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. तो ब्रांच सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा. एचओ ब्रांच के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करता है. एचओ विल रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन द टू ऑफ देम. एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हुआ, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस एचओ रिकॉर्ड करेगा. ब्रांच ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा, एचओ रिकॉर्ड नहीं करता है. ब्रांच ने कैश में गुड्स बेचा, एचओ रिकॉर्ड नहीं करता है. बट सपोज अगर ब्रांच ने क्रेडिट पे गुड्स बेचा और वो कस्टमर जाके पैसा एचओ को देता है, तो एचओ सेज यस वी विल हैव टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमको पैसा मिला ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रांच. डायरेक्ट ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन है, एचओ रिकॉर्ड करेगा. So now you have to understand how the transactions will be recorded in the books of both the parties, HO and branch, remember. So certain transactions which takes place between the two of them and which will be recorded by both the parties now. HO का books, ब्रांच का बुक्स. एचओ सबसे पहले गुड्स भेजेगा ब्रांच को. एचओ सेंड्स द गुड्स टू ब्रांच. सो इन द बुक्स ऑफ एचओ फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज फॉर गुड्स सेंट टू ब्रांच. क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा एचओ? इट विल बी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच. अब ब्रांच को गुड्स मिला तो ब्रांच भी रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज ब्रांच भी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है. सो ओवर हियर द फर्स्ट ट्रांजैक्शन विल बी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ. गुड्स आया, एंट्री विल बी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ टू एचओ. Goods received from HO account debit to HO account. अब इसमें से गुड्स ब्रांच को पसंद नहीं है, डैमेज थे, तो क्या करेंगे? रिटर्न्स कर देंगे. रिवर्स एंट्री, वेरी वेरी सिंपल. In the books of branch, the entry will be HO account debit to goods received from HO. In the books of HO, it will be goods sent to branch account debit to branch account, remember. अब ब्रांच के पास पैसे आएंगे, कैश होगा, कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स, कैश सेल्स, वो सब पैसा किसको मिलेगा? ब्रांच को मिलेगा. उसमें से कुछ पैसा ब्रांच रेमिट करता है, ट्रांसफर करता है एचओ को. सो सेकेंड ट्रांजैक्शन ओवर हियर फॉर एग्जांपल इज कैश remitted by branch to HO. ब्रांच ने पैसा HO को ट्रांसफर किया.
सोचिए ब्रांच के बुक्स में क्या एंट्री आएगा, उन्होंने एचओ को पैसा दिया ना, सो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ब्रांच विल बी एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होगा ना। एचओ को पैसा मिला, किससे पैसा मिला, ब्रांच से पैसा मिला, तो एचओ की एंट्री पास करेगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। सो नॉर्मली एचओ और ब्रांच के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, वो दोनों पार्टीज रिकॉर्ड करते हैं, बोथ ऑफ देम रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। सो लॉजिकली एट द एंड ऑफ द ईयर एचओ के बुक्स में ब्रांच का जो बैलेंस है उतना ही बैलेंस ब्रांच के बुक्स में एचओ का होना चाहिए ना। सो ओवर ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा ना एचओ, ब्रांच भी क्या करेगा, एक ट्रायल बैलेंस बनाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज वो भी तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। इन द बुक्स ऑफ एचओ, दिस इज एचओ's ट्रायल बैलेंस, दिस इज ब्रांच ट्रायल बैलेंस। एचओ के बुक्स में एक अकाउंट होता है ब्रांच अकाउंट, और ब्रांच के बुक्स में एक अकाउंट होगा एचओ अकाउंट। कौन से कॉलम्स है, ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, ट्रायल बैलेंस है ना। नाउ लॉजिकली सोचोगे तो इन द बुक्स ऑफ एचओ ब्रांच अकाउंट शुड हैव अ डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंटिंग ब्रांच से पैसा लेना है। इन द बुक्स ऑफ एचओ branch account should logically have a debit balance representing पैसा लेना है। So let's assume over here 10 lakhs. तो ब्रांच के बुक्स में सोचोगे तो एचओ अकाउंट शुड नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस representing branch has to pay the money to the HO. ब्रांच के बुक्स में एचओ का क्या बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। लेट्स अज्यूम यहां पे बैलेंस है 9 लाख रुपीस का, लॉजिकली सेम होना चाहिए बट नॉर्मली सेम कभी नहीं होता है, दोनों में डिफरेंस होगा। अब यहां पे 10 लाख एचओ कहता है हमको ब्रांच से 10 लाख लेना है, ब्रांच कहता नहीं हमको तो आपको सिर्फ 9 लाख रुपीस पे करना है। कौन सही है कौन गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों सही है दोनों सच बोल रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, इट इज ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन जो एक पार्टी ने रिकॉर्ड किया बट दूसरे पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज उनको उसका नॉलेज नहीं होगा। एक पार्टी ने रिकॉर्ड किया दूसरे ने नहीं किया, एचओ ने किया ब्रांच ने नहीं किया, ब्रांच ने किया एचओ ने नहीं किया, एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ये जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन एचओ बैलेंस एंड ब्रांच बैलेंस, जो डिफरेंस होता है ये नॉर्मली इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दो रीजंस के वजह से हो सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दो रीजन, वन इज वी कॉल इट एज गुड्स इन ट्रांजिट, और सेकेंड हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ कैश इन ट्रांजिट। एक रीजन होगा ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, दूसरा रीजन हो सकता है ऑन अकाउंट ऑफ कैश इन ट्रांजिट। एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजा, एचओ ने एंट्री रिकॉर्ड किया, ब्रांच ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ब्रांच को अभी तक वो गुड्स मिले नहीं है। गुड्स आर ऑन इट्स वे फ्रॉम एचओ टू ब्रांच, इन ट्रांजिट कहा जाता है। एचओ ने एंट्री रिकॉर्ड किया, सही किया, गलत नहीं है। ब्रांच ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया, वो भी सही है क्योंकि उनको गुड्स ही नहीं मिला तो वो एंट्री क्यों रिकॉर्ड करेंगे। So both the parties are right, no one is wrong, remember, and that's why that difference between the HO and branch is on account of goods in transit. Second होगा cash in transit. हो सकता है ब्रांच ने HO को कुछ पैसा रेमिट किया, चेक बनाया, चेक ट्रांसफर कर दिया, they have posted the check to the HO. HO को अभी तक चेक मिला नहीं,
ब्रांच ने चेक इश्यू कर दिया तो ब्रांच ने एंट्री रिकॉर्ड कर दिया कि हमने तो पैसा दे दिया है एचओ को। एचओ को चेक मिला नहीं तो एचओ ने अभी तक एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया। दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। ब्रांच गलत नहीं है, एचओ गलत नहीं है। So it's not that they have made a mistake. No. However, there are certain transactions जो एक पार्टी ने रिकॉर्ड किया है, दूसरे पार्टी ने रिकॉर्ड नहीं किया, because of which you will be having these differences, remember. How do we record these differences? These differences has to be recorded in the books of any one party, remember. किसी एक के बुक्स में आप रिकॉर्ड कीजिए, दोनों के बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने का। अगर गुड्स इन ट्रांजिट का ट्रांजैक्शन है, देन यू विल बी रिकॉर्डिंग इट एज गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू। अगर आप एचओ के बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो, देन इट विल बी टू ब्रांच अकाउंट, और अगर ब्रांच के बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो इट विल बी टू एचओ अकाउंट। रिमेंबर, डेबिट रिमेन्स द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ किसके बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो। एचओ के बुक्स में रिकॉर्ड करो या ब्रांच के बुक्स में, डेबिट सेम रहेगा। गुड्स इन ट्रांजिट वो चेंज नहीं होता है। क्रेडिट डिपेंड्स। अगर आप एचओ के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो ये एंट्री तो इट विल बी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, और अगर ब्रांच के बुक्स में ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो तो इट विल बी गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। सेम अप्लाइज विथ कैश इन ट्रांजिट ऑल्सो। कैश इन ट्रांजिट का एंट्री कैसे आएगा? कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, अगर एचओ के बुक्स में किया तो टू ब्रांच अकाउंट, और अगर ब्रांच के बुक्स में किया तो इट विल बी एचओ अकाउंट। रिमेंबर, और गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट कहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे? इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर बैलेंस शीट। रिमेंबर, Now how do we get these figures? कुछ क्वेश्चंस में वो डायरेक्टली दिया जाता है, मतलब क्वेश्चन रीड करके आपको समझ में आ जाएगा दिस इज द रीजन, बट कहीं कहीं पे क्या होता है ना, हिडन एडजस्टमेंट होगा। अ सिंपल एग्जांपल, गुड्स सेंट टू ब्रांच होगा ना, in the books of HO there will be an account called as goods sent to branch, because whenever HO sends the goods to branch, HO का एंट्री रिकॉर्ड करता है branch account debit to goods sent to branch. Let's say यहां पे वैल्यू was 25 lakhs, मतलब पूरे साल में in full year HO has sent goods worth 25 lakhs to the branch. ब्रांच को गुड्स मिलेगा ना, जब ब्रांच को गुड्स मिलता है तो ब्रांच का एंट्री पास करता है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। सो इन द ट्रायल बैलेंस देयर विल बी एन अकाउंट कॉल्ड एज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ, एंड लेट्स से दिस इज 24 lakhs. Just look at the differences now. एचओ कहता है हमने 25 lakhs का गुड्स भेजा, ब्रांच कहता है नहीं हमको तो सिर्फ 24 lakhs का गुड्स मिला। डिफरेंस कितना हुआ दोनों में? 1 lakh। और ऊपर देखिए ब्रांच और एचओ का डिफरेंस वो भी एग्जैक्ट 1 lakh है ना, तो वो जो डिफरेंस था 1 lakh दैट इज प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि देयर वाज नो कैश इन ट्रांजिट। जो 1 lakh का डिफरेंस था बिटवीन द एचओ बैलेंस एंड ब्रांच बैलेंस इज प्योरली ऑन अकाउंट ऑफ goods in transit. There is no cash in transit involved over here. But suppose if they told you instead of 24 lakhs, this is 24.75 lakhs. एचओ ने कितना भेजा? 25 लाख, लेकिन ब्रांच को कितना मिला? सिर्फ 24.75। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहेंगे? गुड्स इन ट्रांजिट। और वो कितने का होगा? 25,000 का आएगा ना। एचओ ने 25 lakhs का भेजा है, लेकिन ब्रांच को मिला सिर्फ 2475, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है? 25,000 का है। दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। और ओवरऑल डिफरेंस कितना था? 1 lakh। 1 lakh में से गुड्स इन ट्रांजिट कितना है? 25,000। तो बाय डिफॉल्ट आपका कैश इन ट्रांजिट कितना होगा? 75,000 रुपीज। रिमेंबर,
So looking at the figures, you have to find out goods in transit कितना, cash in transit कितना. Goods in transit का figure कैसे मिलेगा? By comparing goods sent to branch in the books of HO and with the goods received from HO in the books of branch. अगर ये दो फिगर सेम है, इसका मतलब है कि नो गुड्स इन ट्रांसिट. अगर डिफरेंट है, दैट मींस द डिफरेंस इज गुड्स इन ट्रांसिट and compare it with the difference with HO and branch balance. अगर वो match होता है, no cash in transit. Match नहीं हुआ, तो balancing figure in the absence of any information will be on account of cash in transit. Remember. In independent branches, what you will have to do is prepare the final accounts over here. लेकिन जब final accounts बनाओगे तो क्या क्या बनाओगे आप? Trading and P&L, but this will be in columnar form. Trading and P&L, this you will prepare it in the columnar form. Remember, columnar form means एक HO का column होगा, एक branch का column होगा. HO and branch column. दोनों का ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, गुड्स सेंट, गुड्स रिसीव्ड, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सब कुछ सेपरेटली दिया होगा. दोनों का सेपरेट ट्रायल बैलेंस दिया होगा आपको. रिमेंबर, उस ट्रायल बैलेंस में से आपको फिगर्स रिकॉर्ड करने हैं. दोनों का सेपरेटली जीपी मिलेगा. टेक द जीपी टू योर पीएनएल. पीएनएल में एक्सपेंसेस दोनों के आपके दिए जाएंगे, इनकम्स दोनों का दिया जाएगा, रिकॉर्ड दोनों का नेट प्रॉफिट मिलेगा आपको. लॉस हुआ तो लॉस मिलेगा. And then you will prepare the balance sheet. But balance sheet में दो कॉलम्स नहीं होते एचओ और ब्रांच के. बैलेंस शीट पूरा ऑर्गेनाइजेशन का एक बनता है, जिसमें एचओ के भी एसेट्स होंगे, ब्रांच के भी एसेट्स होंगे. सो बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, इट इज ऑलवेज इन अ कंबाइंड फॉर्म. दोनों का मिला के बैलेंस शीट बनता है. यस, बाइफिकेशन इनर कॉलम में बता सकते हो. लाइक स्टॉक, तो एचओ का क्लोजिंग स्टॉक कितना, ब्रांच का क्लोजिंग स्टॉक कितना, इनर कॉलम, टोटल आउटर कॉलम. एचओ के डेटर्स इनर कॉलम, ब्रांच का डेटर्स इनर कॉलम, टोटल डेटर्स आउटर कॉलम. एचओ का असेट इनर कॉलम, ब्रांच का असेट इनर कॉलम, टोटल आउटर कॉलम. वो अलाउड है, बट एक कॉलम एचओ का, एक कॉलम ब्रांच का, ऐसा नहीं होता है. दोनों का नेट प्रॉफिट आप बैलेंस शीट में ले लीजिए. क्लोज द बैलेंस शीट, इट शुड टैली. रिमेंबर, independent branches. And then the next part over here is foreign branches. Foreign branches are branches situated in a different country altogether. Normally HO कहां पे होगा? इंडिया में होगा, लेकिन उनके ब्रांचेस कहां पे होंगे? फॉरेन कंट्री में. यूएस में ब्रांच हो सकता है, लंदन में ब्रांच हो सकता है. ब्रांचेस इन अ फॉरेन कंट्री. फॉरेन ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. फॉरेन ब्रांचेस आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट. दे कैन नेवर बी डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मतलब वो वहां पे नॉर्मल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एंड दे विल बी फॉलोइंग द नॉर्मल डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग. प्रॉपर अकाउंटिंग होगा. बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज foreign branches which are situated in a foreign country will be maintaining books of accounts in the currency of the country in which it is situated. अगर ब्रांच यूएस में है तो यूएस ब्रांच जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, उसमें जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो वो डॉलर्स में होगा, इंडियन रुपीस में वहां पे बुक्स नहीं मेंटेन होगा. अगर एचओ का ब्रांच लंदन में है, एचओ इंडिया में, ब्रांच कहां पे? लंदन में है, तो लंदन ब्रांच जब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो इंडियन रुपीस में नहीं करेंगे. दे विल बी रिकॉर्डिंग इन देयर करेंसी, स्टर्लिंग पाउंड. रिमेंबर, जिस कंट्री में आपका ब्रांच है वो वहां पे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे इन देयर करेंसी, नॉट इन द करेंसी ऑफ द एचओ. रिमेंबर,
सो ब्रांच प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता है. एंड ऑफ द ईयर दे विल क्लोज देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फिर ब्रांच क्या करेगा, ट्रायल बैलेंस बनाएगा. बट ट्रायल बैलेंस ऑफ फॉरेन ब्रांच will be in a foreign currency. यूएस में ब्रांच है तो उनका ट्रायल बैलेंस यूएस डॉलर्स में होगा. यूके में ब्रांच है तो उनका ट्रायल बैलेंस स्टर्लिंग पाउंड में होगा. तो ब्रांच अकाउंट्स मेंटेन करेगा, उनके करेंसी में मेंटेन करेगा. एंड ऑफ द ईयर बुक्स क्लोज करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे इन देयर करेंसी एंड देन दे विल सेंड दैट ट्रायल बैलेंस टू इंडिया. एचओ इंडिया में ना, तो एचओ के अकाउंटेंट के पास उनका खुद का एचओ का ट्रायल बैलेंस होगा जो रुपीस में होगा और ब्रांच से जो ट्रायल बैलेंस आया वो फॉरेन करेंसी में होगा. डॉलर्स और रुपीस आप ऐड करके नया फाइनल अकाउंट्स नहीं बना सकते हो. तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जो फॉरेन ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है जो फॉरेन करेंसी में है इसको आपको कन्वर्ट करना है. Convert it into reporting currency. इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, रिमेंबर. और ये कन्वर्जन कैसे होता है? दिस कन्वर्जन इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सचेंज रेट्स. $1 कितना रुपीस, एक स्टर्लिंग पाउंड कितना रुपीस, वो एक्सचेंज रेट के बेसिस पे आपको ये कन्वर्जन करना पड़ेगा, रिमेंबर. तो सबसे पहला काम होता है आपका फॉरेन ब्रांच को ट्रायल बैलेंस विच इज इन फॉरेन करेंसी कन्वर्टेड इनटू इंडियन रुपीस, दैट इज द रिपोर्टिंग करेंसी बिकॉज एचओ इज बेस्ड इन इंडिया, रिमेंबर. फॉर दिस कन्वर्जन पर्पस ये जो फॉरेन ब्रांचेस होते हैं इसको बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं. इंटीग्रल इन नेचर, नॉन इंटीग्रल इन नेचर. इंटीग्रल ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस विच आर डिपेंडेंट ऑन द एचओ, मतलब वो एचओ के सारे डिसीजंस फॉलो करते हैं, सारे डिसीजंस एचओ उसके बिहाफ पे लेता है. नॉन इंटीग्रल में क्या होता है, एचओ गिव्स अ लॉट ऑफ पावर्स टू द ब्रांच, आप आपके खुद के डिसीजंस ले लीजिए. क्वेश्चंस में क्लियरली मेंशन किया जाता है कि ब्रांच इज एन इंटीग्रल ब्रांच और इट इज अ नॉन इंटीग्रल ब्रांच, रिमेंबर. और अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो आप क्या करोगे, इट विल टेक इट एज एन इंटीग्रल ब्रांच, रिमेंबर. मैक्सिमम कन्वर्जन कॉन्सेप्ट दोनों में सेम है विद स्लाइट डिफरेंस हियर एंड देयर, यू कैन से. कुछ ऐसे आइटम्स है जहां पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, अदरवाइज इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल का कन्वर्जन विल बी डन ऑन अ सिमिलर बेसिस, रिमेंबर. सो नाउ conversion of foreign branch trial balance. Integral, non-integral. Now, first item is opening stock. ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा एक्सचेंज रेट यूज करोगे? देन ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट करने के लिए आप यूज करोगे ओपनिंग एक्सचेंज रेट.
Opening exchange rate means the exchange rate prevailing on the very first day of the year. 1 अप्रैल को अगर ईयर स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल को क्या एक्सचेंज रेट था वो आप यूज करोगे. सो ओपनिंग एक्सचेंज रेट हैज टू बी फॉलोड. ऑल रेवेन्यू आइटम्स, रेवेन्यू आइटम्स में परचेसेस आएगा, सेल्स आएंगे, एक्सपेंसेस आएंगे, इनकम्स आएंगे, ये सारे आपके रेवेन्यू आइटम्स है, बेसिकली ट्रेडिंग एंड पीएनएल आइटम्स. रिमेंबर, इसको आप कन्वर्ट करोगे विद द हेल्प ऑफ एवरेज एक्सचेंज रेट. Average exchange rate is the exchange rate prevailing on an average throughout the year. नॉर्मली क्वेश्चन में दिया जाता है. अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप एवरेज रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? ओपनिंग रेट प्लस क्लोजिंग रेट डिवाइडेड बाय 2 will give you the average rate. Remember, so all revenue items at average rate. Exceptions: goods received from HO. ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में एक आइटम होगा कॉल्ड एज गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO. इसको आप एवरेज रेट से कन्वर्ट नहीं करोगे. ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच में अगर गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO, तो सोचिए HO की ट्रायल बैलेंस में एक सिमिलर आइटम होगा कॉल्ड एज गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो इंडियन रुपीज में होगा. और ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? HO का अकाउंटेंट कर रहा है. तो HO के पास खुद का ट्रायल बैलेंस तो होगा ना, उसमें फाइंड आउट कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच. वो वैल्यू यहां पे लेना है, गुड्स सेंट टू ब्रांच वैल्यू, whether it is integral or non-integral. Remember. Fourth, in the books of branch there will be an account called as HO account ना. और याद है तो मैंने कहा था कि ब्रांच के बुक्स में HO अकाउंट नॉर्मली ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट पेएबल टू HO. इसको आपको एक्सचेंज रेट अप्लाई नहीं करोगे. बट रिमेंबर, HO के बुक्स में भी एक अकाउंट को होगा जिसको हम कहते हैं ब्रांच अकाउंट. It will always have a debit balance representing amount receivable from the branch. Remember. So HO अकाउंट को कन्वर्ट करने के लिए यहां पे आप कौन सा वैल्यू लोगे? ब्रांच अकाउंट वैल्यू. किसके बुक्स में से मिलेगा ये आपको? HO के बुक्स में से मिलेंगे. So they will tell you in the question, in the books of HO, branch account had a debit balance of this much. Same value has to be considered for conversion of HO account. Remember. Balance sheet items. Except fixed assets. बैलेंस शीट आइटम्स. अब बैलेंस शीट आइटम्स में क्या क्या हो सकता है? डेटर्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कैश और बैंक हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है, लोन हो सकता है. इन सब के लिए आप कौन सा यूज रेट करोगे? क्लोजिंग रेट फॉलो करोगे. विच रेट विल यू फॉलो? Closing rate. Closing rate means the rate prevailing on the last day of the accounting year. अगर 31 मार्च को आपका ईयर एंड हो रहा है तो 31 मार्च को क्या एक्सचेंज रेट था वो आप कंसिडर करोगे फॉर कन्वर्जन ऑफ ऑल बैलेंस शीट आइटम्स एक्सेप्ट फिक्स्ड असेट्स आइटम. फिक्स्ड असेट्स आइटम्स under integral system of accounting, fixed assets items have to be converted at the exchange rate prevailing on the date the fixed assets were purchased. जिस दिन आपने ये फिक्स्ड असेट्स खरीदा, हो सकता है 2 साल पहले, हो सकता है 5 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले.
जिस दिन आपने खरीदा उस दिन एक्सचेंज रेट क्या था, वो रेट पे आपको कन्वर्ट करना है और वो क्वेश्चन में क्लियरली दिया जाएगा. It will be given to you that fixed assets was purchased on so and so date, and on that date the prevailing exchange rate was so much. So over here under integral, rate on the date fixed assets was purchased. जिस दिन फिक्स्ड एसेट्स खरीदा उस दिन क्या रेट था, वो रेट आपको अप्लाई करना है. Whereas under non-integral system, it has to be converted on the basis of closing rate, remember. This is a major difference between integral conversion and non-integral conversion. अब तक ऊपर का सब आइटम्स देखोगे तो सेम था. फिक्स्ड एसेट्स में डिफरेंस आता है. फिक्स्ड एसेट्स इंटीग्रल में इज कन्वर्टेड ऑन द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट द फिक्स्ड एसेट्स वाज परचेज्ड, एंड नॉन इंटीग्रल में इट विल बी कन्वर्टेड ऑन द क्लोजिंग रेट, रिमेंबर. अब कन्वर्जन करोगे तो इट विल नेवर टैली. डिफरेंस आएगा. Under integral, it goes to my profit and loss account. And under non-integral, it goes to foreign currency translation reserve. एक separate reserve create होता है in the name of foreign currency translation reserve. इंटीग्रल होगा तो पीएनएल में डिफरेंस चला जाएगा. नॉन इंटीग्रल होगा तो इट कम्स अंडर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व करके एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना है. तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है ब्रांच का ट्रायल बैलेंस विच वाज इन फॉरेन करेंसी इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, बेसिकली इंडियन रुपीस, बिकॉज एचओ इंडिया में होगा. आपको एक्सचेंज रेट्स दिए जाएंगे. ओपनिंग रेट क्या था, क्लोजिंग रेट क्या था, एवरेज रेट क्या था. अगर एवरेज रेट नहीं दिया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. And in case of integral system of accounting, they will also give you one extra rate. What was the exchange rate prevailing on the date when the fixed asset was purchased? आपको सारे ट्रायल बैलेंस आइटम्स को कन्वर्ट करना है इनटू रिपोर्टिंग करेंसी, मेकिंग यूज ऑफ दीज एक्सचेंज रेट्स. रिमेंबर, क्लोज करो, टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा. Integral system में the difference goes to P&L, and non-integral system it goes to your foreign currency translation reserve. Prepare a normal trading P&L and balance sheet if asked for. Trial balance convert करने के बाद, remember. So foreign branch very simple. Conversion के लिए exchange rates याद होना चाहिए. Convert कर दीजिए and then prepare the final accounts. Normal principle से, nothing difficult. So with this we complete the revision of branch accounts chapter. The next chapter that we are going to revise is company final accounts. In this chapter we are going to revise how to prepare the final accounts of a company, which will comprise of your P&L and a balance sheet, but in a vertical format, schedule 3, remember. Plus there are various small provisions in this particular chapter which we are going to revise. Managerial remuneration, how to calculate your effective capital, how to calculate the dividend payable in case of insufficient profits or losses, and so on. So this particular chapter will comprise of your financial statements plus small areas. So first let's discuss the small areas of this particular chapter. First area that going to be discussed is managerial remuneration.
how much remuneration the company can pay to its managers, your managing directors, your whole-time directors, part-time directors is what we are going to learn over here. There is a restriction as per the Companies Act as to the maximum remuneration that you can pay to your managerial personnel. These percentages you are supposed to understand, remember, and apply it in the question. So over here, situations, maximum remuneration. Over here. First, if there is only one managing director or whole-time director, सिर्फ एक मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर अगर है, then the maximum remuneration that can be paid to that one person is 5% of net profit. इससे ज्यादा नहीं दे सकते हो. Second situation, if there are more than one managing director or whole-time directors, more than one, 2, 3, 4, 5 and so on, all of them put together, the maximum is 10% of net profit. दो जन है तो दोनों को मिला के 10%, तीन लोग है तो तीनों का टोटल 10% होना चाहिए. It's not per person, remember. Third possibility is in case of part-time directors. How much remuneration can be paid to part-time directors? Whole-time directors, part-time directors, different concept altogether. In case of part-time directors, if there is a managing director or whole-time director, अगर कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, एंड इफ यू ऑल्सो हैव अ पार्ट टाइम डायरेक्टर, तो मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर का ऊपर हमने देख लिया 5% और 10%, बट इन दैट केस पार्ट टाइम डायरेक्टर हैज टू बी पेड ओनली 1% ऑफ net profit as the remuneration. If there is no managing director or whole-time director, मैनेजिंग या होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इसका मतलब है कि ज्यादा काम पार्ट टाइम डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा. मैक्सिमम रेम्यूनरेशन दैट यू कैन पे टू देम इज 3% ऑफ नेट प्रॉफिट. This 1% and 3% is not per part-time director. Per director नहीं है. जितने भी part-time directors है, 1, 2, 3, 4, सबका मिला के ये percentage apply करने का. And the last is all of them. Whole time plus part-time director सबको मिला के maximum 11% of net. Percentages आपको याद रखने हैं. If there is only one managing director or whole-time director, 5% of net profit. More than one managing director or whole-time directors, 10% of net profit. Part-time directors, if there is a managing director or whole-time director, then only 1%. If there is no managing director or whole-time director, 3%, and all of them put together, it's 11%. ये सारे परसेंटेजेस है नेट प्रॉफिट के. सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कौन सा नेट प्रॉफिट? शुड इट बी योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, शुड इट बी योर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और समथिंग एल्स? द कंपनीज एक्ट कहता है कि यहां पे जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो इट हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑफ नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट. नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198 of the Companies Act. तो यहां पे नेट प्रॉफिट आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले आप कंसीडर करोगे इनकम्स.
198 का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त सबसे पहले क्या कंसीडर करोगे? इनकम्स। इनकम्स में सबसे पहले आएगा gross profit, and you all know how to calculate the gross profit, remember. Next, what you will consider over here is all regular revenue incomes. इसमें आपका डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, कमीशन रिसीव्ड आएगा, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स आएगा, नॉर्मल P&L क्रेडिट आइटम्स, रिमेंबर. To this you add subsidy received from government. और कौन सा सब्सिडी बेसिकली कंसीडर करोगे? योर रेवेन्यू सब्सिडी विच इज रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड फोर्थ इज revenue profit on sale of fixed asset. What is important is the word revenue profit. Whenever you sell your fixed assets, on sale of fixed assets, there may be a profit, there may be a loss. Loss है तो भूल जाओ. लेकिन if there is a profit, there are two possibilities. You can have a revenue profit, and in certain cases you may also have a capital profit. जरूरी नहीं है every time you earn a profit there will be capital profit also. Profit revenue confirm, but capital है या नहीं वो find out करना है. When does the company earn capital profit on sale of fixed asset? Capital profit will be earned if the asset is sold at a value more than the original cost. अगर ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा प्राइस पे आपने एसेट बेचा तो जो एक्सेस अमाउंट रियलाइज किया ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉस्ट इज व्हाट यू कॉल इट एज कैपिटल प्रॉफिट. रिमेंबर, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल. बिल्डिंग premises. Is it a depreciable asset? The answer is yes. हम बिल्डिंग पे हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं. So let's take an instance. First possibility, second possibility afterwards. Original cost. बिल्डिंग खरीदा आपने 50 लाख में. PFD, provision for depreciation. It is also known as accumulated depreciation. ये एक साल का डेप्रीसिएशन नहीं है. दिस इज accumulated total depreciation on the building right from the time it was purchased till the end of the current year. ये एक साल का नहीं, अगर 10 साल पहले आपने खरीदा है तो ये accumulated depreciation क्या रिप्रेजेंट करेगा? 10 साल का टोटल डेप्रीसिएशन. रिमेंबर, let's assume the PFD is 10 lakh rupees. PFD is 10 lakh rupees. तो बैलेंस जो 40 lakhs आएगा इसको हम क्या कहते हैं? WDV, रिटन डाउन वैल्यू. और मान लो ये आपने बेच दिया, सेलिंग प्राइस 46 lakhs. SP सेलिंग प्राइस, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 6 लाख का प्रॉफिट कमाया. और ये पूरा प्रॉफिट आपका गिना जाएगा रेवेन्यू इन नेचर. पूरा 6 लाख रेवेन्यू प्रॉफिट. दिस विल कम इन द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198. रिमेंबर. अब सिमिलरली एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं. चलिए, ओरिजिनल कॉस्ट विल कीप इट सेम 50 lakhs. PFD 10 lakhs. So my WDV is 40 lakhs. But let's take a case where you sold it for, हमने बेचा for 60 lakhs. You sold it for 60 lakh rupees, remember. So in that case, you made a profit of how much? 20 lakhs. अब ये पूरा 20 लाख का प्रॉफिट आपका रेवेन्यू इन नेचर नहीं है. इस प्रॉफिट को आप डिवाइड करोगे दो पार्ट्स में, दैट इज रेवेन्यू एंड कैपिटल.
कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा? द एक्सेस अमाउंट रियलाइज्ड ओवर एंड अबव द ओरिजिनल कॉस्ट। आपका ओरिजिनल कॉस्ट 50 लैक्स, आपने बेचा 60 लैक्स में, कितना ज्यादा मिला एज कंपेयर टू व्हाट यू हैड ओरिजिनली पेड? 10 लाख एक्स्ट्रा मिला। 60 माइनस 50 वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा? 10 लैक्स। तो सेक्शन 198 का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त यू विल कंसिडर ओनली 10 लैक्स ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट 10 लैक्स का कंसिडर नहीं करना है आपको, रिमेंबर। सो दीज आर योर इनकम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका टोटल कीजिए, इसमें से आप माइनस करेंगे आपके एक्सपेंसेस, इसमें से आप माइनस करेंगे आपके एक्सपेंसेस। फर्स्ट, ऑल रेगुलर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Compensation paid for breach of contract। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्रेक किया हमने कॉन्ट्रैक्ट, तो अपने को कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ा। दैट इज योर एक्सपेंस अलाउड एज अ डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। Donation to recognized charitable trust। डोनेशन दिया, recognized होना चाहिए, allowed as a deduction। Directors fees, रेम्यूनरेशन माइनस नहीं करने का। जानबूझ के कभी कभी क्वेश्चन में देते एमडी रेम्यूनरेशन पेड, डायरेक्टर्स फीस भी देंगे, एमडी रेम्यूनरेशन पेड भी देंगे। तो आपको सिर्फ डायरेक्टर्स फीस पेड माइनस करना है, एमडीज रेम्यूनरेशन नहीं। वो तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो माइनस नहीं करोगे। बैड डेट्स, bad debts is allowed as a deduction but RDD is not allowed as a deduction। एक्चुअल लॉस जब वो अलाउ करते तो प्रोविजन क्यों अलाउ करेंगे? सो नो प्रोविजन फॉर एक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉसेस विल बी अलाउड एज अ डिडक्शन। आरडीडी माइनस नहीं करने का। फ्यूचर में जब वो लॉस होगा, बैड डेट्स होगा, तो उस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम माइनस कर देंगे, अभी नहीं करने का आरडीडी माइनस। Depreciation, but as per schedule 2 of the Companies Act, इनकम टैक्स सेक्शन 2 का 32 का डिप्रीसिएशन माइनस नहीं करने का। दिस इज एज पर कंपनीज एक्ट शेड्यूल 2, रिमेंबर। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस इफ एनी माइनस कीजिए। इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस कीजिए। ये जो आंसर आएगा, दिस इज योर नेट प्रॉफिट एज पर सेक्शन 198। इस नेट प्रॉफिट का 5%, 10%, 1%, 3%, 11% is the remuneration that you will pay to the managerial personnel, remember. So first, managerial remuneration, percentage of net profit as per section 198. But suppose if a company incurs a loss, remember it is percentage of net profit, not percentage of net loss. अगर लॉस है तो आप परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट तो पे नहीं कर सकते हो। सो दैट डजंट मीन कि आप कुछ रेम्यूनरेशन पे नहीं करोगे, फिर भी रेम्यूनरेशन पे किया जाएगा, बट इट इज कैलकुलेटेड इन अ डिफरेंट मैनर। सो रेम्यूनरेशन
in case of losses. Remuneration in case of losses, remember. In such cases, remuneration will be paid on the basis of effective capital. It will be paid on the basis of effective capital. Effective capital, in simple terms, it means long-term funds invested in the business. Long-term funds invested in the business को हम कहते हैं effective capital, remember. So you will have to first find out what is the effective capital of the company. Based on the effective capital, the remuneration is fixed or decided, not as a percentage of net profit, but remuneration का amount fix कर दिया है और उसके basis पे इफेक्टिव कैपिटल फाइंड आउट करो, फिर आपको मिलेगा कि कितना रेम्यूनरेशन आपको पे करना है. सो हाउ डू वी गेट दोस फिगर्स ओवर हियर? इफेक्टिव कैपिटल, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन. अगर किसी कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है और लेस देन 5 CR, अगर किसी कंपनी का इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है और लेस देन 5 CR, maximum remuneration that you can pay them is only 6060 lakhs. If the effective capital is 5 CR or more, but less than 100 CR, it is 5 CR or more, but less than 100 CR, then maximum remuneration that you can pay them is 8484 lakhs, remember. Third alternative, if it is 100 CR or more, but less than 250 CR, it is 100 CR or more, but less than 250 CR, maximum remuneration that you can pay them is 120 lakhs, which is 1 crore 20 lakhs. इससे ज़्यादा नहीं. And the fourth alternative is, if the effective capital is 250 CR or more, then it goes on. Then the maximum remuneration that you can pay them is 120 lakhs plus 120 lakhs is 1 crore 20 lakhs plus 0.01% of effective capital over 250 CR. 1 crore 20 lakhs plus 0.01% of the effective capital over 250 CR. So let's take a very simple example. Suppose if the effective capital is 400 crores. इफेक्टिव कैपिटल कितना है? 400 crores है. तो ये 400 crores को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, up to 250 crores and excess. तो excess कितना होगा? 150 crores होगा ना. ये 250 crores पे आप कितना पे करोगे? 1.2 CR और 120 lakhs. 120 lakhs is as good as 1 crore 20 lakhs. और ये जो excess 150 crores है, इसका आप कितना अप्लाई करोगे? 0.01% आपको अप्लाई करना है. How much are you going to apply? 0.01%. So let's calculate.
Are you getting it as 1,50,000? दोनों को ऐड कीजिए. It will be 1,21,50,000. This is how you calculate remuneration in case of losses. It is paid on the basis of effective capital. Effective capital means long-term capital invested in the business, remember. So now you have to remember these figures. कि अगर इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव है लेस देन 5 CR देन वी कैन टू मेक मैक्सिमम 60 lakhs एंड सो ऑन. ये आपको याद होना चाहिए. So now we will see how to calculate the effective capital. Calculation of effective capital. Now for this purpose, the companies are basically classified into two categories. Is it an investment company? Is it a company other than investment company? Investment companies are those companies जिसका main business है to make investments in shares, debentures, bonds. मेन बिजनेस उनका वही है. शेयर्स खरीदो बेचो, डिबेंचर्स खरीदो बेचो, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करते रहो. सिंपल एग्जांपल विल बी म्यूचुअल फंड कंपनीज. कंपनीज अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में कौन से कंपनीज आएंगे? अपने नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, अपना नॉर्मल ट्रेडिंग कंपनीज, जिनका मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं है. उनका मेन बिजनेस होगा प्रोडक्शन, उनका मेन बिजनेस होगा ट्रेडिंग ऑफ गुड्स. रिमेंबर, यस, उनके पास सरप्लस फंड्स होगा, और सरप्लस फंड्स उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, वो अलग बात है, बट दैट इज नॉट देयर मेन बिजनेस. रिमेंबर, so over here you need to find out what is the effective capital in case of an investment company and in case of a company other than an investment company. Remember, so over here two categories: investment company other than investment company. अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी में सिंपल कॉन्सेप्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनीज, जिसका मेन बिजनेस है गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेचना एंड सो ऑन. अब इफेक्टिव कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? फर्स्ट आप क्या कंसीडर करोगे? पेड अप शेयर कैपिटल. Now when you say paid up share capital, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, बट व्हाट विल नॉट कम इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. पब्लिक हैज अप्लाइड फॉर द शेयर्स, कंपनी को पैसा मिला, एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड, बट कंपनी ने अभी तक अलॉटमेंट नहीं किया है, तो उसको हम शेयर कैपिटल नहीं कह सकते हैं. रिमेंबर, दैट रिमेन्स इन एन अकाउंट कॉल्ड एज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. वो शेयर कैपिटल नहीं है, तो वो कंसिडर नहीं करोगे. ओनली आफ्टर द शेयर्स आर अलॉटेड इट गेट्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल. तब तक वो एप्लीकेशन अकाउंट में रहता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं जाता है. सो पेड अप शेयर कैपिटल एक्सेप्ट शेयर एप्लीकेशन मनी. Second is you will add all reserves and surplus. When you say all reserves and surplus, it will include your capital reserves, revenue reserves, as well as statutory reserve, except one reserve. एक रिजर्व आप कंसिडर नहीं करोगे, and that is your revaluation reserve.
वो आप कंसिडर नहीं करोगे बिकॉज दैट इज नॉट अ रियलाइज्ड प्रॉफिट, इट्स मियरली अ बुक एंट्री, रिमेंबर. So don't consider revaluation reserve. Plus all long term borrowings. All long term borrowings have to be considered irrespective whether it is secured or unsecured. सब कुछ लेना है, debentures, bank loan, etc. That has to be considered over here, remember. So 3 figures to be added: share capital paid up, equity plus preference, all reserves and surplus excluding revaluation reserve, and all long-term borrowings. Remember, these are long-term funds received which is invested in the business, remember. इसमें से आप माइनस करोगे आपके miscellaneous expenditure items. If you have any miscellaneous expenditure items, basically losses which were not written off, which are treated as a deferred revenue expenses, which you are going to write it off over a period of time, the वो losses आपको minus करना है. Because ultimately those losses are to be borne by the shareholders, owners of the company, remember. And you will minus investments by a non-investment company. Investments by a non-investment company. इन्वेस्टमेंट कंपनी होगा तो ये इन्वेस्टमेंट्स माइनस नहीं करने का. इन्वेस्टमेंट कंपनी का बिजनेस ही क्या है? पब्लिक से जो पैसा मिला उसको इन्वेस्ट करना है. थिंक ऑफ अ म्यूचुअल फंड कंपनी. What is the job of a mutual fund company? Whatever amount they receive from the general public, they will be investing it in various securities ना. कुछ पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. उनका मेन बिजनेस वही है. उनका बैलेंस शीट देखोगे तो मेजर एसेट आपको इन्वेस्टमेंट्स ही मिलेगा. तो उनके केस में इन्वेस्टमेंट्स माइनस नहीं करने का, बिकॉज उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, रिमेंबर. Whereas other than investment company, जिसको हम नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उनका मेन बिजनेस क्या है? रॉ मटेरियल खरीदो, फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करके बेच दो. ऐसे कंपनीज के पास भी सरप्लस फंड्स होता है. ऐसे कंपनीज भी इन्वेस्टमेंट्स करती है. बट अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया मतलब वो पैसा बिजनेस के बाहर चला गया, मतलब वो पैसा उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं किया है. दैट्स व्हाई उनके केस में आप क्या करोगे? माइनस करोगे नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनीज में व्हाटएवर इन्वेस्टमेंट्स वर मेड बाय देम, बिकॉज दैट मनी इज नॉट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. फाइंड आउट द बैलेंस. दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज effective capital. देखिए ये क्या आंसर है. If this answer is positive, then find out whether it is less than 5 lakhs, it between 5 and 100, 100 to 250 or more than 250. Accordingly आपको managerial remuneration pay करना है. Loss-making companies, you cannot pay remuneration as a percentage of net profit. That's why this effective capital concept comes into existence, remember. So, managerial remuneration, profit making, as well as loss-making companies ka we have looked into. Now, the next concept is payment of dividend. Payment of dividend to equity shareholders. Company will pay dividend to the equity shareholders provided the company has earned profits, and that to reasonable profit, जिसमें से वो आराम से dividend pay कर सकते हैं. But suppose in a particular year company का profits कम हो गया, or if they incur a loss, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं कि इस साल अपना प्रॉफिट्स कम हुआ है या हमने लॉस किया तो हम आपको डिविडेंड
नहीं देंगे। टू विच द शेयर होल्डर्स टेक एन ऑब्जेक्शन, ये कहते हैं गलत है। आप हमको पिछले 25 साल से हर साल डिविडेंड देते आ रहे हो, हमको आदत लग गई, हमको करंट ईयर में भी डिविडेंड चाहिए। कम प्रॉफिट हुआ तो क्या हुआ, लॉस हुआ तो क्या हुआ, आपके पास अर्लियर ईयर में जो प्रॉफिट्स कमाया था वो अभी भी आपके पास कुछ प्रॉफिट्स है इन द नेम ऑफ जनरल रिजर्व, इन द नेम ऑफ रिजर्व फंड, आपके पास उसमें बैलेंसेस है ना, उसमें से आप हमको डिविडेंड दीजिए, बट हमको डिविडेंड चाहिए। So in certain cases, if the company has earned less profit or they have incurred any losses, they may have to pay dividend to the shareholders. That is what you call it as dividend paid in case of insufficient profits. Shareholders का विषय देना पड़ेगा because they are the real owners of the company, remember. बट यहां पे जब आप डिविडेंड पे करोगे तो देयर आर सर्टेन कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, रिमेंबर। Only if these conditions are fulfilled, the company will be able to pay dividend to the shareholders in case of insufficient profits or losses. अगर ये conditions fulfill नहीं होता है, company cannot pay dividend to the shareholders, remember. So what are these conditions? First condition, rate of dividend cannot be more than the average rate of last 3 years. पिछले 3 साल का जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा रेट पे डिविडेंड आप करंट ईयर में नहीं पे कर सकते हो। सेम रेट अलाउड है, कम रेट अलाउड है, ज्यादा अलाउड नहीं है। Let's say in 1 year the rate was 20%, second year it was 24%, and third year it was, let's say, 18%. तो अगर आप इसका एवरेजिंग करते हो तो it will be 20 plus 24 plus 18 divided by 3. 20 plus 24 plus 18 divided by 3. Are you getting it as 20.66 recurring percentage? The Companies Act क्या कहता है? Insufficient profits है, आपको डिविडेंड पे करना है, कीजिए, बट करंट ईयर का रेट 20.66% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे ज्यादा नहीं, इससे कम रेट पे करना है, आप पे कीजिए। एंड कंपनी विल अनाउंस, लेट्स से कंपनी अनाउंसेस 15%। करंट ईयर का डेट ऑफ डिविडेंड क्या कंपनी ने अनाउंस किया? 15%। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड से मतलब है, उनको डिविडेंड चाहिए, 15% दो, 18% दो, उससे उनको नहीं फर्क पड़ता है, उनको डिविडेंड चाहिए। तो 15% अगर कंपनी पे करती है, फाइन। लेस देन 20.66, 20 भी पे किया तो भी चलेगा, रिमेंबर। Now, whenever dividend is paid, remember, naturally profits will be utilized. आपके profits कम हो जाएंगे ना, क्योंकि आप dividend दे रहे हो, dividend दे रहे हो मतलब distribution of profits हो रहा है। आप profits बांट रहे हो शेयर होल्डर्स को, तो by default आपका बैलेंस इन P&L, बैलेंस इन divisible profits, also known as free reserves, also known as revenue reserves, कम हो जाएगा, remember. तो second condition क्या कहता है? Second condition says that divisible profits utilized should not be more than 10% of paid up share capital plus free reserves
also known as revenue reserves, also known as divisible profits. अगर आप डिविडेंड दोगे मतलब आप प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, दैट मींस बैक नेचुरल आपका डिविजिबल प्रॉफिट्स कम हो जाएगा. कितना कम हो जाएगा? अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स अलाउड. उससे ज्यादा रिडक्शन नहीं होना चाहिए, रिमेंबर. एंड द थर्ड कंडीशन इज बैलेंस इन divisible profits after utilization should not be less than 15% of paid up share capital. Balance in divisible profits after utilization. Reserves use करने के बाद the balance in divisible profits, that is your free reserves, should not be less than 15% of your paid up share capital. Let's try and understand these conditions with the help of certain figures, remember. Let's say company का equity share capital is 10 CR. 10% preference share capital is 5 CR. आपका general reserve है 100 CR and current year's net profit after tax. Current year's net profit after tax was, let's say, 1.2 CR. Now, current year का net profit after tax is only 1.2 CR. और इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हैं हमको डिविडेंड चाहिए. कितना डिविडेंड वो मांग रहे? हमने देखा था ना, 15% मांग रहे. सो सोचिए, कैलसी पे कैलकुलेट करके देख लीजिए. 10 करोड़ का 15% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.5 करोड़. 1.5 करोड़ का आएगा ना डिविडेंड. प्रॉफिट कितना है? 1.2 CR ओनली. But remember, before you pay dividend to the equity shareholders, you have to pay dividend to the preference shareholders. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 5 करोड़ का है. उनका रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 10% है. 10% ऑफ 5 करोड़ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 50 लाख का डिविडेंड आ गया ना. तो 1 करोड़ 20 लाख में से तो आपको पहले देना है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को 50 लाख का डिविडेंड देना है. और वो देने के बाद कंपनी के पास बैलेंस तो सिर्फ 1.2 CR बचेगा और शेयर होल्डर्स मांग रहे 15%. सो डू द कैलकुलेशन. करंट ईयर्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 1.2 CR. इसमें से पहले माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड. 10% of 5 CR, 50 lakhs, can I call it as 0.5 CR? So आपका बैलेंस कितना बचेगा? बैलेंस नेट प्रॉफिट इज ओनली 70 lakhs, that is 0.7 CR. Equity dividend at the rate of 15% वो मांग रहे हैं ना. 15% किसका? शेयर कैपिटल का, इक्विटी शेयर कैपिटल. 10 करोड़ का 15% इज 1.5 करोड़. सो यू हैव अ शॉर्टेज. कितने का शॉर्टेज है? 80 lakhs का, दैट इज 0.8 CR.
तो डायरेक्टर्स क्या कहेंगे, अरे प्रॉफिट ही नहीं है, सिर्फ 1,20,00,000 है, उसमें से भी अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है तो हमको पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा, 50 लाख तो उनका चला जाएगा प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बचेगा 70 लाख और आपको 1.5 करोड़ का डिविडेंड चाहिए, तो 80 लाख का प्रॉफिट शॉर्ट है, कहां से देंगे आपको? व्हाट द इक्विटी शेयर होल्डर्स विल टेल, आपके पास देखिए रेवेन्यू रिजर्व है 100 करोड़ का, हम तो सिर्फ आपसे 80 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, ये 100 करोड़ में से आप हमको 80 लाख दे दो, एंड द कंपनी हैज टू गिव प्रोवाइडेड द कंडीशंस आर फुलफिल्ड. So first condition 15% agreed. Why? Because it is less than average of the last 3 years. Second condition क्या कहता है? First condition, condition 1 fulfilled. 15% is less than 20.66%. सेकेंड कंडीशन, आपको कितना यूटिलाइज करना है, शॉर्टेज कितना है, सिर्फ 80 लाख का है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व इज 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स. आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 15 CR प्लस 100 CR फ्री रिजर्व, इसका 10% कैलकुलेट कीजिए. 115 CR का अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो इट विल बी 11.5 crores आप यूटिलाइज कर सकते हो ना, मैक्सिमम. ज्यादा से ज्यादा आप कितना रिजर्व यूज कर सकते हो, 11 करोड़ 50 लाख, जबकि एक्चुअल यूटिलाइजेशन इज ओनली 0.8 CR. आप तो सिर्फ 80 लाख प्रॉफिट यूज करने वाले हो, जबकि लॉ कहता है 11.5 करोड़ का प्रॉफिट यूज कर सकते हो टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स. So can I say you're using less than 11.5 CR? That means you're fulfilling the second condition also. Condition 2 is fulfilled. Third condition. Balance in free reserves after utilization should not be less than 15% of paid up share capital. Balance required 10 CR इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 CR प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसका 15% कैलकुलेट कीजिए. 15 करोड़ का 15% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बैलेंस कितना होना चाहिए, 2.25 CR होना चाहिए. एक्चुअल बैलेंस आप कितना यूटिलाइज करने वाला, सिर्फ 80 lakhs, जबकि आपका जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड में कितना बैलेंस था, 100 CR. 100 CR माइनस 0.8 CR, तो भी आपका बैलेंस कितना रहेगा, 99.2 CR. आपका बैलेंस होना चाहिए 2.25 CR, आपका बैलेंस है 99.2 CR. योर कंडीशन 3 is also fulfilled. Companies fulfilling all the 3 conditions, they can pay dividend to the equity shareholders even though current year ka profits are insufficient. So this is what you have to understand in that Companies Act provision, remember. So एक है managerial remuneration, दूसरा है if there are insufficient profits, how do we calculate and pay dividend to the shareholders?
holders. But before you pay dividend to the equity shareholders, याद रखिए आपको dividend pay करना है to the preference shareholders also. Now we come to the actual final accounts. When you prepare final accounts of a company, it is not to be prepared in a horizontal format. No. Sole proprietor and partnership के लिए वो applicable है, not for company. Companies के लिए you have to prepare in a vertical format as given in the Companies Act, remember. और Companies Act में Schedule 3 में फॉर्मेट दिया है, बैलेंस शीट कैसा दिखना चाहिए, पीएनएल कैसे दिखना चाहिए, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल नॉट अलाउड. So over here, let's look at the format of the final accounts. Whenever you prepare the final accounts of a company, always remember पहले बैलेंस शीट दिखना चाहिए, नेक्स्ट पेज पे पीएनएल दिखना चाहिए. यस, लॉजिकली बनाते वक्त पहले पीएनएल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनता है. यू आर राइट. बट प्रेजेंटेशन वाइज फर्स्ट बैलेंस शीट दिखना चाहिए फर्स्ट पेज पे, सेकेंड पेज पे पीएनएल बनाओगे और फिर यू विल हैव नोट्स टू अकाउंट्स योर वर्किंग एंड सो ऑन, रिमेंबर. So let's look at the format of the balance sheet. Schedule 3. First part of the balance sheet is equity and liabilities, remember. इसमें shareholders funds. What you have to remember is only the share capital and reserves and surplus. Share capital is note 1. Reserves and surplus is always note 2. आपको सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स दिए होंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर्स नहीं दिए होंगे. कॉलम सिर्फ ड्रॉ करने का, आप कुछ लिखोगे नहीं उसमें. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स विल नॉट कम. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं आता है. नॉन करेंट लायबिलिटीज. Non-current liabilities are those liabilities which you have to pay after a period of more than 12 months. 2 साल के बाद जो पैसा रिटर्न करना है, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, उसको कहा जाता है non-current liabilities. इसमें important is only long-term borrowings. Long-term borrowings में क्या आएगा, आपका बैंक लोन आएगा, you will have debentures issued and so on. सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आप कंसीडर करोगे, रिमेंबर. इग्नोर द अदर 3 आइटम्स, दे नॉर्मली डोंट कम. करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आर दोज बोरोइंग्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू पे विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स. सपोज अगर आप ये बैलेंस शीट बना रहे हो एज ऑन 31st March 22, बैलेंस शीट एज एट 31st March 22, तो करंट लायबिलिटीज मींस दोज लायबिलिटीज जो आपको 31st March 23 के पहले पे करना है, विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स जो आपको पे करना है, उसको कहा जाता है करंट लायबिलिटीज. शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बेसिकली आता है ओवरड्राफ्ट. बैंक ओडी कम्स इन योर short-term borrowings. CC stands for cash credit, other name for overdraft you can say. Trade payable comprises of creditors plus bills payable. Other current liabilities, this will include your outstanding expenses. And short term provisions में आता है basically provision for tax. So basic items of your current liabilities, write down all the items. जैसे जैसे नोट बनाना पड़ेगा वैसे वैसे नंबर दोगे. Yes, note number 1 is reserved for share capital, note number 2 is reserved for reserves and surplus. आगे के आइटम्स का नोट नंबर फिक्स्ड नहीं होता है, डिपेंड करता है कि नेक्स्ट कौन सा आइटम आपके बैलेंस शीट में है, अकॉर्डिंगली आप नोट बनाओगे ओवर देयर. टोटल ऑफ लायबिलिटीज हो गया. सेकेंड पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज असेट्स. असेट्स में 2 कैटेगरीज होते हैं, नॉन करेंट असेट्स होता है एंड करंट असेट्स. Non-current assets, long-term assets, which you're going to use it for a period of more than 12 months. 1 साल से ज्यादा जो आप यूज करने वाले हो.
इसमें सबसे पहला हेडिंग इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो पहले फिक्स्ड असेट्स कहा जाता था. Tangible, land, building, machinery, furniture, etc. Intangible, capital work in progress and intangible assets under development. इसमें बेसिकली मेजर कौन से आइटम्स होते हैं? ये दो आइटम्स मेजर होते हैं. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, रिमेनिंग आइटम्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. पूरा फॉर्मेट नहीं लिखने का, only relevant items. So when you are reading the question, you know कि बाबा कौन कौन से assets अपने को दिए हैं. सारे non current assets आपको नहीं देंगे, सिर्फ tangible assets होते हैं, maximum intangible, और कभी कभी दे दिया तो capital work in progress दे देते हैं. They don't give you other assets. So जो items है वो ही लिखना है, जो नहीं है वो भी लिखोगे, और फिर zero doesn't make a sense. पूरा फॉर्मेट पिट पैट करने की जरूरत नहीं है. रिमेंबर, current assets. In that current investments which you are holding it for a period of less than 12 months, which you purchased it with the intention कि अगले 12 महीने के अंदर तो मैं बेच दूंगा उसको कहा जाता है current investments. Inventories is nothing but your closing stock. इसमें closing stock of raw material आएगा, WIP आएगा, finished goods आएगा over here, purchase goods and so on. Trade receivables is debtors plus BR, bills receivable also. Cash and cash equivalent में cash balance भी आएगा और bank balance भी आएगा. Short term loans and advances, you basically have the advance tax figure, and other current assets, it may be your prepaid expenses and so on. All figures will be given to you. Simply write down those figures, check कीजिए, आपका balance sheet tally होगा. So one part financial statements is over. Second is P&L. P&L for the year ending 31st March 22. कॉलम्स अब दो बनाओगे, करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर, बट रिमेंबर ये ब्लैंक रहेगा, इसमें आप कुछ लिखोगे नहीं, सिर्फ ड्रॉ करने का. फर्स्ट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बेसिकली इंक्लूड्स योर सेल्स. सेल्स वर्ड यूज नहीं किया है. ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड याद कीजिए, फर्स्ट आइटम दैट यूज्ड टू रिकॉर्ड वाज बाय सेल्स. यहां पे सेल्स वर्ड यूज नहीं किया, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड यूज करने का. अदर इनकम्स, discount received, commission received, income from investments and so on will come as the other incomes. Find out the total, that is your total revenue. Expenses, cost of materials consumed. Materials consumed. How do you get this? It is opening stock of material plus purchases of material minus closing stock. ये कौन से टाइप के कंपनीज में काम आएगा? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में काम आएगा. बिकॉज दे कंज्यूम रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल परचेज करके फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करके फिर बेचते हैं. रिमेंबर, so opening stock plus purchases minus closing stock of raw material, and this will come in case if it's a manufacturing company. Purchases of stock in trade, ये बेसिकली सोचोगे तो एक ट्रेडिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा. ट्रेडिंग कंपनी इज अ कंपनी विच परचेसेस गुड्स एंड सेल्स इट इन द सेम फॉर्म. वो खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करती है. रिमेंबर, वो खरीदती है फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को बेच देते, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड परचेसेस. थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज चेंजेस इन इन्वेंटरीज of finished goods, WIP and stock in trade. It is basically calculated as opening stock minus closing stock. Changes in inventory. आपको इस P&L स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक सेपरेट, क्लोजिंग स्टॉक सेपरेट नहीं बताना है, आपको नेट फिगर प्रेजेंट करना है. रिमेंबर, so changes in inventory is always the net figure. How do we get the net figure? Opening minus closing.
तो वर्किंग नोट बनेगा, उसमें पहले ओपनिंग स्टॉक का फिगर लिखिए, क्लोजिंग स्टॉक उसके नीचे माइनस कीजिए, फाइंड आउट द बैलेंस, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक के कंपैरिजन में तो डिफरेंस इज अ पॉजिटिव फिगर, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है कंपेयर टू ओपनिंग स्टॉक तो आपको नेगेटिव फिगर आएगा। जो भी आंसर आता है यहीं पे लिखना है, पॉजिटिव भी यहीं पे लिखना है, नेगेटिव भी यहीं पे लिखना है। सिर्फ नेगेटिव लिखते वक्त क्या करोगे, ब्रैकेट लिखने का, सो दैट टोटलिंग करते वक्त आपको याद रहेगा कि ये फिगर मुझे कैलसी यूज करते वक्त माइनस करना है। रिमेंबर, employee benefit expenses basically means salaries. Finance cost is nothing but your interest on bank loan, interest on debentures, etc. Depreciation and amortization and other expenses. This includes all your other expenses which you cannot write it above. इसमें आपका रेंट भी आएगा, डेप्रीसिएशन यू हैव शोन सेपरेटली, रेंट भी आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, बैड डेट्स आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा, ऑल अदर आइटम्स विल कम ओवर हियर. फाइंड आउट द टोटल ऑफ एक्सपेंसेस. ऊपर इनकम्स का टोटल इज ए, रिमेंबर, एक्सपेंसेस का टोटल इज बी. The balance that you get is your profit before exceptional and extraordinary items and tax, A minus B. Exceptional and extraordinary items में क्या आएगा, आपके losses. Maybe losses on sale of asset, maybe loss by earthquake, loss by fire. All this will be considered as exceptional and extraordinary items. Remember, record कर दीजिए. What you'll get is your profit before tax. They will be giving you the current year's provision for tax, but as a percentage. Maybe 30%, maybe 35%, maybe 25%, maybe 40%. जो percentage दिया वो apply करोगे. किस पे apply करोगे? It has to be applied on your profit before tax, remember. Find out your current year's provision for tax and what you'll get is your profits after tax, remember. ये आपका फाइनल फिगर है. Not required. You are not supposed to do all this discontinuing business part and so on. वो सब नहीं आता है, remember. सिर्फ profits after tax तक ही आपको रिकॉर्ड करना है. This is your format of a P&L over here. So balance sheet format, P&L format. To prepare the final accounts, what will happen is they'll give you two things. एक ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाएगा और एक आपको दिया जाएगा additional information called as adjustment. So whenever you have to prepare the final accounts, preparation of final accounts. To prepare final accounts, they will be giving you one is a trial balance and second is adjustments. Remember, all trial balance items have only one effect. सारे ट्रायल बैलेंस आइटम्स का सिर्फ एक इफेक्ट होगा, सिर्फ एक जगह प्रेजेंट करना है. रिमेंबर, इसके दो तीन इफेक्ट्स नहीं होते हैं. Whereas all adjustments have normally minimum two effects. Normally minimum two effects, remember. However, there are certain adjustments which doesn't have any effects. इसको हम कहते हैं informative adjustments. It doesn't affect your net profit. It doesn't affect the total of balance sheet. इसको सिर्फ present किया जाता है. इससे आपके final accounts के कोई figures change नहीं होने वाले हैं. Such type of investments are called as informative adjustments which doesn't have any effect, remember. Simple examples of such adjustments. Authorized share capital. They'll tell you what is the authorized share capital. Where do we present it? In note 1, share capital. This is the authorized share capital. But remember, authorized share capital का जो figure होगा ना, वो आपके balance sheet के total में नहीं आता है.
It doesn't come in the totals of the balance sheet, remember. Similarly, अगर वो आपको देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उसका कुछ आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है. जब आप इन्वेस्टमेंट्स प्रेजेंट करोगे तो ब्रैकेट में लिखा जाता है इसका मार्केट वैल्यू इतना है. बेचोगे तो इतना पैसा मिलेगा, आपको बेचना नहीं है, रिमेंबर. Similarly, suppose if any bills are sent for collection, तो आपको इंफॉर्मेशन देना है. यू आर नॉट सपोज टू गिव एनी इफेक्ट ऑफ द सेम इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिमेंबर. मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स विल हैव 2 इफेक्ट्स. 3 इफेक्ट्स वाले भी होते हैं, 4 इफेक्ट्स वाले भी होते हैं, और मैक्सिमम 2 इफेक्ट्स वाले एडजस्टमेंट्स होंगे. लाइक क्लोजिंग स्टॉक, 2 इफेक्ट्स होते हैं ना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑल दीज नॉर्मली हैव 2 इफेक्ट्स. Accordingly, you are supposed to present it, remember. Presentation wise पहले बैलेंस शीट दिखता है, उसके बाद P&L दिखता है. But remember, when you're closing, when you're finalizing, तो पहले P&L close होता है, उसका profit after tax मिलेगा. That profit after tax goes to your reserves and surplus note 2. फिर आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल मिलेगा विच गोज इन योर मेन बैलेंस शीट, एंड देन योर बैलेंस शीट विल टैली. Without preparing or closing P&L, without calculating current year's net profit, you cannot first close the balance sheet. रिजर्व्स एंड सरप्लस का आपको फिगर नहीं मिलेगा, तो पहले P&L क्लोज होता है, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट किया जाता है, टेक इट टू योर रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट में से टोटल बैलेंस शीट में फिर बैलेंस शीट टैली करने का, उसके पहले वो टैली नहीं होगा. So this was your revision of company final accounts chapter. Done.